Hello everyone, my name is Harsh and I am going to take your international relation current affair classes. It is going to be a very comprehensive class. It is meant for prelims 2026. I am going to make this particular content very dynamic for you. I want you to be very attentive and I want you to sit with a pen and paper in which you can practice a lot of mapping, in which you can practice how you need to solve a particular prelims question. ठीक है. And apart from that, if you are having focus magazine in front of you in hard copy or soft copy, anything is feasible, just open that and be with me. I'm going to dictate everything, I'm going to explain everything, and I'm going to show you how you need to solve a particular question in your upcoming prelims. Okay. So before moving forward, I would like to show you some of my mark sheets. First thing, in 2024 I got 99.65 in my GS, and the cutoff was 88.9 or something, around 89 point something. I right now I do not remember that, and it was more of 10 number more than the general cutoff. And in CSET I was having a score of 107.5. In 2025 again I gave the attempt. In that I was having a score of 108.66 and the general cutoff was 92.66. So it is 16 number more than the general cutoff, and in CSET I was having a score of 99.18. So I have down the way in which I am going to teach you this particular international relation. So first thing, we'll be seeing a topic. We are going to break that topic into multiple dimensions. First thing, we are going to see map in almost all the questions, if it is feasible for that particular topic. Sorry, I said the question. It is the topic. For each topic, if possible, we are going to see a mapping. Again, we are going to link that particular topic with our PYQs, and we are going to do the recalling session there itself. After every topic we are going to recall it, so that after seeing this complete video you do not need to watch it again, or you do not need to make the notes out of it. Okay, and we are going to practice it here itself. So moving forward, this is the index. The first topic is bilateral relation. So from here we are not going to gain much of the content which can be utilized in our prelims, like prelims paper. But again, it's my duty. From every content I am going to take out something very important for you. If there will be nothing in that content as per the prelims requirement, so I'll be telling you to read it, and it can be utilized for our mains preparation. Okay, but mostly everything will be covered very holistically. So we are going to see India-US relation. So be ready, and the first topic is in front of you. Okay, bilateral relation, India-US. So the first context is why this topic has been selected. The president of United States of America hosted the Prime Minister of India for an official working visit in Washington DC. Like our Prime Minister was in US for official visit. So what we can gain for our prelims paper. Okay, I will be telling you one thing. See, this is exam, this is our preparation. Okay, and this is our result. So what we need to do is, we need to align this preparation to a particular focal point which can give us a result. ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? If suppose we need a very directed approach for our prelims, we need some facts, we need some figures which can come in our particular prelims examination. We do not need to go into that much depth which can be done for our mains. ठीक है, so we will be very particular here. What we need, that much only we are going to read, because our aim is very clear. We need to strike prelims very hard with a one strike game, and we do not want to deviate ourselves from here and there. Okay, so first thing first, we are going to see about India-US relationship. So Prime Minister was in US for an official visit, so this is not going to be asked anytime. Okay, what can be asked is this one. President Trump and Prime Minister launched a new initiative. They have launched a new initiative. It can become a hot topic for UPSC. A new initiative called US-India Compact. ठीक है, US-India Compact, catalyzing a full form क्या है? Catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology. ठीक है. Now let me clean this. First thing is, this is a new initiative and the name is Compact. ठीक है.
to drive transformative changes across key pillars of cooperation. Under this initiative, अब ये line, this line is a very general statement. You can read it for your mains perspective. ठीक है. अब defense में आते हैं. To advance defense ties, the leader announced plans to sign this year new 10-year framework. ठीक है. अब again, what you can sense here कि whenever we are seeing between India and USA or India and Russia, we are seeing that they have signed some 10-year agreement. So here the 10-year framework for US India has been signed between India and US, not between India and Russia. So do not forget. And again, compact is between India and US, the new initiative which is for military partnership. Compact 10-year framework. 2 points we have learned here. Again, they announced plan to pursue new procurement and co-production arrangement for Javelin anti-tank guided missile. First thing which we need to remember here is Javelin anti-tank guided missile and Striker infantry combat vehicles. Okay? The second point which we need to remember. First thing is Javelin anti-tank guided missile and the second one is Striker infantry combat vehicles. Fine. Building on US India roadmap for defense industrial cooperation and recognizing the rising importance of autonomous system का यहाँ पे importance धीरे धीरे बढ़ रहा है. The leader announced a new initiative the Autonomous System Industry Alliance Asia to scale industry partnership and production in the Indo-Pacific. So for prelims we know 3 topics which we have learned right now. The first one is compact, the new initiative, it is for military partnership. The second one is 10-year framework. तो चलो ये तो it is a general statement. Again, Javelin anti-tank guided missiles. So Javelin anti-tank guided missile, it is between India and USA. Learn India and USA के बीच में Javelin anti-tank guided missile and Striker infantry combat vehicle in India. Co-production होगा इंडिया में. They will be making that thing co-produce in India itself. ठीक है. Again, for autonomous system, like its demand is rising a lot. So for that reason, they have announced a new initiative called the Autonomous System Industry Alliance to scale industry partnership and production in Indo-Pacific Asia. ठीक है, समझ में आ गया. Keywords क्या हो गए? Asia, Javelin, Striker and Compact. Now again, coming to our trade and investment वाला topic. So what they have decided कि we are going to double our bilateral trade to $500 billion by 2030. So remember this year we are going to target it to become $500 billion. For that they have announced a new goal for bilateral trade. It is Mission 500. So Mission 500 is between India and US and they are going to rise our bilateral trade from समथिंग टू $500 billion by 2030. ठीक है, ये याद हो गया. अब एनर्जी सिक्योरिटी में देख लेते हैं. द लीडर reaffirmed their commitment to increase energy trade as part of the effort to ensure energy security and establish the United States as a leading supplier for crude oil and petroleum. ये नॉर्मल सा है स्टेटमेंट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. द लीडर announced their commitment to fully realize the US-India 123 nuclear agreement. Now this is your topic. You need to go and revise this particular topic. This one, US-India 123 civil nuclear agreement. ठीक है. Coming back to our technology and innovation, the leader announced the launch of US-India Trust. ठीक है. Let me drop that. This one. Okay. So they have announced. The leader announced the launch of US-India Trust. And why I am focusing so much on this? Trust का full form क्या है? Transforming the relationship utilizing strategic technology. ठीक है? This is a new initiative again which has been launched. Trust. It is between India and US. Trust between India and US, which will catalyze government to government, academia and private sector collaboration. पहला टॉपिक इसलिए promote application of critical and emerging technology in the area of defense, artificial intelligence, semiconductor, etc. ठीक है. The second one point is Indus Innovation, a new innovation bridge modeled after the successful IndusX platform. ठीक है. Again, India industry and academia partnership and investment in space, energy and all that. Indus Innovation again between India and US. They have also launched strategic mineral recovery initiative. It can be asked, so it is very important and it has been in news for a quite couple of times, so it can come. ठीक है. Strategic mineral recovery initiative. So what all we have learned here is
Let me rub that so it can become a lot of easier for you to recall it, remember it. Okay, and I promised we are going to remember it here itself. We are not going to take it to our next class, or we are not going to make notes out of it. So we are going to remember it here itself. ठीक है. First thing is the compact initiative, याद हो जाएगा, military partnership के लिए है. The second one is the new 10-year framework agreement between India and US. The third one is Javelin anti-tank guided missile and Striker infantry combat vehicle. Again, for autonomous system जिसका डिमांड बढ़ रहा है, we are having a new alliance. It is called the Asia Alliance. The full form is Autonomous System Industry Alliance. ठीक है. Again, Mission 500. It is for doubling our trade from something to $500 billion by 2030. And again, you are going to read US-India 123 nuclear agreement. The third one is US-India Trust. Trust means strategic technology में दोनों कंट्री का एक तरीका का इनिशिएटिव है, ट्रस्ट इनिशिएटिव. द थर्ड वन इज अगेन, द फोर्थ वन इज इंडस इनोवेशन एंड इंडस एक्स प्लेटफॉर्म, एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव. सो इफ it is going to get asked in the tabular format, so you are not going to miss that. Okay, I have highlighted all the points which are going to be very important, and you are going to revise this. Again, we are not just going to be sticked with this particular information. If we are having something related to India and USA, we are going to see it through maps, so it can become easy for us to recall and revise. Okay, now this is United States. We are not going to stick with the political map over here. We are going to see some physical features which are important. First thing, Sargasso Sea. ठीक है, you have to tell me why it is famous and for what reason it is famous. Sargasso Sea. ठीक है, US के वेस्ट में है या ईस्ट में, you have to tell me. Appalachian Mountain, again वेस्ट या ईस्ट, again you have to tell me this thing. ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको पता चल जाएगा. Starting from the top, let us see from everything from the top itself. Russia, Alaska. Between that, we are having Bering Sea and Chukchi Sea. Bering Sea, Chukchi Sea, connected by Bering Strait. याद हो जाएगा? I hope it will be clear to you and you are going to revise it. Russia, Alaska, Bering Sea, Chukchi Sea, Bering Strait. ठीक है. Beaufort Sea, just above Canada, and Baffin Bay. Beaufort Sea and Baffin Bay. Beaufort Sea, Baffin Bay. This is the Davis Strait, Denmark Strait. ठीक है. Again, we are having Labrador Sea. See, Labrador Sea, ठीक है. अब Labrador current भी होता है. So ये current hot है या cold है, you have to tell me this. We are having Hudson Bay over here. Hudson Bay. We are not just going to stick with this. We are having some important lakes which can be asked. First thing is Lake Superior. The other one is Lake Michigan. The third one is Lake Erie. The fourth is Lake Ontario. And the fifth one is Lake Huron. ठीक है. Superior, Michigan, Lake Erie, Lake Ontario, Lake Huron. ठीक है. It will be remembered. Again, Hudson Bay, I have told you. Lake Winnipeg, it is also important. Reindeer Lake, it is in these both are in Canada. Lake Athabasca, again it's in Canada. ठीक है. So I have told you everything over here. What else we can learn from here is, if we are seeing Mexico over here, we can see this one. It is important and it was actually in news. This days it was in news. So please remember that where it is and किस country का part है. Do not miss that part. ठीक है. So I hope this is very clear to you. We have done this topic India-US in just 1 minute. We are going to revise it. First one is compact. The second one was Javelin. Third is Striker. Fourth is Asia. It is for autonomous system. It's an alliance between India and US. Mission 500. It's for doubling the global trade between India, bilateral trade between India and US to $500 billion by 2030. याद रखेंगे. USA 123 civil nuclear drill. US-India Trust Initiative for strategic technology, Indus Innovation, Indus X platform, and strategic mineral initiative. You have to remember this. Again, coming to the mapping part. Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario, Lake Winnipeg, Lake Reindeer, Lake Athabasca. Here we have started it from here itself. Russia, Alaska के बीच में Bering Strait. Here it is Bering Sea and here is Chukchi Sea. Beaufort Sea and Baffin Bay. Davis Strait, Labrador Sea, Denmark Strait. So I hope this particular topic is clear to you. And now we'll be seeing the next topic, and that is India-France relation. And again in this topic,
We are going to see some important terms over here. We are going to remember it like we have done in the earlier topic, and apart from that we are having some important maps and some important information which can be helpful. Okay, we will be starting India France relation again. Thank you. So let's continue with our second topic. This one is India-France relation. And again, we are going to see some important terms which can be asked in our upcoming prelims. And apart from that, we are going to see the mapping itself. Okay? Let's see the context. PM Modi co-chaired AI Summit, AI Action Summit with France President in his visit to France. Okay? This was AI Summit. This was the third summit which I have mentioned over here. Third summit, it was in France. The first was in Bellechli. The second was in Seoul. The first, it happened in 2023. The second was in 2024. And the third was in 2025. And again, do not confuse it with AI Impact Summit. It happened in 2026. It was in Delhi. Okay. So what information are important for our prelims per se? We are going to see it one by one. Okay. First thing, key outcome of the visit to France. President Macron and Prime Minister Modi announced the grand inauguration of the India-France Year of Innovation. India-France Year of Innovation. It is the first point which is important in New Delhi in March 2026 by launching its logo. India-France Year of Innovation. India-France Year of Innovation. Okay. Partnership for Security and Sovereignty launched FRIENDX. FRIENDX. अब FRIENDX को कैसे याद रख सकते हैं? FR it means France, IND it means India. FRIENDX, ठीक है? France India Defense Startup Excellence in Paris involving the DGA and the Defense Innovation Agency in line with the vision enshrined in Horizon 2047. This is the keyword which you need to remember. It is between India and France. It is between India and USA. नहीं. It is between India and France. It is between India and Russia. नहीं. It is again India and France के बीच में Horizon 2047 जिसका एक पार्ट बन जाता है FRIENDX. ठीक है. It is between India and France. ठीक है. India France Year of Innovation. India France Year of Innovation. India France. Sorry. If it will be asking, this year is of innovation between India and USA. No. We are going to see it is between India and France Year of Innovation. ठीक है. Okay. Launched an India-France roadmap on artificial intelligence rooted in the philosophical convergence in their approaches focusing on the development of safe, secure, trustworthy artificial intelligence. अब देखो ये जो line है ना, this can be used as a conclusion in the mains answer. अभी इस particular line का prelims में कोई उतना importance नहीं है, so we are going to skip that part. ठीक है. Coming here, partnership for the planet. They welcome the first meeting of the Special Task Force on Civil Nuclear Energy and welcome the signing of a letter of intent on small modular reactor. अब ये जो topic है small modular reactor, it has been in our PYQ also. 2025 के paper में I guess it has been asked and it was very prominent in our budget. Small modular reactor and advanced modular reactor. See, if this is very important, so what we are going to do is we are going to read it. What is SMR? Small modular reactor. This is a new concept. See. First thing is, it is a very small size. It can be developed in a factory and assembled in the site. आप इसको फैक्ट्री में डेवलप कर लो और उसको लाके एक पर्टिकुलर साइट में जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, you can assemble it. Again, it is a new technology, so the carbon release will be less, and it can release up to 300 megawatt electricity per module. 300 up to the maximum limit, which is 300 megawatt. Electricity per module. अब आपको ये ध्यान देना है, if they ask 1300 कर देगा UPSC, it can generate up to 1300 megawatt electricity per module. No, it is 300 up to 300 megawatt electricity per module. ठीक है, ये important हो गया. Apart from that, India has launched one more thing. It is Bharat Small Modular Reactor. It is Bharat Small Reactor, not modular. It is Bharat Small Reactor, and this is based on pressurized heavy water reactor. ठीक है, this is different from the SMR, which is Small Modular Reactor. ठीक है. Apart from that, we are having one act which has been done in 2026. This is Shanti Act. It is for nuclear energy. So just remember that Shanti Act. It is for nuclear energy. ठीक है, Shanti Act, it is for nuclear energy. Let's revise this once again. SMR, it's small modular reactor. It's a new concept. It is for miniature. It is a miniature size
nuclear reactor. It can release up to 300 megawatt electricity per module. It can be developed in any factory. Usko fir we can assemble it at a particular site in which we want. It's a new technology, so it will release less carbon dioxide. Again, we are having one more type of reactor. It is Bharat small reactor. Sorry, small. It is not a modular reactor. It is Bharat small reactor, and it is based on pressurized heavy water reactor. Okay. So why I was having this topic in consideration, because it was mentioned here that वेलकम द साइनिंग ऑफ द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर. ठीक है, ये समझ में आ गया. इंडिया एंड फ्रांस Indo-Pacific Triangular Development Cooperation. It aims to support climate and SDG focused projects from third country in the Indo-Pacific region. ठीक है, अब एक बार फिर समझ लेते हैं. इंडिया एंड फ्रांस इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन. अब यहाँ से समझ लो, अगर ये टर्म आ गया ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन? सी, अब मैच करने आ जाएगा. Okay, so triangular development cooperation is between these two countries. So you must be knowing Indo-Pacific Triangular Development Cooperation. It aims to support climate and SDG focused projects from the third country in the Indo-Pacific region. यहाँ देख लो, it is having two very important variables which can be asked in your upcoming prelims. First thing is triangular development cooperation. ये किस एरिया में है? So you must be knowing it is in Indo-Pacific. Indo-Pacific में क्या है? तो triangular development cooperation. और इसका काम क्या है? It is to support climate and SDG focused project. Climate and SDG focused project. It is not for something else. So please remember that climate and SDG focused project from the third countries in Indo-Pacific region. ठीक है, याद हो जाएगा. मोर देन इनफ. मैंने 4 बार बोला है तो आपको याद होना ही चाहिए ये चीज़. ठीक है, अगेन व्हाट आई मेंशन हियर इज 2023 AI Safety Summit hosted in Bletchley Park in UK, 2024 AI Seoul Summit in South Korea. I have already discussed this in the above. ठीक है, की आउटकम देख लेते हैं. 58 countries including France, China and India signed the joint declaration emphasizing the principles such as accessibility, transparency, ethical development, safety, international cooperation, AI. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, these terms are important and why it is important, because all of you who are watching this video, I hope and wish कि आप लोग इस बार का मेंस लिखेंगे. एंड अगर मेंस लिख रहे हो तो आपके पास एक ना एक क्वेश्चन AI से रिलेटेड तो जरूर आना ही आना है, चाहे केस स्टडीज़ में आ जाए, चाहे आपके ऑप्शन में आ जाए, चाहे आपके सोसाइटी में आ जाए. तो व्हाट यू कैन यूज इज ये टर्म जरूर यूज़ करना. एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन AI. ये टर्म्स यूज़ कर लोगे, काम आ जाएगा. अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ कमिंग हियर. Notably, the United States and United Kingdom abstain from signing. अब ये exception बन रहा है. Now this is the exception, and from exception only UPSC generates a particular question which can मतलब वहाँ पे वो बच्चों को confuse कर देते हैं. They tend to confuse the students by taking the exception and making a question out of that. So United States and United Kingdom abstain from signing the particular this one जो एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट था, दे हैव नॉट साइन दैट एंड 58 कंट्री हैव साइन दैट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वेस्ट AI. दिस हैज बीन डन इन अगेन इन यूरोपियन यूनियन फॉर 4 gigawatt factories, AI factories development. Second one is EU AI Champion Initiative. I hope this one is very important. This one, EU AI Champion Initiative. See, if they are not going to give this, they will not be giving EU. If they will be just giving you AI Champion Initiative. What is this AI Champion Initiative? It is a coalition of over 60 European companies. 60 European companies. यहाँ पे I have written not any government. It is between European companies. Again, remember this. This is again an exception, so you have to remember that. First thing was AI Champion Initiative between 60 European companies led by venture capital firm General Catalyst, committed to investing $150 billion. ये terms तो नहीं पूछते 150 billion something, but this can be asked. AI Champion Initiative between 60 European companies. ठीक है, ये हो गया complete. I guess this one is done. So let's revise once what the key terms which we are having in this particular topic. First one is AI Action Summit. This was the third summit. First happened in Bletchley, second happened in Seoul, the third one was in Paris. ठीक है, and AI Impact Summit, it happened in Delhi in 2026. The key terms is, first thing is
Horizon 2047, it is between India and France, and this was in this document we are having Friendix also. Friendix is France India Defense Startup Excellence. Okay. The second one is this topic, SMR and Advanced Modular Reactor. They are going to have a special task force on this part. Okay. We will be seeing the special small modular reactor ka concept also again. Okay. Apart from that, India and France triangular development cooperation, in which area? It is in Indo-Pacific, and it is for supporting climate and SDG focused projects. Okay. Apart from that, the exception what I have told you is United States and United Kingdom abstained from signing this particular document. Two important investment initiative has been done. First one is Invest AI. It is between it is in European Union, and it is for building 4 AI gigawatt factory for training complex model. And the second one is AI Champion Initiative. AI Champion. Why my gut feeling is saying that this is very important? So please remember that AI Champion Initiative. AI Champion Initiative. It is between 60 European companies. It is not between any particular government. याद हो जाएगा? I hope this one is clear. ठीक है. Now, let's see about the small modular reactor. So it is a miniature type of nuclear reactor, and this can generate up to 300 megawatt electricity per module. Okay, and this can be developed in any in a factory, and it can be assembled in a particular site, so it can be traveled. And the third one is it is a new technology, so it releases very low carbon dioxide. Okay, apart from that, we are having a particular act, Shanti Act. It is for nuclear energy, and we also have Bharat small reactor, which is based on pressurized heavy water reactor. Okay, I hope this one is clear. And now we'll be seeing some mapping of France, because this topic was related to France. Okay, let me zoom this. So here it is France. France के नीचे आते हैं तो we are having Spain. Spain के बगल में जाते हैं we are having Portugal. ठीक है, Portugal, Spain, France. ठीक है, I hope this यहाँ तक क्लियर है. फ्रांस के इधर जाएंगे तो वी आर हैविंग इटली हेयर, वी आर हैविंग स्विट्जरलैंड हेयर, वी आर हैविंग जर्मनी हेयर. ठीक है, फाइन. आई होप दिस वन इज क्लियर. नीदरलैंड इट्स हेयर. ठीक है, जर्मनी डन. नाउ कमिंग टू दिस साइड, स्विट्जरलैंड के बगल में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी. ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी. अब एक चीज़ देख लो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया. याद हो जाएगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, FSA. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया इन एक लाइन. स्विट्जरलैंड के नीचे क्या है? इट इज़ इटली. स्विट्जरलैंड के ऊपर क्या हो जाएगा? जर्मनी. इटली इधर, जर्मनी इधर. अब ऑस्ट्रिया के पास देखते हैं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी. स्लोवाकिया, हंगरी. ठीक है, ये समझ में आ जाएगा. एंड चेक रिपब्लिक के ऊपर क्या है? पोलैंड. समझ में आ गया ये चीज़? जस्ट अ मिनट, पोलैंड इज ओवर हियर. अब see, Ukraine is very important because the war is going on. You must be knowing that part, and you need to know which all country are the bordering country of this Ukraine. The first one is Belarus. We'll start from this side. Okay, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and this one is Moldova. Okay, I hope this one is clear. See, Bulgaria, it is not touching Ukraine, so do not confuse here. Okay, and rest apart, we are having some more important countries which is very important. First one is, you can see Norway over here. Norway touches Russia. Do not forget, Norway touches Russia. ये टच करता है रशिया को, ऊपर से टच कर रहा है. ठीक है, अगेन स्वीडन, Norway, Sweden and Finland. It is NSF. Norway, Sweden and Finland. Okay, let me show you. Norway, Sweden and Finland. It is N, S and F. Norway, Sweden and Finland. Norway touches Russia, but Sweden do not touch Russia. Finland again touch Russia. Okay. Again, you can see here Russia and Gulf of Finland. It is Gulf of Finland. I hope this is clear and visible to you. Estonia, Latvia, Lithuania. ठीक है, and this one is a small part of Russia. ठीक है, तो what you can see, Estonia, Latvia and Lithuania. ये terms please याद रखना. It can be asked in north to south or south to north. So please do not confuse over here. ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेंगे, so आपको थोड़ा सा यूरोप का मैप एक बार रिमेंबर हो जाएगा. First thing, we will start from France.
विल मूव डाउन, वी आर हैविंग स्पेन, स्पेन के बगल में हो गया पोर्तुगल, ठीक है। अब फ्रांस के ऊपर आते हैं, फर्स्ट वन इज हियर, फर्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के नीचे क्या है हमारा इटली, स्विट्जरलैंड के ऊपर क्या है जर्मनी, स्विट्जरलैंड के बगल में क्या है ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब जर्मनी को एक पॉइंट बनाते हैं, ऊपर चलते हैं, फर्स्ट वन इज नेदरलैंड, ठीक है। आगे आ रहा है चेक रिपब्लिक, द इस साइड में है पोलैंड, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। अब see, whenever you are having this much of clarity, you can again come to your Ukraine first, because Ukraine was a news and you must have seen this multiple number of times, so you can recall it and revise it multiple times, ठीक है। अब what we can do, Ukraine को लेते हैं and take it from, just a minute, okay, and take it from the anti-clockwise, ठीक है। first one is just okay, first one is Belarus, Belarus again Poland, Poland touches Ukraine, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, ठीक है। Bulgaria is not touching Ukraine, so do not confuse here. If we are moving forward, we are having Estonia here, Latvia here, Lithuania, ठीक है। And this one is again Russia का small part है, so do not confuse again, ठीक है। Again after here Norway, Sweden and Finland. It is N, S and F. Norway touches Russia from the above, but Sweden do not touch. Finland again touches Russia. ठीक है, I hope this one is clear to you. ठीक है, and this one is the Mediterranean Sea, which is again very very important. So let's practice it once again. ठीक है, Strait of Gibraltar से अंदर आते हैं, Strait of Gibraltar, ठीक है। This is Alboran Sea. Move forward. This is Mediterranean Sea overall. This is Balearic Island, Balearic Sea, ठीक है। Sardinia, again इटली का पार्ट है ये। Ligurian Sea, Tyrrhenian Sea, come here, Ionian Sea, Adriatic Sea. I hope this is clear. And this is Asian Sea. Again, you know this one, Black Sea. Black Sea से इधर आ रहे हैं, इधर आ गया Asian Sea, Ionian Sea, Adriatic Sea, Tyrrhenian Sea. I hope this one is clear. Tyrrhenian Sea, Ligurian Sea, Balearic Island, Balearic Sea, Alboran and Strait of Gibraltar. एक बार फिर प्रैक्टिस करना है, तो we'll practice this and we'll be very very sure कि we are not going to forget this thing, ठीक है। We'll be entering from here, Strait of Gibraltar, Alboran Sea, ठीक है। Alboran के बाद आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ we are having Balearic Sea, Balearic Island, तो Balearic Island के ऊपर क्या हो जाएगा, Balearic Sea हो जाएगा। नाइस, वेरी गुड। अब Sardinia Island जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ इटली, Sardinia इज़ पार्ट ऑफ इटली एंड Corsica इज़ पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। Balearic Sea समझ में आ गया है। Balearic Sea से ऊपर जा रहे हैं, इट इज़ Ligurian Sea, Ligurian Sea. I'm so sorry if I'm pronouncing something wrong here. Ligurian Sea. अब Ligurian Sea के नीचे आ जाओ, यहाँ we are having Tyrrhenian Sea, ठीक है। Tyrrhenian Sea, Ionian Sea, Adriatic Sea, and here we are having Asian Sea. Apart from that, here we are having Black Sea. So do not forget this, ठीक है। I hope this mapping is clear. If not, again you practice repeatedly. It can be very easy for you to remember that, ठीक है। I hope it is clear. Just a minute. Fine. So if you want, I can do once again so that it can be like it will be ingrained in your brain and you are not going to forget it for a long. Fine. We'll start it from France again. France के नीचे we are having Spain, Spain के बगल में Portugal, Spain and France. Again remember हो गया यहाँ पे। Again France के सामने आ गया हमारा Switzerland, Swiss के सामने हमारा Austria, नीचे it's Italy and again just above Switzerland it's Germany and this was Belgium, Netherlands, ठीक है। Germany के just बगल में है Poland it's Czech Republic and again from here we are going to start from Ukraine anti-clockwise, Belarus touching Ukraine, Poland touching Ukraine, Slovakia touching Ukraine, Hungary touching Ukraine, Romania again touching and Moldova again touching Ukraine. But Bulgaria is not touching, so do not forget. They are going to give like that only. Out of 6 options, they will be giving 4 options which are correct and 1 option which can be wrong. And they will be asking you कि कौन सा गलत है, कौन सा touch हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है. तो Bulgaria is not going to touch, not touching, not going to क्या. It is not touching only
Ukraine. ठीक है. Now we are going to see the above one. So we are having Estonia, Latvia and Lithuania. ठीक है. It is Estonia, Latvia and Lithuania. ठीक है. Lithuania. ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूज होता है because we are having two names almost similar. So do not forget Estonia, Latvia and Lithuania. क्या है? एस्टोनिया, लाटविया, लुटेनिया. एस्टोनिया, लाटविया एंड ल्यूथेनिया. ठीक है. एंड दिस वन इज रशिया. एंड डू नॉट फॉरगेट दैट ल्यूथेनिया डू नॉट टच रशिया और नॉट. जस्ट टेल मी विद दिस वन. Lithuania touches Russia or not? See, it touched Russia and it touched it's this side, not this one. ठीक है. So I hope this one is clear. Estonia, Latvia and Lithuania. And if we are going to see the above one, we are having this side. This one is Norway, this one is Sweden and this one is Finland. Norway do touch Russia, but Sweden do not touch Russia and Finland do touch Russia. ठीक है. Which country do not touch Russia? Here in the above, it is Sweden. Out of NSF, S is Sweden do not touch Russia, Finland do touch and again Norway do touch from the above side. ठीक है. I hope this was clear. Now we are going to see some important physical mapping which can be asked and you need to know. Iberian Peninsula, it is PYQ, so you must be knowing Iberian Peninsula कहाँ पे है. It is in Spain itself. आप देख लो यहाँ पे स्पेन. ठीक है. अब ऊपर आते हैं Pyrenees. ठीक है. Mount Blanc, again Bay of Biscay, it is here. Ligurian Sea, I have already told you. Apennines, Alps, देख लो. Do not forget Alps, Carpathians, and this one is Caucasus. Alps, Carpathian, Caucasus. Alps, Carpathians and Caucasus. And this one is Balkans. This one is Apennines. Apennines. Fine. I hope this is clear. So once more we are going to see this. Iberian Peninsula, Pyrenees, Mount Blanc, Alps Mountain, Apennines Mountain, Carpathians Mountain, Balkans and Caucasus Mountains. I hope this one is clear. For you, this lake was very important. It's Lake Onega. This was in news, so it is important for you. Just remember that where it is. ठीक है. Ural Sea, you know this. Volga, Don, Dnieper, Dniester. ठीक है. Elbe and Rhine. So this one is a mapping for the physical mapping for Europe. So do not forget. Baltic Sea is here. North Sea, Baltic Sea. So you can remember this very easily. So again, once more we are going to revise it. Now we are going to revise it from the top, so you can remember it from different perspective. First, this one is Kola Peninsula. This lake is very important. Lake Onega is important. Lake Ladoga again, it's not that much important, but you need to know ये located कहाँ पे है. ठीक है. Baltic Sea is here, North Sea is here. Coming down a little bit, we are having Alps mountain here and Po river is here. It is the important river of Italy. ठीक है. Alps. Now here we are having Iberian Peninsula. This one is Pyrenees. This one is Apennines, Carpathians Mountain, Balkans Mountain, Crimean Peninsula and Caucasus Mountain. I hope this one is very clear to you. Volga River and Ural River. ठीक है. So the second topic is complete. In this we have seen Horizon 2047, Frendex Corporation, small modular reactor, for which I have told you this thing, Indo-Pacific Triangular Development Corporation for climate and SDG focused projects, and the exception is United States and United Kingdom have not signed the agreement or not signed the declaration for AI summit this year. ठीक है. I have told you this thing. I have told you the physical mapping also and political mapping also. So we are going to see our third topic. It is very important. India and China. Actually, you must have seen India and US का mapping भी आपने देख लिया. India and France again you have seen. We have done the physical mapping also and we have done the political mapping also. ठीक है. Now it's time for India and China. This is the third topic and again we are going to cover it very holistically and we are going to cover it on the exam point of view. ठीक है. ताकि प्रीलिम्स में हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने और करेक्ट आंसर तक आने में टाइम भी नहीं लगे और इट शुड बी राइट. ठीक है. अब एक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. वाई दिस वाज इन न्यूज़ जस्ट बिकॉज कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैड अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ. अब अगर एससीओ के साइडलाइन पे ये मीटिंग हुई है तो एससीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है. एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ कंप्लीट लुक ऑन दैट एससीओ वाला पार्ट.
The important point over here is in this particular meeting, a declaration was signed. It was Tianjin Declaration. So, what is your duty? Whenever it is coming, Tianjin Declaration, you should not get confused with other organization. It is linked with SCO. दो बार रिपीट करेंगे, Tianjin Declaration for SCO. अब याद हो जाएगा, एक बार नोट्स में अपने पॉइंटर बना के लिख लीजिएगा. Now, they have also launched a new initiative. It is called Global Governance Initiative. I think this can be asked in the upcoming examination. Global Governance Initiative. It's a part of SCO. ठीक है, इसको भी नोट करेंगे पॉइंट बना के. Now, a general fact, SEO covers around 23% of global GDP. ठीक है, एक just to have a particular knowledge in your mind can help that broad knowledge to solve some other questions. ठीक है, apart from that, SEO is also linked with RATS. RATS क्या होता है? Regional Anti-Terrorist Structure. ताशकंद में है ये, और दिस इज अ पार्ट ऑफ SEO. नाउ SEO का थोड़ा सा बेसिक्स भी देख लेते हैं. इट इज सक्सेसर ऑफ संघाई 5. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इट वॉज formally launched in 2001. In 2017, two other nations joined this particular organization. One was India and second is Pakistan. In 2023, Iran also joined this organization. अभी ये न्यूज़ में है. So there's a high chance कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ईरान पार्ट है तो वो प्रोबेबली पूछा जा सकता है, और सबमिट हुआ है तो इट्स अ हाई चांस. ठीक है, 2023 ईरान गॉट इनटू दिस, and in 2024 Belarus got into this. So you have to mark this. Again, you have a short pointer for this thing. ठीक है, just note it down. Now let's see क्या इसके आउटकम आए हैं. इंडियन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 7 years. चलो ये जनरल लाइक स्टेटमेंट है, इसको आप देख लो. आई डोंट थिंक इससे कोई स्टेटमेंट बनने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर पॉइंट्स. ये बेसिकली मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट टू हैव अ कर्सरी ग्लैंस, लेट्स सी क्या क्या इसमें दिया गया है. दे हैव both leaders noted steady improvement since Kazan 2024 meeting. Second point is border stability as a foundation. एक पिलर बना है इसमें. म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाउंड्री रिजोल्यूशन पे काम करना है. पीपल टू पीपल एंड ट्रैवल रिजम्पशन. ट्रैवल रिजम्पशन मतलब कैलाश मानसरोवर जो न्यूज़ में था उसका फिर से हम लोग लाइक दे आर एक्चुअली ओपनिंग इट एंड दे आर मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल. ठीक है, agreement to expand direct flight visa facilitation and cultural exchange, building upon resumption of Kailash Mansarovar Yatra and tourist visa. ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड बैलेंस ट्रेड के ऊपर भी बात हुई है. नाउ इस फिगर को देख लीजिए. इस फिगर में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, पहला कॉन्फ्लिक्ट 1962 Sino-Indian War. The second was 1967 Nathula conflict. अब अगर ये आया हुआ है Nathula conflict, so it is our responsibility to have a look on its mapping also. तो second point ये है. अब Nathula देख लो, it is here. The third conflict, it was Tulungla ambush. Tulungla ambush, it is somewhere in अरुणाचल प्रदेश. तो अगर आपसे कभी भी, अगर ये तो हम लोग IR में पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग दिस टॉपिक इन IR, बट इट विल नॉट बी लिमिटेड जस्ट टू IR, इट कैन बी लिंक टू आर ज्योग्राफी पार्ट ऑल्सो, है ना. तो ज्योग्राफी में अगर ये पूछता है तुलुंगला इज इन लद्दाख, नो, यू नीड टू नो इट इज इन अरुणाचल प्रदेश. तुलुंगला इट इज इन अरुणाचल प्रदेश. 2017 डोकलाम इशू सभी को पता है. 2020 इट वॉज द लद्दाख कॉन्फेडरेशन. ठीक है, आई गेस वी हैव कंप्लीट दिस थिंग. ओके, नाइस. सो नाउ द फोर्थ टॉपिक वी आर हैविंग इंडिया रशिया. अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, एससीओ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए. 2001 2017 में कौन कंट्री ज्वाइन हुए, 2023 में कौन हुए, 2024 में कौन कंट्रीज आई. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रैट्स आपको पता होना चाहिए. देन come to Shanghai 5, you need to know. After that there are other things also like this one, Tianjin Declaration and Global Governance Initiative. इसको आप नोट करेंगे, Tianjin Declaration and Global Governance Initiative. It can be asked in your upcoming prelims. Now coming to our India Russia. अब now let me make this map correct. This is completely Indian map. ठीक है, there is not a single point of doubt कि this is our complete map. ठीक है, this map might be a little bit distorted, we are very sorry for that, but this is our complete Indian map. ठीक है, we are proud of this, thank you so much. ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इंडियन रशिया के बारे में क्या टॉपिक दिया गया है, क्यों ये न्यूज़ में है. एंड वी विल नॉट बी जस्ट studying this particular topic, we'll be seeing its mapping also. Will not just see रशिया से एसोसिएटेड जो भी टॉपिक है उसको भी देखेंगे. रशिया से एसोसिएटेड अभी
यूक्रेन चल रहा है जस्ट फॉर द वॉर इश्यूज, तो वी विल बी सीइंग दैट रशिया, अपार्ट फ्रॉम रशिया विल बी सीइंग द यूरोप का पॉलिटिकल मैप जस्ट टू हैव अ रिविजन राइट नाउ, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा है यूरोप का पॉलिटिकल मैप, सो विल बी रिवाइजिंग दिस थिंग एंड विल बी सीइंग यूक्रेन के बॉर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट्स सी रशिया इंडिया का न्यूज़ क्या है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, ही केम टू अ स्टेट विजिट इन इंडिया ऑन December 4 and 5th. So this become important for us. So what are the key points which can be probably asked in our upcoming examination? This year marks the 25th anniversary of declaration on स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसको याद रखना है 25th, तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट बन गया है, तो इसको दिमाग में रखेंगे सो दैट यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस, यू कैन एक्चुअली नो दैट इट्स 25th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, नॉट एनी 30, नॉट 50, नॉट 15, तो कन्फ्यूज लेना है 25th। फर्स्ट पॉइंट ये याद हो गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लीडर्स वेलकम द ओपनिंग ऑफ 2 कॉन्सुलेट्स जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहा है, येकातेरिनबर्ग, येकातेरिनबर्ग इसको याद रखेंगे, येकातेरिनबर्ग इट्स इन रशिया, एंड कजान, कजान अगेन इन रशिया। सो इफ बाई चांस कजान का आपको मैपिंग आगे जाए या फिर कजान के ये आते हैं लाइक टेबुलर फॉर्मेट पे क्वेश्चंस कुछ आ जाए कि कजान इट्स इन कजाकिस्तान, नो इट्स इन रशिया, याद रखना है, ठीक है। कजान फर्स्ट पॉइंट, सेकंड वन इज येकातेरिनबर्ग एंड थर्ड इज 25th एनिवर्सरी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड टॉपिक इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। द लीडर वेलकम द एडॉप्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन टिल 2030, ठीक है। Now coming to the energy partnership, the sides noted the current and potential cooperation between Indian and Russian companies in fields such as oil and oil products, ठीक है, oil refining, petrochemical technology, oil field services and upstream technology. So ये दो पॉइंट बहुत ही जनरल है, आप एक बार सिर्फ इसको देख लेना है। The important one is Yekaterinburg, Kazan and 25th anniversary. Now the other news here it is transport and connectivity pay, we are going to work on that. We are also working on civil nuclear cooperation. This can become a potential question, cooperation in space also and cooperation in civil nuclear, ठीक है। The sides confirm their intention to broaden the cooperation in civil nuclear energy including fuel cycle, life cycle, support for operating कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको मेरे को ये बताना है कमेंट में कि कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस इंडियन स्टेट में है और इसके नियर बाई कौन सा रिवर फ्लो करता है। यू हैव टू टेल मी विच रिवर फ्लो नियर बाई टू कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, ठीक है। अगेन द सेम पॉइंट कि ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग in India of space part, component, aggregates and other product maintenance for Russian origin arms and defense equipment. Okay, you can do this thing, I guess. Cooperation in science and technology. Again, both sides call for ramping up of government to government, academia and private sector collaboration to promote application of critical and emerging technology, I guess. I hope this is clear. Just you have to read it once. The important point was this one. Just a minute. Kundalkulam nuclear power plant, and here it is Yekaterinburg, Kazan. मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है 25th एनिवर्सरी, आई गेस दिस इज क्लियर। नाउ विल कम टू आवर मैपिंग वाला पार्ट, ठीक है। रशिया का मैप हो गया। The important one is, see, why I have taken this map, and this map has been taken from worldatlas.com. So all credit goes to this particular site, and we are taking this thing just for the educational part of the journey, ठीक है। Now, keep Russia in front of you, and we are going to see the important location. Here you can see North Sea. Just below the North Sea, we are having the Baltic Sea. In the Europe mapping, we have seen that just below the Baltic Sea, we are having Poland. Okay, I hope this is clear. We have also seen NSF. NSF means Norway, Sweden, and Finland. Sweden do not touch Russia. Norway and Finland do touch Russia. And do tell me, Lithuania do touch Russia or not? I have repeatedly said it multiple times, and I can show you right now. तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान हो जाए, ठीक है। देख लो ये Norway touch Russia, Finland touch Russia, Sweden do not touch it, and Lithuania touch Russia this side. Okay, I hope this is clear. Now coming back to this particular map, you have seen North Sea, you have seen Baltic Sea. Coming little bit right to here, you are having Barents Sea. ठीक है, Barents Sea याद हो जाएगा। This place is very important, Murmansk. ठीक है, Murmansk. It is in western side of Russia, not in the eastern side. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। मुरमांस्क उसके जस्ट नीचे है व्हाइट सी, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। बेरेंट सी के राइट में आते हैं, वी आर हैविंग कारा सी, बी के
Barents Sea, Kara Sea. Again coming right, we are having Laptev Sea. ठीक है, अब इधर आ जाओ, we are having Chukchi Sea. It is also important. Chukchi Sea से हम लोग इधर आते हैं. We are having Kamchatka Peninsula. You must be knowing about this. ठीक है. Again, Sea of Okhotsk. We have seen this. We'll be seeing this in the mapping of Japan. ठीक है. Nice. This much is done. Let's revise it once again. We were having North Sea, just North Sea. Coming here, we have seen Baltic Sea, we have seen Barents Sea, we have seen Kara Sea, we have seen Leptev, here we have seen Chukchi Sea, here we have seen Sea of Okhotsk, and here it was Kamchatka Peninsula. I hope this is clear. You also please sit with a blank paper and do revise with me only. So it can become very easy for you. In examination, you just need to think once and you will be near to your answer. ठीक है, अब now many important rivers are here in Russia which were in news. First, it is Lena River. You need to remember this thing. This was in news due to some pollution and environmental crisis. So it was in news, and this has been a trend in UPSC that they are focusing on those rivers which are environmentally damaged, and they want UPSC aspirants to know about it. ठीक है, तो Lena River, it is important. Just above it, Leptev Sea. I think this is clear. And one more river which is very famous and important. It is Volga River. You can see this is draining into the Caspian Sea. I hope this is clear. ठीक है, North Sea, Baltic Sea, Black Sea, and Caspian Sea. I hope everything is clear. See, seeing map and keep revising it helps us give a cursory glance and एक picture memory बन जाता है that can help us solve multiple questions. ठीक है, Caucasus Mountain, we have already discussed it here. ठीक है, this map is for you. You can just pause the screen for once and you can check all the countries over here. They have already asked it once, and if they are asking again, you can easily solve that. Now coming to some important places of Ukraine which were in news because of Russia-Ukraine war. So they have asked about Luhansk once, Kharkiv they have already asked. So let's just revise once. Kharkiv, Ukraine, Luhansk again, Donetsk, Mariupol, Melitopol, Crimean Peninsula, Sevastopol, Odessa, Kherson. ठीक है, I hope this is clear. You need to revise this particular map for 4 times and it will be done. Let's revise again from north to south. ठीक है, first thing Kharkiv, you need to remember Kharkiv. चलो ठीक है, again Luhansk, here it is. Again it's Donetsk, you have seen. It is Mariupol, again it's Melitopol, again Sevastopol, and in between it was Odessa. It is here. I guess this is clear. You can take a screenshot of this. Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Mariupol, Melitopol, Crimean Peninsula, Sevastopol, and Odessa. This one is Kherson. I guess this is clear. Now let's revise Ukraine once again because this has already been asked कि Ukraine से bordering countries कौन-कौन है. If they have asked this in PYQ, so they may ask it again or they may ask it in a different way. So why to take a risk, and let's revise it once again. Okay, so Russia के साथ तो border share कर रहा है. Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, and not with Bulgaria. See, you have to know the exception, then you can come to a particular option which is correct. Bulgaria के साथ no border sharing, only with Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova. I guess this is clear. Bulgaria touches border with Turkey, Greece. ये समझ में आ जाएगा. And this one is Black Sea. I guess this is clear. We have already covered this one. Now, let's come to our 5th topic, which is Mauritius. And again, the same pattern. We will be having map of this. And also, I have added one important document. This I have taken directly from Ministry of External Affairs. And why I have taken so? Because it is a very important document for both prelims and mains. And you do not have to read all. I will explain everything. It will be in a story format. And only the colored part, highlighted part, you need to read. Let's start it. Okay? Why it was in news? Because Mauritius Prime Minister visited Varanasi. चलो ये तो news पता चल गया. And now, the key outcome of the visit, first thing is, we need to strengthening of special strategic partnership between India and Mauritius. A very common point. The second is a launch and inauguration of new development project funded by India, health, housing, digital governance. Third is expansion of maritime coastal security cooperation, including training and joint surveillance. Fourth is reaffirmation of cooperation of Agalega Island. ये
मैप में विल बी डीलिंग विथ, और लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, नॉट अ मिलिट्री बेस, ठीक है. बूस्ट टू इकोनॉमिक टाइज अंडर CECPA, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्चुअली लिंक्ड हेयर. I'll tell you how. In the India-Mauritius CECPA is the first trade agreement signed between India and African country. Why I have written important over here? Because I think this can become a potential statement-based question in which they can ask, the India-Mauritius CECPA is the first trade agreement signed by India with an African country. Okay, this one is the point which can make a question. African country, first African country with which India has signed CECPA. Okay, I guess this is clear. Let's come back to our this topic. India Mauritius relation. First thing is India is having a surplus trade with Mauritius. Okay, surplus trade. The second point is India signed the Comprehensive Economic Cooperation Partnership Agreement in 2021, and it is the first African country, Mauritius, which has signed this with India. Okay. Now, Mauritius was the second largest source of FDI, second largest source. So first कौन है? So first is Singapore. Need to remember this point also. I have repeat again. I'll repeat this. The India Mauritius CECPA is the first trade agreement signed by India with an African country. I guess this is clear. Indian origin people comprise nearly 70% of Mauritius population. Okay. After that, this one is important. Mauritius hosts the World Hindi Secretariat to promote Hindi in the world. So now, whenever my students are coming to me and asking, sir, how we need to approach prelims and mains together, I every time I say that please do not do any kind of segregation. See, this point, Mauritius holds the World Hindi Secretariat to promote Hindi in the world. Why can't we use this particular information in our ethics paper? Why can't we use this particular information at GS1 society? This point is important. So if you are reading this particular current affairs document, you can take out the point and put it as a fodder material in your mains preparation also. Okay, so you can just highlight this. It can become a fodder point for your upcoming mains. I hope you all are writing this year mains. So please just keep on studying. Okay. Now, this document which I was talking about earlier, we'll be studying about this. You do not have to read all the document. I have highlighted some of the key terms which are actually important. Now, the point is, as I mentioned, it is in the Western Indian Ocean. Mauritius के बारे में बात हो रही है. Nearly 70% of the island population is Indian origin. ठीक है. Mauritius is a former British colony that gained independence from the British rule in 1968. ठीक है. Just a general information. On 2nd November they are ऑब्जर्विंग अ प्रवासी दिवस. ठीक है. आपको ये बताना है कि इंडिया में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हिज, सी why we are taking the official document of government of India, because there are there are many such information which can become a potential question, not in just your prelims, be it in your mains also, and you can utilize this information in your interview also. So ये third point देखते हैं. When Mahatma Gandhi ji was coming to India from South Africa, he has a brief stopover in Mauritius. It was between this time, so we do not have to read this particular thing. Apart from that, you can do one thing. When he was at in this particular area, Mauritius mein, he has given three important messages. First was the importance of education. He was talking about that. He was talking about political empowerment. He was talking about staying connected with India. In his homage, the National Day of Mauritius, the National Day of Mauritius is celebrated on March 12th. ठीक है, on the date of Gandhiji Salt March. See how much it is important. On the date of when Gandhiji started the Salt March in India, na, on 12th March, on that day itself, Mauritius is observing its National Day. ठीक है, ये समझ में आ गया. I guess this is clear. And Mauritius was one of the handful of the important countries with which independent India established diplomatic relation in 1948, even before the independence of Mauritius. Till then, it was a part of British. Apart from that, the point 6 is important. Indian Cultural Center in Mauritius. This is the India's biggest in the world. If there may come a question about Indian Cultural Center, it is सबसे बड़ा, India's biggest center. It is in Mauritius only. Apart from that, point 7. India has traditionally been first responder as in to help Mauritius in their difficult times. First, we have responded. We are continuously responding to their needs. First thing, we have done it in COVID-19, and second was it was in Wakashio oil spill crisis. See, this example you can quote in your GS3 paper. Okay, so just keep this noted in somewhere of your notebook or anything else. Okay, Wakashio oil spill crisis and COVID-19. We have sent Covishield vaccines,
And in on July 25th, 2020, the Japanese vessel Wakashio of the Mauritian coast, it got some issues, and there were oil spill. India was the first responded that time. Apart from that, recently in the aftermath of Cyclone Shido, in 2024, India extended assistance to the Agalega Island. Agalega Island we have already seen. So three thing is very important. COVID-19, first responder for Wakashio oil spill, and the third one is Cyclone Shido. Cyclone Shido can be asked with matching to the country. Cyclone Shido is for Madagascar. Cyclone Shido again Mauritius. So you need to know about this, and a famous place Agalega, you need to map it on your mapping. Okay. Commercial relation, do not have to read this for your prelims per se. Again, we have seen CCPA, first African country to have it with India. Okay. And again, 11 Indian PSUs are located in Mauritius. Just a knowledge wala fact, nothing more. ठीक है, ये normal. Again, other institution, ठीक है, Mauritius holds the World Hindi Secretariat. We have already seen this. In 1897, India established the Indira Gandhi Center for Indian Culture. ठीक है, just a notable fact, nothing more. ठीक है, I guess we have seen everything over here, and now let's do some of the mapping. This is our Pyara Bharat. ठीक है, now let's start from the top. We have seen Sokrota, it's of Yemen. Coming down, we have Lakshadweep. Coming down, we are having Maldives. Coming here, we are having Seychelles. Again, Chagos, Agalega Island of Mauritius. If we are going here, we are having Comoros. Again, Madagascar. This one is Reunion Island of France, and this one is Mauritius. Let's revise it and check whether we are remembering it or not. We have seen Sokrota Island. Let's come down. We are having Lakshadweep. We are having Maldives. We are having Chagos Island. Here we are having Seychelles. Here having Comoros. And I guess here it was Madagascar, Reunion Island. Here it was Mauritius, and here it is Agalega Island. See, in this way, if you are making it like a flowchart, it will help you remember it. Let's revise it once again. Sokrota, Lakshadweep. Coming here down, we are having Maldives. Come here, Seychelles, Chagos, Agalega Island, Comoros ekdam extreme left, and here we are having Madagascar Island. Here we are having Reunion, Mauritius. Okay, I guess this is clear. Fine. So we have done with this topic. Now we are going to see topic number 6. Fine. India-African relationship. So again, the context is Prime Minister Narendra Modi completed a significant 5-nation tour beginning with Ghana. Ab I'll be telling you everything about this complete tour because it has been in the lens of geopolitics all the time, and it is very significant for India and for the world itself. Okay. Now what is there? Our Prime Minister was on a state visit of 5 nations, and it was in the sequence. Okay. First it was Ghana. Second, it was Trinidad and Tobago. Third, it was Argentina. Fourth, again Brazil. And fifth it was Namibia. To have a normal rough mapping of this, Ghana, it's located in the western coast of Africa. From here, he moved towards the Trinidad and Tobago. Okay. It is just above Venezuela, this particular country, and coming below, the third point of destination was Argentina. Then he moved towards Brazil. Say again he went towards Namibia. So you can remember this particular thing, and not just by this mapping, you can actually locate some other countries if you are drawing by yourself and making a rough practice of this thing. Okay. Now some important points. Ghana, Accra capital. If it comes anything like this, so you need to know about this. These are some basic points which we generally miss, but this can become actually helpful for us. Okay? Trinidad and Tobago, I will be seeing the mapping also. And what we have done here, we have taken all the mapping in the sequence. Ghana, again Trinidad and Tobago. The third one is Argentina and Brazil. The fourth, fifth, and last one is Namibia. We have taken some physical maps also. Now come here. In Brazil, the motive was of 17th BRICS summit. We'll be seeing this in our future lectures. And in the fifth point, Namibia, there we have done some extremely good works. The first is Entrepreneurship and Development Center we have launched in Namibia. So do not confuse it with Ghana, do not confuse it with Brazil, other nation in which our Prime Minister went. Entrepreneurship Development Center in Namibia. And we have done very important 3 announcements. We have done 3 announcements yet. It will be implemented later this year. Okay. The first announcement, it was DPI, it is digital payment infrastructure. The second one is
CDRI, it's related to disaster something. And the third one is Global Biofuel Alliance. We have proposed them to join this thing, and Namibia may join this in later this year. This news article, it's from Akashvani and the official government site. From here, you can see one more important point. Namibia is the first country in the world where NPCI, the digital payment infrastructure जो build कर रहे हैं, NPCI has done a technology agreement with a central bank for the implementation of UPI like payment system in the country. So please remember this point. It can become a statement wise question for your prelims. ठीक है? So this much I guess this is clear. Now we'll see the mapping. See, first visit was Ghana. So Ghana, see, this country already have been asked. Ivory Coast, gold kahan paya jata hai, and that too coffee production where it is. So this can be done. Now the other countries which can be located over here is Ghana, right? Togo, Burkina Faso. This one is Cote d'Ivoire. ठीक है. Now this is Nigeria. Nigeria के ऊपर है Niger. Nigeria is below. Niger is above. ठीक है. Nigeria के left में we are having Mali. Again Mauritania. ठीक है. You can remember this particular location because this is generally avoided by students, and we prefer like UPSC generally asks question from this area only because this one is not that much dealt with. So please just revise this and take a screenshot of this particular map. Now coming to the physical map of this. See, Lake Volta, it has already been asked in our PYQ, so we can't miss this particular lake. You need to know about this lake. We are having Black Volta, White Volta coming here and merging in Lake Volta. Fine. And Kakum National Park. You need to know about this Kakum National Park because there was some news of fire, fire in this particular national park, and this was the news. You need to remember that Kakum National Park, it's in Ghana, and Ghana is a topic which is important from prelims point of view because Lake Volta has been asked already once. Okay, I guess this is clear. Now coming to Trinidad and Tobago. Okay, so this is just above Venezuela. Okay, this much information is enough. See, we need to know a broad perspective of a particular thing so that we can eliminate some options and come to our particular correct answers. Okay, after that, our Prime Minister went to Argentina. Argentina, it's in South American continent. So let's have a proper view of this particular continent so that we do not mess it up or miss any point of thing. Okay. So keeping Brazil at our center point, whenever you do mapping, one thing it's very clear, keep one thing at your center point and connect every other thing. Let's see Brazil किन के साथ border share करता है. Fine. The first one is French Guiana. Brazil is sharing border with that. Again, it is sharing border with Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia. Okay. And do you think it shares border with Ecuador? No. You need to remember this thing. It do not share border with Ecuador. So this becomes an exception. And wherever exceptions come, we need to know that UPSC can ask a question from that particular exception. So Brazil do not share border with Ecuador. It touches border with Peru, Bolivia done, Paraguay done, and Uruguay done. What do you think about Argentina? Yes, my friend, with Argentina also, Brazil touched the border. So this is also a small exception, not exception per se, but some point which can be missed by students. So we are highlighting it multiple number of times. So again, let's revise with which country it do not touch border particularly. Ecuador do not touch border. Chile do not touch border. Rest you need to tell me. करता है कि नहीं करता है. Apart from that, let's see with which country it is sharing the border with. French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, and Uruguay. I hope this is clear. ठीक है. Now let's see. We have done about Argentina also and Brazil also. Let's do some mapping of Argentina also. Argentina touches border with Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, and do not touch any border with Peru. Do not touch any border with Peru. I guess this is clear. After that, the visit was in Namibia. So let's have a Namibia wala mapping with you, and let's have it political mapping and also some of its physical mapping. Okay. First thing, in the north, it is having a border with Angola. Namibia, it's in southernmost part of the African continent. Namibia के ऊपर है Angola. It is having a border with Zambia. It is having a border with Botswana. It's having a border with South Africa, but it do not have a border with Zimbabwe. It can become again exception. There is a small gap between Namibia and Zimbabwe, so it do not touch any border with Zimbabwe. I guess it's clear. Now come to its physical mapping. We can see clearly Tropic of Capricorn passes through Namibia. It is also passing through Botswana.
ठीक है. This, for this reason only I have taken this, just for a reference point of view. If you get to know that Tropic of Capricorn is passing through Namibia, so it must not be passing through Angola. Clear hai? It must not be passing through the above countries like Zambia and all. So just to make it clear and keep on revising, keep on repeating every time, I have taken this particular map. Tropic of Capricorn passes through Namibia, Botswana and rest of the countries. Now this one, the capital is Windhoek. ठीक है. Walvis Bay, it is very important. There was a news of some oil spill from a local boat. It was in highlighted. It was highlighted actually. So Walvis Bay, you need to know. Skeleton Coast, ठीक है, and Fish River. Again, it is important. I guess this is clear. Hoon's Mountain. When you are seeing this particular map, so just have a proper broad view of this particular thing. I guess this is clear. Walvis Bay, Windhoek, Hoon's Mountain and Fish River. Kalahari Desert, this is also important. ठीक है. It is sharing border with Botswana and Namibia. I guess this is clear. Now let's come to we have done here India and Africa relation. I guess it's clear. Now coming here with one more thing, MOU to introduce UPI based digital payment system with Namibia. This is also a topic which can be important. ठीक है. Now coming to India Sri Lanka point of view, which is again a topic which can become a part of our question for prelims. Let's see the news. Recently, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji visited Sri Lanka, marking a crucial moment in the evolving relationship between the two nations. The Prime Minister was also awarded Sri Lanka Mitra Vibhushan. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया याद रखने के लिए. The country highest civilian honor. The key outcome क्या है? पहला है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एग्रीमेंट कर रहे हैं. Second is energy grid linking India and Sri Lanka. Again, the third is Trincomalee Economic and Energy Hub. So this point again become important. The factual part, Trincomalee, and this one is Sri Lanka Mitra Vibhushan. The fourth is defense cooperation. It is again important. India and Sri Lanka signed a landmark 5-year defense MOU, an umbrella agreement aimed at structuring joint exercise, maritime surveillance, and defense industry collaboration. The fifth point is tourism and cultural connectivity boost, expansion of Buddhist circuit and Ramayan circuit. I guess this is clear. Again, digital public infrastructure को boost करना है, collaborative form में आगे proceed करना है. Seventh point is support for northern provincial development. New project in housing, fisheries, harbour, road connectivity is important for Tamil community livelihood. For this, I would like two important points which you need to remember: Sri Lanka Mitra Vibhushan and this one, Trincomalee Economic and Energy Hub. For this, you are having a task. You need to go and revise Sri Lanka map. I guess you can do that. Fine. Let's come to our seventh, I guess 8th or 7th topic. See, I have taken one important news. It's of 27th March 2026, and Japan commits official development assistance to India for 4 projects in sector of urban transport, health and agriculture. See, project in states of Maharashtra, Karnataka, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. It is not that much important, but what you can expect, the official development assistance of Japan for 4 projects in urban transport, health and agriculture. This may come or may not, but you need to know about this thing. ठीक है. We are having a topic of India and Japan, so I have taken a particular map of Japan, and in this we are going to see each and everything which can become a probable point for prelims per se. ठीक है. Now let's see the news. The first news is about India and Japan. It is the India-Japan Special Strategic and Global Partnership was strengthened by Prime Minister Narendra Modi's visit to Japan, which led to 13 significant agreement and a commitment from Japan to invest 10 trillion yen in private investment over next decade. ठीक है. So again the context पता चल गया. See, why I do focus on the context, because it can help you remember a particular fact. It's kind of storytelling, so आपको याद हो जाएगा. ठीक है. Now let's see some important outcomes. First one is defense and strategic cooperation deepen. ठीक है. Agreement to expand joint military exercises. अब exercises क्या क्या है? First is Dharma Guardian. First point which you need to remember. Second one is GMX and intelligence and cyber coordination. So 2 points which is very important. First is Dharma Guardian. Second one is GMX military exercises. Second point is industrial and semiconductor collaboration, finalization of semiconductor manufacturing partnership with Japanese firm, investing in chips, packaging and testing units in India. Third point is high speed rail. जो बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी उसके बारे में है, मुंबई एंड अहमदाबाद. ठीक है. Reaffirmation on
schedule completion with updated financing and technology transfer commitments. I guess this is clear. Clean energy and hydrogen partnership के बारे में बात हुई है. Connectivity and Indo-Pacific cooperation. This point is very important. Connectivity and Indo-Pacific cooperation, strengthening India-Japan Africa project and alignment under free and open Indo-Pacific. I guess this is clear. India-Japan Africa project. The fourth point is people to people and talent mobility, expansion of skill training, student exchange, recognition of India's skill certification in Japan. Now let's see the mapping over here. First point is we'll see it from north to south and we'll try to remember it from how it can help us solve a particular question. First thing is seeing from the north, we have already seen Sea of Okhotsk in the Russia wala map. So let's see. One island which is very famous, it's Hokkaido Island. It's in the northern side. The second one is Honshu Island, just below Hokkaido. The third one is Shikoku Island. The fourth is Kyushu Island. I guess this is clear. Ryukyu Island, it is known for earthquake and volcanoes. Ryukyu Island, it is in the southern part of Japan. It's not in the northern. You need to remember, whenever any exception or whenever any point which can collide with some other facts, you need to know it very deeply. Okay? Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, and Ryukyu Island. I guess this is clear. Sendai framework. It is about what? You need to tell me. Sendai framework. It was related to disaster management. It is in the eastern side of Japan, and it is touching Pacific Ocean. Not this side, Sea of Japan. Ko touch nahi kar raha hai. It is touching Pacific Ocean. I guess this is clear. Tokyo again this side. I guess again you know about this. This place is very important. Nagoya protocol we have already read in our environment also. So this one is Nagoya. Okay. You can read this thing. Nagasaki, Hiroshima. Okay. Now this particular point which is important is Lake Biwa. Lake Biwa. We have already seen multiple lakes over there. First one is Lake Odega, where you have seen लेक ओडेगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यूरोप वाले मैप में. रेनडियर लेक आपने देखा होगा. हडसन बे यू मस्ट हैव सीन. लेक वोल्टा आपने देखा होगा. लेक बीवा अगेन वी हैव सीन. So these many lakes we have revised. So whenever I am telling any particular lake name, you need to visualize कि आपने ये कहाँ पढ़ा था, किस मैप पे पढ़ा था. I guess this one is clear. Again, one important point is joint लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जापान एंड इंडिया कर रहे हैं. ये कॉपरेशन ऑन चंद्रयान 5 प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ 5 छूट गया है. तो कॉपरेशन ऑन चंद्रयान 5 प्रोग्राम, ज्वाइंट लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विथ जापान एंड इंडिया. याद रखेंगे चंद्रयान 5 के साथ लिंक्ड है ये. आई गेस दिस मच इज क्लियर. वी हैव ऑलरेडी डेल्ट अबाउट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस. नाउ कमिंग टू, वी हैव डन दिस थिंग. We are having India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Apart from that, we are having India New Zealand FTA, and then India Thailand partnership, India Kyrgyzstan, and before moving ahead, we are having India Israel BIA. So we have noted some of the informative information for you here. Let's see how we can proceed further. Now we will start with India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. It is a very historic moment for India and UK. Okay, so India and United Kingdom have taken a major step in building a stronger economic partnership with signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement, a free trade agreement with the goal of pushing bilateral trade beyond $100 billion, ठीक है, by 2030. ठीक है, nice. So the thing is कि what all can be asked from this particular information and how this is important for you and how much this can be avoided for your prelims. But the thing is, you must be aware about this news. Okay? The Prime Minister of India and United Kingdom also endorsed the new India-UK vision. This is again becoming important for prelims per se. Also endorsed the India-UK vision 2035 that reaffirms their shared commitment to unlocking the full potential of a revitalized partnership. Key takeaways देख लेते हैं. The agreement eliminates tariff on 99% of India's export to UK. The agreement eliminates tariff on 99% of India's export to UK. And why I have repeated it twice? Because this number is very significant. It can reduce, like in UPSC paper they will say 75%, or they will say only 60%, or only less than 50%. No, it is the agreement eliminates tariff on 99% of India's export to UK, covering nearly 100% of trade value. ठीक है, again you can read it over here. ठीक है, UK government procurement open to Indian companies for the first time.
ठीक है. A big win for Indian agriculture as UK market opens up duty free for nearly all Indian agri export with limited exceptions. ठीक है. You can read these points. These are some general points which can help you figure out why this news was important. ठीक है. Now coming to this point, the double contribution convention. The double contribution convention will save Indian companies and workers over 4,000 crore by removing dual social security payments. ठीक है. So this is actually helpful. ठीक है. What it is? The double contribution convention will save Indian companies and workers over 4,000 crores by removing dual social security payments. ठीक है. इंडियन यूके विजन 2035, इसमें किस किस पिलर से बात होगी? स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटीग्रेशन, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कॉपरेशन, एजुकेशन मोबिलिटी एंड स्किल्स, पीपल टू पीपल कल्चरल टाइज. अगेन India, New Zealand FTA, the same thing what we have discussed further earlier. Here it is. The content is more of the same. आप एक बार प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा. It will be sorted. ठीक है. Now we'll come to India and Qatar. India and Qatar upgraded their bilateral relation to a strategic partnership with a focus on strengthening cooperation in trade, energy, investment, innovation, technology, food security, culture, and people-to-people ties. Let's see. This is important. Qatar is India's largest LNG supplier, providing 40% of import. This point can be notable for prelims. I guess this is clear. A revised agreement aimed at avoiding double taxation and preventing fiscal evasion concerning income taxes was also signed, further deepening economic cooperation between the two countries. I guess this is clear. Now coming to the fact of India-Thailand strategic partnership. See, why I am actually going little bit forward, little bit fast over here, because these content may not be that much appropriate for your prelims per se, but the thing is you need to be aware of this thing. That is the whole reason we have introduced this thing, this particular topic in your current affairs, just because you need to be aware of that कि India UK का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंडिया को क्या हेल्प मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए से क्या हेल्प मिल रहा है, एंड इंडिया कतार से अगेन क्या हमें बेनिफिट हो रहा है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड कतार, वी विल बी सीइंग द मैप ऑफ कतार आल्सो. ठीक है. वी हैव एडेड द मैप हियर इटसेल्फ. नाउ कमिंग टू द फैक्ट, अगेन दिस वन इज India-Thailand strategic partnership. During his 2-day visit to Thailand in April 2025, Prime Minister Narendra Modi announced the elevation of bilateral ties to strategic partnership following delegation level talks with PM of Thailand. Now, this thing is taking into consideration the existing cooperation and potential for closer cooperation. The two leaders agreed to elevate the existing bilateral relation to strategic partnership. Again, they are talking about strategic partnership, and Thailand is important for Asian Central Asian nations, Asian we are talking about Asian multiple times, so it is a key factor in that point also. ठीक है. They also reaffirmed their commitment to exploring concrete activities to implement the Asian India joint statement on cooperation on the Asian outlook on the Indo-Pacific and peace, stability, and prosperity. I guess it's clear. Again, India and Kyrgyzstan, and if we are talking about India and Thailand, we'll be seeing the map of that. And India and Kyrgyzstan, again, we are going to have a look on the map. ठीक है. The India and Kyrgyzstan signed the protocol and exchanged the instrument of ratification of bilateral investment treaty. ठीक है. The new treaty replaces the earlier agreement enforced on 12th May. ठीक है. I guess it's clear. The BIT aims to promote and protect interest of investor of either countries in the territory of the other country and has the key features. Features देख लेते क्या क्या है. Enterprise based definition of asset with an indicative inclusion list and a specific exclusion list of assets. ठीक है. This point is very important. Most favored nation obligation has in the past allowed investors to selectively import favorable substantive provisions from other treaties concluded by the host state. The MNF clause is accordingly removed in the BIT. This is important. See, if something is very concrete, it is becoming important for us for a prelims point of view. The MNF clause is accordingly removed in the BIT agreement between India and Kyrgyzstan. Now coming to the fact, this information is, and this point is very important. Now it is the government of Republic of India and government of State of Israel signed the bilateral investment agreement BIA. Now this point is important. See, the fact which point is very very important for your prelims per se, I'll be dealing with that very exclusively. Now, Israel became first OECD country to sign bilateral investment agreement with India. ठीक है. Israel became the first OECD country. So the fact variables are, first, Israel is also in OECD
The second is to sign bilateral investment agreement with India. I guess this is clear. If we are talking about OECD, let's talk about some of the static concepts also. First is it was founded in 1961. The second is it's a UN observer. You need to know about that. Its headquarters is in Paris. Mostly developed country are part of OECD. India is not a member of OECD. Base erosion and profit sharing, it is monitored by OECD. Global minimum corporate tax, it is again monitored by OECD. So OECD managed two things. First is base erosion and profit sharing. Second is global minimum corporate tax. Okay, so just remember this. So the important point over here is 1961 founded. चलो PCS में काम आ जाएगा. I don't know if they are going to ask in UPSC, but you need to be focused on that. 1961 it was founded. UN observer, again Paris में headquarter है. Mostly developed country are part of OECD. ठीक है. India not a member. Again it is important. Base erosion and profit sharing. It is monitored by OECD and global minimum corporate tax. Now let's see the world mapping of Israel. First, in the north it is Lebanon. Here we are having Syria, which is touching Israel. Again West Bank, this one is Jordan. Okay, this is Egypt, Sinai Peninsula. This is Gulf of Aqaba. This is important. I guess you have done this mapping earlier and you are revising it like on a daily basis, because this place is actually in news and it can be asked in your upcoming prelims. The places which were actually in news here is Halfa. One port is there, Hafia port is also there, Haifa port. Okay, you need to know about that. Hadira, it was also in news. Khan Yunis, you must be aware of that. Okay, this Gulf of Aqaba is news. Negev desert, you need to know about this also. Dimona, it was again in news. Okay, Dimona, Masada. Two important point which were in news: Masada, Dimona, Gulf of Aqaba, Negev desert, Khan Yunis, Ashkelon and Ashod. Ashkelon and Ashod. Ashdod, sorry, Ashdod and Ashkelon. ठीक है, Ashdod and Ashkelon. अब now if they may ask, Ashdod, it's in Iran. No, it's in Israel. You have seen here. Again Ashkelon, again you need to know it's of Israel. Okay, now coming here, Dimona, you know about this. Masada, you again know about this. Gulf of Aqaba and Negev desert. I guess that's clear. Up Lebanon, Syria. This one is Jordan. This one is Egypt, Gulf of Aqaba. This one is I guess that is clear. Now let's see some of the Asian mapping also. It can become helpful because it was in news. ठीक है, अब देख लेते हैं. Israel here, Lebanon ऊपर, again Syria से border touching, Jordan, Sinai Peninsula. I guess this much is clear. Turkey यहाँ पे है. Turkey से नीचे आते हैं. We are having a border with Syria. We are having a border with Iraq also. Turkey touches Iraq. Turkey touches Iran. याद रह जाएगा. Turkey is having a border with Iraq also. Turkey is having a border with Iran also. It is a very confusing point. ये जो point है, see, I'll just a minute. This point is very, very important. Turkey is having a relation with border with Iran also. Turkey is having a border with Iraq also. That too with Syria. ठीक है. Taking Iraq as a central point, let's see what all countries are touching that. Iraq, right side it's Iran, it's Syria, Jordan, Saudi Arabia. This one is Kuwait. Now taking Saudi Arabia as a center point, we are having Jordan in above, we are having Iraq here, we are having Kuwait here, we are having Bahrain, Qatar, UAE, Oman, two parts, and this one is Yemen. Let's revise once again and we'll be seeing this from Yemen, Oman, UAE. This one is Oman ka part. This is Qatar, this is Bahrain, this is Kuwait, this is Iran, Jordan. I guess this is clear. Now coming to Iran. Iran को central point मान के let's see which all country is touching it. First thing is Azerbaijan. Second is Turkey. This one is Iraq. This one is Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan. I guess this is clear. Iran, let's start from here. Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. This one is Azerbaijan, Turkey, Iraq. I guess this is clear. Okay.
Now coming here, let's have an overall view of this part. First thing, Iran we have seen. From Iran, Iraq, above it's Turkey, it's Syria, Jordan, Israel. This one is your Sinai Peninsula. Coming here, we are having Egypt. Egypt के नीचे Sudan. Egypt इधर Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, and Western Sahara. I guess this is clear. For here, Saudi Arabia को देख लेते हैं एक बार. Arabia को देख लेते हैं. Jordan above, Iraq, Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, and Yemen. I guess this is clear. So we have done with our first part. Okay. We are done here. And now we are going to see multilateral organization. For this, what I will be telling to you, again, you need to sit with your one-pager notes, blank sheet, and what all important points I'll be telling you, you need to just mark it down. BIMSTEC, 5 points. Again, WTO, again 2-3 important points. BRICS, again 2-3 important points. With this, we are going to see into these this whole topic we are going to discuss, and then we'll be seeing some miscellaneous topics and then some places in news with continents. Okay, let's start with multilateral organization. So we are going to start with our multilateral organization, this topic. This was the second part in our index, and we have already covered our bilateral relations. Okay, we have done the mappings, we have done some key terms, we have noted down important points which can be asked in our upcoming examination. So the first topic of the day is 6th BIMSTEC summit. So we are going to see its history, we are going to see some static concepts. The context is Prime Minister participated in the 6th BIMSTEC summit which was held on 4th April 2025 in Bangkok, Thailand. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. BIMSTEC रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल रीजन के अराउंड का कंट्रीज है जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है. लेट्स सी द कंट्रीज फर्स्ट. देयर आर 7 कंट्रीज. फर्स्ट वन इज इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल. नेपाल याद रखेंगे, नेपाल इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे मार्क कर, नेपाल इज इंपॉर्टेंट. श्रीलंका, थाईलैंड एंड भूटान. लेट्स रिमेंबर वंस अगेन, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड भूटान. सी, म्यांमार एंड थाईलैंड also part of ASEAN, so do not forget this part. Okay, so we have seen the countries. 7 countries हैं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड भूटान. थाईलैंड एंड म्यांमार हमारा एशियन का ही पार्ट है, so do not get confused, and from that knowledge you can interlink it with BIMSTEC also. Apart from that, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ढाका में है, बांग्लादेश. एंड इसके जो लीडरशिप रोटेट होते हैं, इट इज हैपन थ्रू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, इतना समझ चुके हैं हम लोग द बैकग्राउंड एंड द detail about BIMSTEC. Now let's see some details about that. The theme of the summit was BIMSTEC prosperous, resilient and open. ठीक है, the summit adopted the following things. The first one is the 6th BIMSTEC Leaders Summit Declaration, a reforming member state commitment to the vision. ठीक है, normal sir. Apart from that, in the second topic, BIMSTEC Bangkok Vision 2030 document. ठीक है, अब ये क्या है? A strategic blueprint for regional development focusing on economic integration, connectivity and human security. Now, the question यहाँ से कैसा frame हो सकता है? How the examiner is going to frame the question from this particular topic is Bangkok Vision 203 document. It is related to which particular organization? So you must be knowing it is related to BIMSTEC. ठीक है, भूलना नहीं है. We are going to come here and revise once again. Bangkok Vision 2030 document. It is related to BIMSTEC. Now the third point, signing of BIMSTEC Maritime Transport Agreement, which provides for किसके लिए है? National treatment and assistance to vessel, crew and cargo. ठीक है, mutual recognition of certificates or document, joint shipping coordination committee and dispute settlement mechanism. Normal point, it can be asked, or you can write this particular information in your mains by interlinking something. Now coming to the next point, report of BIMSTEC eminent person group constituted to make recommendation for future direction for the BIMSTEC. Normal the point here. Now coming to the fact, list of initiative by Indian Prime Minister. Now this becomes very important, so we are going to look into this in some depth also. The first one related to business. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक बिजनेस समिट एवरी ईयर. फॉर आईटी सेक्टर, व्हाट was the point written or conveyed over there? The first thing is pilot study to understand the needs of BIMSTEC country to share the experience of digital public infrastructure. हम लोगों ने देखा था, और यहाँ हम लोग just recall that we have seen that Prime Minister was on a
visit of 5 countries, and that was also Namibia के पास भी गए थे वो, and in that we have done 3 major announcement. In that one was digital public infrastructure. So our government is focusing more on this particular thing. Now, in the IT, only the second point is connectivity between UPI and payment system in BIMSTEC region. ठीक है, nice. Now, this point again, mitigation and disaster management. ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? The first is establishing the BIMSTEC Center of Excellence for Disaster Management in India to cooperate in disaster management, relief, and rehabilitation. So now this becomes very, very important. BIMSTEC Center of Excellence for Disaster Management, it is going to get open in India. So you need to revise this completely. Now, the second point is fourth joint exercise between BIMSTEC disaster management authorities to be held in India this year. You need to remember these 2 points, which is very, very important. First one is BIMSTEC Center of Excellence for Disaster Management, which is going to get open in India. The second one is fourth joint exercise between BIMSTEC disaster management authorities to be held in India this year. Now, from the security point of view, it is holding the first meeting of Home Ministers mechanism in India. Okay, remember this thing. Fine. Holding the first meeting of Home Minister mechanism in India. It is related to BIMSTEC. For the space part, setting up ground station for manpower training for BIMSTEC country, manufacturing and launching of nanosatellites, and use of remote sensing data. Normal. ठीक है. Now coming to the fact, capacity building and training. What is important? The key term bodhi. It's very important. bodhi का देख सकते हैं मतलब क्या है? It is BIMSTEC for organized development of human resource infrastructure initiative. Under this, 300 youth from BIMSTEC country will be trained in India every year. It is going to be trained. They are going to get training in India, and it is for human resource development. They will be training across like about 300 youths from BIMSTEC countries, and the term is Bodhi. ठीक है, scholarship to BIMSTEC students in Forestry Research Institute of India and expansion of scholarship scheme at Nalanda University. Normal training program for every year for young diplomats from BIMSTEC country. Normal point. You do not need to worry more on this. Now, Data Memorial Center to support training and capacity building in cancer care in BIMSTEC country. Normal point. These 2 points are not going to get asked in your prelims examination. These are very general and broad point. Establishment of Center of Excellence for Research and Dissemination in Traditional Medicine. Normal point. Now, Center of Excellence in India for exchange of knowledge and best practices. Again, normal point. Now, coming to the fact, energy. BIMSTEC Energy Center. ठीक है, यहाँ याद रखेंगे. BIMSTEC Energy Center in Bangalore has started working. ठीक है, BIMSTEC Energy Center. If they are asking BIMSTEC Energy Center, it is in Pune. It is in Hyderabad. No, it is in Bangalore. You need to remember this. And what it is, BIMSTEC Energy Center in Bangalore has started working. ठीक है. Now, come here. Youth engagement के लिए क्या हो सकता है? BIMSTEC Young Leader Summit to be held this year. Or I have also mentioned this has already been done. It has been done in Gandhinagar. So BIMSTEC Young Leader Summit to be held in this year हो चुका है ये. BIMSTEC Hackathon and Young Professional Visitor Program will be launched. Sports के बारे में देख लेते हैं. Holding BIMSTEC Athlete Meet in India this year and hosting the first BIMSTEC Games in 2027. Now, my students, this is very important. Let's see. The first is holding BIMSTEC athlete meets in India this year, and the second point is hosting the first BIMSTEC game in 2027. ठीक है. Culture के लिए क्या है? BIMSTEC Traditional Musical Festival to be held in India this year. Connectivity के लिए देख लेते हैं. Establishing of Sustainable Maritime Transport Center in India to work to enhance coordination, capacity building, research, innovation, and maritime policy. See, this point is very common. Normal, you can easily eliminate or you can easily get to know the correct answer. For this, you need to learn BIMSTEC Young Leader Summit. It has already been happened in Gandhinagar. BIMSTEC Hackathon again. BIMSTEC Athlete Meet to held in India this year, and BIMSTEC Games in 2027. Now, this point I have written some key pointers which is important. 9 points related to BIMSTEC which can be asked in your particular examination. So, how many countries we have seen? 7 countries. Which are the countries? Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand. So these are the 7 countries, and they are dependent on Bay of Bengal. So that is the reason Nepal is also getting added, because it is dependent on Bay of Bengal. Second point is headquarter कहाँ है? ढाका में है. कब ओपन हुआ? 2014. ठीक है. And again, leadership rotated on alphabetical wise. First summit in 2004. Again, Millets 18, first ever military field training
it is linked with BIMSTEC alternative to SHARK के alternative में देखा जाता है. Sixth meeting it was held in 2025. First meeting in 2004 and the sixth meeting it happened in 2025. Now Bodhi again we have seen it is for human resource development. Bangkok vision document 2030 which we have learned earlier it is related to BIMSTEC and BIMSTEC Youth Summit happened in Gandhinagar. So you need to remember this particular point which I have mentioned over here. You can take a screenshot of this particular thing or you can pause and write it in your notes itself. Now we'll be seeing the other topic. It is United States Agency for International Development. It was actually in news for a lot of reasons. Let's see the context over here. The first context is, so why this particular organization was in news? We are going to see the context first as we are going forward with everything. Context. The US President Donald Trump has imposed a 90-day freeze on foreign aid, halting US Agency for International Development program worldwide. ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है इसका. First thing is, ये particular organization used to give foreign aids and actually helping other countries also and other organizations for some reliefs and all that. Now let's see about USAID. What it is? United States Agency for International Development is an agency of United States का agency है. It is not USAID. ठीक है, so it's an agency of United States government that has been responsible for administering civilian foreign aid and development assistance. The first thing is civilian foreign aid and the second is development assistance. It has been established in 1961 by John F. Kennedy to unite several foreign assistance. तो बहुत सारे उनके पास फॉरेन असिस्टेंस हुआ करते थे डिफरेंट कंट्रीज के लिए. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव कंबाइंड एवरीथिंग एंड दे हैव फॉर्म यूएस एड. फाइन, ठीक है. Now this is under one agency, law places under USAID under the direct authority and policy guidance of Secretary of the State. Nice. Like third point is, according to the US government official spending tracker, US aid was allocated $44.2 billion in the budget 2024. Okay. Now, while this amount to just 0.4% of the total US federal budget, media report indicate that it accounted for nearly 42% of all humanitarian aid tracked by UN in 2024. ठीक है, US aid funds a range of programs which included healthcare, food aid, everything. So, as per my guess, this particular topic, you can't expect a direct question from this, but you need to know about this. कि ये है क्या? See, this particular thing can help you solve other question, and you can easily eliminate some of the option which can be related to this particular thing because it was a news. That's it becomes our responsibility to just have a look on this, to just know about this. ये है क्या, काम कैसे करता था. So we got to know that it's the aid of United States. It was started in 1961. John F. Kennedy clubbed all the other assistance fund and made USAID. It is under Secretary of State and it helped 42% of all humanitarian aid में इसका इनका मदद था. Okay, we are just having a temporary or cursory look over this particular topic. Now we'll be having a topic of WTO and SDT clause. अब ये क्या है? And do one thing, just keep a blank notebook with you and I'll be telling you some key pointers. Just write the key pointers. Do not write everything. Just write some key pointers. It can help you revise and it will be good for you to make a short notes of these points. ठीक है. Now context क्या है? China announced it will retain its developing country status, ठीक है, developing country status at the World Trade Organization, but forgo requesting special differential treatment in future negotiation. ठीक है, it's a very big step by China, and we are going to see each and everything. We'll be seeing about WTO also. We'll be seeing about the SDT clause, and I mentioned some of the key pointers here. See, for WTO, I have again 9 points, and for SDT, some important key pointers which can help again to get a broader knowledge and it can help us solve a particular question. Now, let's see what is SDT. It is special and differential treatment. अब इसके बारे में पढ़ लेते क्या है. स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज इन द WTO टू रिसीव, क्या डेवलपिंग कंट्री के लिए है, टू रिसीव लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टैरिफ और मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन ट्रेड रूल्स. तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है किनको, डेवलपिंग कंट्री को, जस्ट टू बिकम एट पार विद डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, नाउ इट इज मेंट टू हेल्प वीकर इकोनॉमीज इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल ट्रेड सिस्टम. ठीक है, समझ में आ गया. हाउ इज SDT डिसाइडेड, किस तरीके से डिसाइड होगा, सभी डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए लेट्स सी हाउ इट इज डिसाइडेड. फर्स्ट थिंग,
देयर इज नो फिक्स्ड लीगल डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं मेंशन है डेवलपिंग कंट्री को नेम करने के लिए, ठीक है। WTO अलाउ सेल्फ डिजिग्नेशन, एनी कंट्री कैन कॉल इट सेल्फ डेवलपिंग, ठीक है। एक सेल्फ डिजिग्नेशन, कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलपिंग बुला सकता है। दैट्स द रीजन चाइना अनाउंस इट विल रिटेन इट्स डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। बट ऐसा नहीं है कि इट इज फ्री एवरी टाइम, विल सी हियर। बट हाउएवर अदर मेंबर कैन चैलेंज द स्टेटस इन नेगोशिएशन, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पे। देयर इज नो फिक्स लीगल डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कोई डेफिनेशन नहीं है पर्टिकुलरली, नो लीगल डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन WTO। एंड द सेकंड पार्ट इज WTO allows self designation of developing country, and also we do have other member can challenge the particular status of this developing country who is naming itself as that, ठीक है। implication क्या हो सकता है इसका? if China keeps the SDT मतलब special differential treatment अगर वो रखता है अपने पास, तो it means Indian industry may face stronger competition, especially in किसमें? solar modules, electronics, steel, textile, EV supplies। अगर if China loses its SDT, India may gain more export competitiveness बढ़ जाएगा in global market. India itself claim SDT, so it must defend the principle while differentiating from China's scale. Now, let's see here what is SDT and how it is important. ठीक है? First, for the countries who is actually taking advantage of this is flexibility, longer implementation period for commitments. Second is preferential treatment, developed nation can offer market access to developing nation without reciprocity, ठीक है, समझ में आया। सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर ट्रेड स्टैंडर्ड एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डेवलप्ड कंट्री को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। LDC फोकस्ड, specific provision targeted at most vulnerable economies। अगेन व्हाट आई सेड, एक पार पे लाने का ये एक तरीका का एस्पेक्ट है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ मेथड। बट चैलेंजेस क्या है ये भी देखना जरूरी है। डेफिनेशन डिस्प्यूट, फर्स्ट थिंग इज डेवलप्ड नेशन आर्ग्यू दैट मेजर emerging economies like China, India, and South Africa should not qualify, demanding a move away from self-declaration of development status। अब developed country क्या बोलते हैं? Some major emerging economies like China, India, and South Africa, they should not qualify for self-declaration of developed status। Again, effectiveness पे बात होती है। SNDT provisions are sometimes considered weak because they lack precise enforceable language। It is very layman and anyone can self-declare that they are developing। And reforms क्या हो सकता है? Proposal include a differentiated approach that use objective economic indicator, ठीक है, objective economic indicator rather than binary developed and developing classification। अभी आपने सिर्फ बोल दिया developed या developing है कोई country, and that too they can do self declaration, and after that they can take use of advantage of SNDT। so that is the reason developed countries are saying that there should be a differentiated approach, not just a binary term between developed and developing, ठीक है। अब WTO के बारे में कुछ देख लेते हैं, some basic key details which can help us revise our basics, revise our static concepts, and help us solve a particular question related to this particular organization। So WTO का 30th anniversary was celebrated on 1st Jan 2025। So it becomes very important, 30th anniversary of WTO। First, formed under Marrakesh Agreement, Marrakesh Agreement linked to WTO, so do not forget Marrakesh Agreement linked to WTO, ठीक है। Formed under Marrakesh Agreement after Uruguay round negotiation जो हो रहा था, GATTS, आपको पता होगा ये, इसी के बाद हमारा WTO एस्टैब्लिश हुआ 1995 में। द हेडक्वार्टर इज जेनेवा। ट्रिम्स एक पर्टिकुलर की टर्म है रिलेटेड टू WTO। अब ट्रिम्स का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन प्रोहिबिट्स मेजर्स दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फॉरेन प्रोडक्ट। अब मान लो कि इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इंडिया का एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ USA जा रहा है और यहाँ की सरकार इस पे डिफरेंशिएशन करने लगे, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, यहाँ का टैरिफ बढ़ा दे, तो क्या होगा? यहाँ के जो भी एक्सपोर्टर हैं दे विल lose that competitive edge and it will become very difficult for people to do any kind of business। So that is the reason TRIMS came into effect। It actually prohibits measures that discriminate against foreign product। ये एक बार ऑलरेडी PYQ में आ चुका है, ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स में आया है, तो प्लीज रिमेंबर TRIMS। ट्रिप्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी इश्यूज आते हैं वी गेट रिजॉल्व थ्रू दिस ट्रिप्स। नाउ AOA is related to
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं इसको, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर 3 बॉक्स आते हैं, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना स्टैटिक नोट्स निकालेंगे और ये तीनों बॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे बिकॉज इट वॉज इन न्यूज। नाउ अगेन सैनिटरी एंड phytosanitary measures comes under WTO only. It is an intergovernmental organization. The highest decision making body is ministerial conference. ठीक है, समझ में आ गया? I hope this is clear. You just take a screenshot of this particular page or particular screen and you can revise about WTO. समझ में आता है? Okay, nice. Now we'll be seeing about the other topic, which is BRICS. So fine. As I mentioned, we are going to talk about BRICS. So BRICS क्या है, क्या इसका history है, and why it is important for us, we need to know about that. Apart from that, I have mentioned some key important topics about BRICS and also about the new development bank which is related to BRICS. And we are having new development बैंक के member countries भी हैं, so we'll have a quick revision on this part. Now let's see the context over here. PM Modi took part in the 17th BRICS summit held in Rio de Janeiro, Brazil, and you must be knowing, I have already told you that our Prime Minister was on a tour of 5 countries. In that, he first visited to Ghana, then he visited to Trinidad and Tobago, then he visited to Argentina, and then Brazil. And in this Brazil, he was having his 17th BRICS कॉन्फ्रेंस और समिट। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या लिंक करना है, कैसे अपने आप को रिवाइज करते चलना है। फर्स्ट थिंग इज 17 ब्रिक्स समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू सी अबाउट एंड लर्न अबाउट ब्रिक्स। नाउ मोर अबाउट ब्रिक्स 17th समिट। फर्स्ट थिंग इज थीम क्या था इसका, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, very important, cooperation for more inclusive and sustainable governance. Now Indonesia officially joined BRICS. Now this becomes very very important. Indonesia officially joins BRICS. I'll be coming again here to keep you revising, and we'll be revising this particular topic for 3 times. The first one is Indonesia officially joined BRICS, while Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, and Uzbekistan were welcomed as BRICS partner country. See, when there are multiple things, it becomes very hard for examiner to make a question out of that, but this one is very very exclusive. Indonesia officially joined BRICS. I have revised it for the second time. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। इंडिया विल अज्यूम ब्रिक्स chairship and host 18th BRICS summit in 2026. So again, it's very very important that we are going to host 18th BRICS summit in 2026. So it becomes very important for us to know about BRICS. ठीक है, which country has joined? So it's Indonesia which has joined BRICS. ठीक है, की आउटकम क्या है 17th BRICS summit का? तो फर्स्ट वन इज consolidation of BRICS plus membership, finalize procedures for new members, integration into all working groups, financial track and ministerial forum. जो भी नई कंट्रीज आए हैं उनको अच्छे तरीके से ज्वाइन करवाना, उनको हर वर्किंग ग्रुप्स में ज्वाइन करवाना एंड फाइनेंशियल ट्रैक्स एंड मिनिस्ट्रियल फोरम, नॉर्मल पॉइंट। नाउ अगेन पुश फॉर लोकल करेंसी ट्रेड, एग्री क्या हुआ, एग्रीड टू एक्सपैंड ट्रेड सेटलमेंट इन नेशनल करेंसीज, ठीक है, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर इन एनर्जी एंड कमोडिटी ट्रेड, very very important point. Third point is strengthening the new development bank. They have agreed to strengthen the new development bank. For this reason I have put new development bank का थोड़ा सा static part also, because if we are seeing BRICS, we are linking it with our current status in which BRICS will be happening in our country. So we need to know about BRICS past summit, we need to know about the sum declaration, we need to know about NDBs, and we need to know about which new country joined the particular organization or particular body. Okay. Now coming here, strengthening the new development bank, increase lending in local currency, first thing, enhance membership outreach to global south economies. Now nice. The fourth point is energy and food security cooperation, launch framework for oil and petrochemical coordination with Saudi Arabia and UAE on board, fertilizer and grain supply chain stability, critical for India and Africa, normal points, not that much important. Again, climate and Amazon Indo-Pacific environmental cooperation. This is very important point. Brazil linked Amazon rainforest preservation with Indian Ocean climate resilience. Brazil linked in Amazon forest preservation with Indian Ocean climate resilience, promoting climate finance without conditionalities. ठीक है, adoption of BRICS leader framework declaration on climate finance. ठीक है, climate finance again very important. BRICS leaders framework declaration on climate finance. Now the fifth point is reformation of multilateral
reform. Everyone is saying about multilateral reform. So again, a reformation of multilateral reform. किस कौन से multinational reforms? First thing is UNSC का reform. The second is global financial governance reform. Third is greater voice for global south in IMF and World Bank. The seventh point is partnership for elimination of socially determined diseases. The initiative aims to strengthen cooperation, mobilize resources, and advance collective efforts to eliminate SDDs. SDDs क्या हो जाएगा? Socially determined diseases. ठीक है. अब आपका ड्यूटी ये बनता है कि इनके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर डिजीजेस होते हैं. Just go and remember some 5 to 6 disease. From there you can get an idea of that socially determined disease. Now something about BRICS. First thing, coined by Jim O'Neill in 2001 as BRIC. Brazil, Russia, India and China. Later South Africa was added. ठीक है. Let's see, cover this one first. Evolution देख लेते हैं. Formal grouping since 2006. First summit कहाँ हुआ था? रशिया में. It was held in 2009. Became BRICS with South Africa का inclusion in 2010. Aim क्या है? Reform global governance, very common point. Provide alternative to Western dominated institutions like IMF and World Bank. Pillars क्या हैं? Political security, economic and financial, culture and people to people ties. Global share again 49.5% population and 40% GDP and 26% of trade. Not that much important. You can write it in your mains if this question, if you are getting some question around ब्रिक्स. ठीक है. नाउ मेंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट ब्रिक्स में पहले मेंबर देख लेते हैं. फर्स्ट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 2009 and in 2010 South Africa joined, so we are calling it BRICS. Earlier it was only BRIC. So BRIC plus, it means the new one. Who are the new one? First Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia, Saudi Arabia and UAE. So now you need to remember these all. It is very very important. And how is the best तरीका जो to remember this thing? First thing is आप Egypt को mark कर लो. Fine. Egypt को mark किया आप. Egypt के नीचे आओ. You are having Ethiopia. Correct. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पता चल गया. यहाँ पे थोड़ा सा ईरान आ जाएगा. ईरान ईरान. यहाँ पे थोड़ा इंडोनेशिया आ जाता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यहाँ पे अगेन थोड़ा सऊदी अरेबिया आ जाता है एंड यहाँ पे अगेन यूएई आ जाता है. तो दिस पैटर्न कैन हेल्प यू आउट. लेट्स मेक अ नॉर्मल मैप आउट ऑफ दैट. सो विल डू वन थिंग. विल स्टार्ट विद इंडोनेशिया ओनली. इंडोनेशिया से स्टार्ट किया. यूएई पे आए. यूएई से सऊदी अरेबिया पे आए. सऊदी अरेबिया से अगेन ईरान पे गए. ईरान से एथियोपिया पे आए. एथियोपिया से इजिप्ट पे गए. समझ में आया? व्हाई आई एम मेकिंग दिस थिंग? बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, Indonesia, Saudi Arabia, I guess, and UAE. So these are the new members which have been added to BRICS, and this is called BRICS plus new. Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia, Saudi Arabia, and UAE. I hope this is clear. Just keep on revising this thing. I'll come back again on this point. I'll just have a cursory glance on this particular notes. BRICS, again, 11 countries are there. First, Brazil, Russia, India, China, South Africa. This one is Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and UAE, what we have learned earlier. Indonesia added in 2025. Nice. We have earlier studied about this. New Development Bank is a part of, it has been recommended by BRICS only. BRICS contingent agreement is seen by New Development Bank, and BRICS pay has been governed by New Development Bank. It is being taken care of by New Development Bank. Sorry, New Development Bank. Now, New Development Bank proposed at the fourth summit. This summit was held in New Delhi. In that, we have proposed about New Development Bank. It was the fourth summit. It held in 2012 and it was held in New Delhi. But it got into functional in sixth summit. It was held in Fortaleza, Brazil. It has already been asked in our prelims. You can see the PYQs of this part. Now, about New Development Bank, first thing is headquarter kahan hai? It's in Shanghai, China. Regional offices bhi open ho gaye. The first regional office was in Johannesburg. It was in South Africa in 2016. Second, Sao Paulo in Brazil. Also, we are having a regional office in Ahmedabad in India and Moscow. Russia में मॉस्को में भी है, and in India it is in Ahmedabad. The second point is can support both private and public projects. So not just limited to the public project, also it can support private projects. Now NDB के member countries देख लेते हैं. First, Brazil, Russia, India, China, South Africa. ये तो हो गए हमारे ब्रिक्स वाले. Now Bangladesh, UAE, Uruguay, and
And the last one is Egypt, Algeria, Colombia, Ethiopia, and Uzbekistan. I hope this is clear. You can take a screenshot of this part. And let me come again to this point. BRICS plus new में कौन है? Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia, Saudi Arabia, and UAE. I hope this is clear. Now we'll be seeing about World Health Organization. Let's have a quick look on BRICS as it is very important. So we'll be just looking the key pointer. 17th BRICS Summit. It was held in Brazil. 18th will be held in India. Indonesia joined BRICS. And again, NDB को strong करना है. We are going to do trade settlement in national currencies. ठीक है. I guess everything is common here, and you can just go and have a read on this. And BRICS 11 countries. Indonesia is in 2025. It got added. New Development Bank is a part of, not a part, but has been decided by BRICS. ठीक है. And again, it was came into force during the sixth summit it held in Fortaleza, Brazil. It already was asked in our prelims earlier. ठीक है. NDB के members एक बार check कर लेंगे. Nice. And now this one again. कौन से countries हैं? Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia, Saudi Arabia, and UAE. So we are going to start with World Health Organization. First thing, why this particular organization was in news? First thing is US President Donald Trump signed an executive order withdrawing the US from World Health Organization. Let's see about World Health Organization, some facts, some key terms. It is a specialized agency of United Nations responsible for international public health, founded in 1948 एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया. की फंक्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग, ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस को मेजर करते हैं, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू कंट्रीज, coordinates international response to pandemic and health emergencies, monitor health trends and conducts disease surveillance, very basic concepts, promotes research on vaccine, medicine and public health strategies, supports universal health coverage and access to essential medicines. See, these terms are very common. You just need to revise them. Just have a one time read on these particular points. ठीक है. Now governance and organization देख लेते हैं. It is important. First thing, a body is there, World Health Assembly. One first body, World Health Assembly. It is the highest decision making body of WHO. Highest decision making of WHO. It's World Health Assembly. All 194 member states are represented. It meets annually to set policies, approve budgets, and appoint Director General. Appoint Director General. Who appoints Director General of WHO? It is done by World Health Assembly. Now, the second body is Executive Board, composed of 34 technically qualified members elected for 3-year terms. ठीक है. It implements decision of World Health Assembly and gives advice on health policy and emergencies. ठीक है. World Health Assembly हम लोगों ने देख लिया, Executive Board देख लिया. Now the third point is Director General, the Chief Executive Officer of WHO appointed by World Health Assembly. यहाँ पे था ना, on the recommendation of Executive Board. ठीक है. The thing is कि the Director General, it is being recommended or it is being appointed by World Health Assembly, but it is on the recommendation of Executive Board. ठीक है. Director General, the Chief Executive Officer of WHO होते हैं, appointed by World Health Assembly but recommended by Executive Board. I guess this is clear. Secretariat देख लेते हैं. It consists of Director General and technical and administrative staff at the headquarters in Geneva. 6 regional officers are there. This is very common and you can just have a look on this particular point. Now, funding of WHO देख लेते हैं, जिसके लिए this particular organization was in news. First thing, WHO gets its funding from 2 major sources. First is assessed contribution and the second one is voluntary contribution. Assessed contribution क्या होता है? Are a percentage of countries' gross domestic product (GDP). The percentage is agreed by United Nations General Assembly. ठीक है. Assessed contribution are a percentage of countries का GDP का कोई एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है एंड दैट इज असेस्ड कंट्रीब्यूशन. ठीक है. एंड दिस इज बीइंग एग्रीड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. They actually come at a particular point, and apart from that, we are getting a percentage of country's GDP, and it is called assessed contribution. Member state approve them every 2 years at the World Health Assembly. They cover less than 20% of total budget. It is less than 20%. Now, voluntary contribution, largely from member state as well as from other United Nations organization. It is not just from member states, it is from other United Nations organization, intergovernmental bodies,
philanthropic foundation, the private sector, and other sources. So it is voluntary. Can be done by other sources also. The United Nations is currently the WHO's biggest contributor, making up to 15%. Total 15% contribution is done by WHO. So coming out of US from this particular organization is a very big deal. So this, for this reason only, this particular organization was in news. Now we'll be seeing UNCEBD. It is important. Let's see how it is. Context पहले देख लेते हैं. India joins the United Nation Committee of Expert on Big Data, Data Science or for Official Statistics. It is called UNCEBD. ठीक है, एक बार फुल फॉर्म पढ़ लो. यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन डेटा, बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. अबाउट यूएनसीईबीडी, सीईबीडी देख लेते हैं. It is a United Nations specialized agency that was established to develop global statistical system via the use of big data and data science. ठीक है, it was established in 2014, so it is a recent organization. You need to know about that, and that too, it is a specialized agency of United Nations. ठीक है, under the aegis of United Nations Statistical Commission UNSC के अंदर में इनको फॉर्मेशन हुआ था. members, it has a 31 member state including India and 16 international organization. So the context was India joins the United Nations Committee of Expert on Big Data, Data Science for Official Statistics. So now we are going to study about BIMSTEC Youth Summit. As mentioned earlier, we have seen the topic of BIMSTEC earlier also, and in that I have told that BIMSTEC Youth Summit has been happened in Gandhinagar. So again, context kya hai? Union Minister for Youth Affairs and Sports officially inaugurated the first BIMSTEC Youth Summit in Gandhinagar, Gujarat, 7th to 11th Feb 2025. About BIMSTEC Youth Summit देख लेते हैं. First thing, organized by Ministry of Youth, Ministry of External Affairs, Confederation of Indian Industry, Young Indians. ठीक है, नॉर्मल थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज. ठीक है, इंगेज ऑन रीजनल कॉपरेशन. की फीचर्स देख लेते हैं. लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रीजनल स्टार्टअप नेटवर्क, youth policy and governance, again policy decision and all, culture and heritage exchange, mutual cooperation. So this is the positive statement, this is the futuristic statement, this is the broad statement. So just have a cursory look, just you can read one time and you can easily solve. So you need to remember, it happened for the first time, it happened in Gandhinagar, BIMSTEC Youth Summit. Okay, now we'll be seeing about ECOWAS. It is important, so I've highlighted this. First thing, let's see the context. The West African, यहाँ पे ये याद रखना है, it is West African. The West African nation of Niger, Mali, Burkina Faso have officially withdrawn from Economic Community of West African State. It is called ECOWAS. So they have withdrawn from this particular organization, and they are Niger, Mali, and Burkina Faso. About ECOWAS, देख लेते हैं. First thing, established in 1975 by 15 West African countries. यहाँ पे आपको West African country के map मिल जाएंगे. You can just go and have a look on that. ठीक है. It has been established by Treaty of Lagos. अगेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट. हेडक्वार्टर कहाँ है? अबूजा, नाइजीरिया. ठीक है, अब नाइजीरिया के बारे में देखते हैं. इट इज नाइजीरिया. अबव वी आर हैविंग नाइगर. इट इज बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया. अबव वी आर हैविंग बुर्किना फासो, माली. ठीक है, फाइन. ECOWAS comprises 12 West African countries after the withdrawal. Now, there are some key pointers which we are going to cover here itself. And first, we are covering this part first. Its member country include Benin, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo. ठीक है. It aims to promote, किस लिए बना हुआ है? Cooperation and integration of for an economic union in West Africa, improving living standard, ensuring economic stability, strengthening member relations and contributing to Africa's development. Let's see some basic points. First thing about ECOWAS, established in 1975, Treaty of Lagos, we have already seen, for economic integration. ये इनका aim था. When you want to read about ECOWAS, you just need to read these points and it will be done. The second point is Niger, Burkina Faso, and Mali. They are officially withdrawn from this particular organization because there had happened military coup. That was the reason they got out, and they actually formed alliance of Sahel states. ठीक है, you need to remember this. Niger, Burkina Faso, and Mali withdrawn from this particular ECOWAS organization, and they have formed alliance of Sahel state. This become important. ठीक है, so if they are asking which country came out from this particular organization, they are Niger, Burkina Faso, and Mali, and what they formed alliance of Sahel state. ठीक है, again,
Mali got suspended, military coup again that happened in Guinea also. Okay. Now we have seen about UNCEBD earlier here. For this, we are having a particular information AI for environment and sustainability ARIS hub. This is the key term. It has been associated with UNCEBD. That is the point I have mentioned over here. Okay, I guess this is clear. We are going to have about Asian. Also, yes, Asian will be reading there. I'll be talking about Asian also, but let's cover it itself here itself. ठीक है. Asian में कितने states total कितने members हैं? तो 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर देयर. जकार्ता कैपिटल है. इनका विजन क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. ठीक है. इट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. फाइन. Established on 8 August, Asian Day कहा जाता है. Developed in 1967 from Bangkok Declaration. Developed in 1967 after Bangkok Declaration. Forum of Asians. कौन कौन से forum important forums है? East Asia Summit. It is for security. ADMM, we are going to see about this in our upcoming topics. It is for defense ministerial meetings. It is 10 plus 8. 10 are the members of Asian, and 8 we are having other members which are there for our Asian membership. Okay. They are the dialogue partners actually. Dialogue partners कौन कौन से हो गए? India, Japan, New Zealand, Korea, Russia, USA, China and Australia. ठीक है. I guess this is clear. Fine. We'll be seeing about first OPEC, and then we'll be seeing about International Organization of Aids to Marine Navigation, and then we are having a topic of again Indian Ocean Conference, and then we are having a topic of Asian Defense Ministerial meeting. Okay. So our next topic is OPEC plus. Let's see the context over here. Recently, Brazil government approved the country's entry into OPEC plus. So this becomes important for us. We'll be seeing OPEC also. We'll be seeing the OPEC plus also. First, let's see about OPEC plus. What it is? It's a coalition of OPEC members and non-OPEC oil-producing nations that work together to manage oil production and stabilize global oil prices. ठीक है. पहले क्या हो जाता है? OPEC member and non-OPEC oil-producing member states. ठीक है. Now, the alliance was formed in 2016 in response to increasing oil production in United States, particularly from shale oil, which led to falling of oil prices. For this reason only, they have formed an alliance and they have made OPEC plus. ठीक है. It is of OPEC members and non-OPEC oil producing nations. I guess this is clear. Now, coming to the OPEC plus, who are the members of this particular formation? First, it comprises of 12 OPEC nations. तो हैं ही. Apart from that, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, Mexico, Malaysia, South Sudan, Sudan, and Oman. These are the non-OPEC oil producing nation plus 12 OPEC countries. I guess this is clear. Now, OPEC के बारे में जान लेते हैं. It is a permanent intergovernmental organization of oil exporting countries. It was established in 1960 by the first five founding members. They were Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. I guess this is clear. OPEC, Intergovernmental Organization of Oil Exporting Countries, established in 1960, and they are like five founding members were there: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Headquarter का है Vienna, Australia. Now this is actually very confusing. When Vienna, Australia, just to make it balanced, just to make it very neutral, the headquarter has been shifted to Vienna, Austria. ठीक है, it's Austria, Vienna, Austria. ठीक है. Now Angola withdraw its membership effective from 1st January 2024. Again, it's become very important. 2 points that are important here is the headquarters is in Vienna, Austria, and second is Angola withdraw its membership effective from 1st Jan 2024. Member countries कौन से हैं? 12 member countries: Algeria, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela. I guess this is clear. You have learned about OPEC also, and you have learned about OPEC plus also. Let's see some important terms and important point which can be asked in the prelims examination. First thing for OPEC plus news: Brazil entry into OPEC plus. OPEC plus means OPEC member and non-OPEC producing nations. I guess that's clear. This has been found in 2016. OPEC plus nation कौन कौन से हैं? 12 OPEC nations तो हैं.
plus Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, Mexico, Malaysia, South Sudan, Sudan, and Oman. Okay, OPEC. It is a permanent intergovernmental organization established in 1960. Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela पांच फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने ये फॉर्म किया था. The headquarters is in Vienna, Austria. This point is very important. Apart from that, in 2024, Angola withdrew its membership from this particular organization, that is OPEC, and now the 12 members are Algeria, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela. I hope this is clear. Now, our next topic is International Organization of Aids to Marine Navigation. See, for navigation per se, for ocean per se, for security and marine issues, we have seen questions coming in our particular UPSC prelims examination. So let's deal it very nicely. What is the context behind this? India elected to vice presidency of International Organization of Aids to Marine Navigation in Singapore. ठीक है, अब ये नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है. Do not worry on that part. We need to know it's the International Organization of Aids to Marine Navigation. Aids दे रहे हैं किसको? Marine Navigation को. Let's see and why it was in news. Singapore hosted the first General Assembly of the International Organization for Marine Aids to Navigation. I guess it's clear. This is IALA inaugural General Assembly since becoming of an intergovernmental organization. See, earlier it was a NGO, then it became an intergovernmental organization, and then we are having the first General Assembly. It happened in Singapore, and again India elected to the vice presidency of this particular organization. So this is the linkage. From an NGO became an international organization, held its first General Assembly in Singapore, and India elected to the vice presidency. I guess this is clear. Now, about IALA, established in 1957 as an NGO, transitioned into an intergovernmental organization to enhance its role in shaping international standards and best practices for safe and efficient navigation. I guess this is clear. Headquartered kahan hai? It's in France. The new IGO status, IGO means Intergovernmental Organization status, amplifies its mandate to harmonize global maritime navigation system, promote maritime safety initiatives, and collaborate with member states, international organization, and industry stakeholder. Still very common. Now, India will host IALA Conference and General Assembly in September 2027. Now, this is very important. We have already dealt that in 2026 we will be hosting 18th BRICS Summit, and again we will be hosting 2027 IALA Conference and General Assembly. We have already hosted our BRICS Youth Summit. It has happened in Gandhinagar. Let's keep revising topic which we have already read. I guess this is clear. Now, we'll be seeing other topic. It is Indian Ocean Conference. So the context is India, along with Singapore and Oman, is hosting the 8th Indian Ocean Conference in Muscat, where foreign ministers from the 30 nations are discussing regional security and economic cooperation. Now, 8th Indian Ocean Conference. The 8th Indian Ocean Conference was organized by Indian Foundation in association with Ministry of Foreign Affairs of Oman on February 16 to 17. Normal. ठीक है. The theme for this year of conference is Voyages to New Horizons of Maritime Partnership. ठीक है. Nice. I guess it's clear. You can read this particular point. It is very common. As part of their meeting, Jaishankar and uh, Al-Busaidi launched a logo commemorating 70 years of diplomatic relation between India and Oman. I guess if I spelled this particular word wrong, I'm so sorry for that. I'll try to repronounce it again. It's Al-Busaidi, and India and Oman again made a logo like to commemorate 70 years of diplomatic relation with between the two countries. I guess this is clear. Additionally, the two leaders unveiled the book Mandavi to Muscat. I guess again this point are very much clear and very much normal. You can just have a look on that. Brought out by the Indian Embassy in Muscat, the book highlights a deep historical connection between India diaspora and Oman, underscoring century-old ties. Now about the conference, the Indian Ocean Conference was started by India Foundation. So we need to remember that it is not a intergovernmental organization. It has been started by India Foundation in 2016 at Singapore with participation of from 30 countries. It is an annual summit bringing together policymakers, experts from the Indian Ocean region, and discuss geopolitical politics and economic and security challenges. I guess this thing is normal. You can just have a look over that. And our Sagar approach
actually have a parallel with this particular Indian Ocean Conference. Okay. Now, I guess this is clear. What was the important topic over here is we are observing 70 years of diplomatic relation between India and Oman, Mandavi to Muscat. Like the book is there, and again, Indian Ocean Conference started by India Foundation at Singapore. So this much is sufficient. You already know about Saga Initiative. Now, we'll be talking about 12th Asian Defense Minister Meeting Plus. Okay? See, why I'm talking about these things, the questions are not going to come directly from this particular topic, but they can come from a broader dimension. They can actually have some of the statement linked with this particular topic. So, it's our responsibility and duty to just go through this thing in a very comprehensive manner so that we will not be losing out our marks. ठीक है, एक बार कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. रक्षा मंत्री अटेंडेड द 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इन कोलालमपुर. ठीक है, अब एक बार न्यूज और डेप्थ में देखते हैं. Attended the 12th Asian Defense Minister Plus Kuala Lumpur. Already we have seen. He addressed the forum on reflection on 15 year of charting the ways forward. ठीक है, अब let's have a static look on ADMM. It is the highest defense consultative and cooperative mechanism in Asian. ठीक है, ADM Plus is a platform for Asian nation member states. These are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Timor-Leste and Vietnam. And its 8 dialogue partner. It is They are India, US, China, Russia, Japan, South Korea, Australia, New Zealand. I hope this is clear. See, what is there? We are having a conference of defense ministers in which we are having Asian members plus 8 ऑब्जर्वर नेशंस. ठीक है, इनके मेंबर्स तो हैं ही एशियन वाले प्लस 8 ऑब्जर्वर नेशन. सो दे आर ऑब्जर्वर नेशन एंड दैट टू 8 डायलॉग पार्टनर्स. दे आर इंडिया है, इंडिया के साथ यूएस भी है, यूएस चाइना भी है, रशिया भी है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो दिस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज generally do not have that much of resemblance for per se, but India coming with US, coming with China, coming with Russia, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand. I guess it's clear. India became the dialogue partner of ASEAN in 1992, and the inaugural Adam Plus was conveyed in Hanoi, Vietnam on 12th October. I guess this is clear for you. Now, for this is the mapping of Asian countries. First, we'll be starting with Myanmar. We are having Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam. Thailand do not touch China. You need to remember that. Cambodia do not touch China. Okay. Coming here, we are having Malaysia. We have Brunei. We are having Singapore over here. This is Indonesia. This is Timor-Leste. I hope this is clear for you. Okay. Myanmar and Thailand also part of BIMSTEC, so please do not forget. I have already talked about this. UNCEBD, AI for Environment and Sustainability. It is Aries Hub. EcoWAS we have discussed. Now, Indian Ocean Rim Association. This is the topic, and for this we are having this particular news here, and we have taken a short notes for this here. Okay, let's complete this first. Now, since 2017, Adam Plus is held annually to bolster defense cooperation among the ASEAN and Plus countries. Under the construct of Adam Plus, India is the co-chair of expert working group on counterterrorism with Malaysia. Very normal topic, you can just have a read of this. Okay. What was very important over here is, first thing, we are having Asian countries plus 8 dialogue partner. In this 8 dialogue partners, we have countries like India, US, China, Russia, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand. For this, there's a map of Asian countries. You can just have a cursory glance on this. Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapore. This is Indonesia and Timor-Leste. I guess this is clear. Now, we'll be seeing 24th Indian Ocean Rim Association meeting of Council of Ministers. See, we have seen Indian Ocean Conference. It was founded by India Foundation. Now we'll be seeing about Indian Ocean Rim Association. Let's see the context over here. The 24th Indian Ocean Rim Association meeting of Council of Ministers hosted by IORA Chair Sri Lanka was held virtually. I guess this is here.
नाउ मोर ऑन द न्यूज। थीम क्या है इसका? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। इंडिया इज करेंटली द वाइस चेयर ऑफ आईओआरए एंड पार्ट ऑफ द ट्राइका। ठीक है। इंडिया विल अज्यूम द चेयरशिप ऑफ आईओआरए फॉर 2025 and 2027. Now this becomes important for us, and this is the reason we have taken this topic. India will assume the chairship of IORA for 2025 to 2027. The 24th Council of Ministers meeting saw the participation of ministers and high-level delegates from 23 IORA member states and IORA 12 dialogue partners. So we are having 23 member states for this particular organization. During the meeting, the member states held discussion on strengthening IORA, matters of regional interest, and adopted what? Colombo Commute. Okay. Now, this is important. You need to remember about this communique. Colombo communique. This was for IORA, Indian Ocean Rim Association. I guess it's clear. Okay. So do not get confused with this particular thing. Now, we'll be seeing about IORA. It's an intergovernmental organization. Just like, do not get confused with Indian Ocean Conference. It was India Foundation has made this thing, but Indian Ocean Rim Association, it's an intergovernmental organization established in 1997 to encourage regional cooperation, sustainable development within the Indian Ocean region. ठीक है. Secretariat कहाँ है? It's in Mauritius. Total member 12 members and 12 dialogue partners. IORA Council of Ministers, highest decision making body होते हैं इनमें. ट्रॉइका क्या है? An institutional mechanism consisting of current chair, vice chair, which is the future chair, and the past chair of IORA. Right now, we are having vice chair as India. So, in future, in 2025 and 2027, we will be hosting chairship of IORA. I guess this is clear. For this, I have taken a note of this. Intergovernmental organization started in 1997. Economic cooperation, maritime security. The basic objective is this. The third point is 23 members are there. It is linked with Saga initiative, inspired by Nelson Mandela's vision. ठीक है. Headquarter Abbey in Mauritius. Blue economy पे focus करता है. Now, this is the map of IORA. It's an intergovernmental organization. So just we'll have a look on this particular map. We'll start from India. We are having Iran here. We are having UAE, Oman, Yemen, Somalia, Kenya, Tanzania. We are having Mozambique here. We are having Comoros, Madagascar, South Africa, Seychelles, Mauritius, France, Maldives, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Australia. I'll just repeat it once again. We'll start from India. We're having Iran. We're having Oman, UAE, Yemen, Somalia, Kenya, Tanzania. We are having Seychelles. We are having this side Comoros. We are having Mozambique. We are having South Africa. We are having Madagascar, Mauritius, France. France because we are having Reunion Island. Just remember this. Here we are having Maldives, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. I guess this is clear. Fine. And here we are having Australia. Okay. So we'll be seeing the next topic, which is this one, squad group. The context is the Philippines is working to expand its informal group, the Squad, by including India and South Korea to strengthen maritime security in Indo-Pacific and counter China's influence in South China Sea. To counter China's influence in South China Sea, Philippines has made a informal group. That name is Squad. For that, it is trying to include India and South Korea. About the Squad grouping, the Squad is an informal security coalition comprising the United States, Japan, Australia, and Philippines. अभी तक क्या है? USA, Japan, Australia, and Philippines. The group conducts joint maritime operations, ठीक है, and exercises within Philippines exclusive economic zone in the South China Sea, just to like tackle China's over influence in the South China Sea. Philippines has made a informal group and it is trying to include India and South Korea also. ठीक है. These activities are aimed at strengthening defense capabilities and enhancing regional stability amid growing tension in the region due to China's assertive policies. I hope this is clear. Fine. So we have talked about Squad Group. We have talked about Indian Ocean Rim Association. It's an intergovernmental organization, 23 members. We are having 23 members, and India is going to host 2025 or 2027 में India is going to host this thing, and it is very important. Colombo Commune, ठीक है.
This was the topic, the important points from here. Now, let's keep revising this thing. Asian Defense Minister meeting. What are the key important points? First thing is the 12th meeting was there, and it is ASEAN plus 8 dialogue partner. Who are the dialogue partner? Let's have a look on that. First one is again India, USA, China, Russia, Japan, South Korea, Australia, New Zealand. So just remember this point. Now coming back to here, fine, this is normal. For this particular topic, so we are revising right now. We are having Indian Ocean Conference. First thing क्या याद आता है आपको? It's not an intergovernmental organization. It has been founded by India Foundation. ठीक है? And now, uh, like this point is important. 70 years of diplomatic relation between India and Oman. I guess this much is all okay for this. Okay. We'll be seeing the above topic. It's International Organization of Aids to Marine Navigation. It started as an NGO. It became an intergovernment organization. It held its first General Assembly. It happened in Singapore, and in that only India was chosen as the vice presidency. I guess it's clear. And India is going to host this conference and General Assembly in September 2027. So this has become important. Now coming to OPEC Plus. OPEC Plus is an organization of OPEC member plus non-OPEC oil producing nation. I guess it's clear. This OPEC Plus got formed in 2016. ठीक है. Let's see about OPEC. Now it's a permanent intergovernment organization. Again 1960 में start हुआ था ये. The headquarters is in Vienna, Austria. ठीक है. Angola withdrew it from this, and 12 members कौन-कौन है? Algeria, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, and you can read the rest of the nations. ठीक है. This was important points from this particular news. Let's see the important point from ECOWAS. ECOWAS से 3 countries बाहर आ गई, that are Niger, Mali, and Burkina Faso. This happened due to the military coup which happened there. ECOWAS was for economic development and like the development of this particular Western nations, Western African nations. Okay. Now for ECOWAS, I have made 3 points. It got established in 1975 by Treaty of Lagos. Economic integration के लिए बनाया गया था. Niger, Burkina Faso, and Mali withdraw from it due to like military coup, and they have formed a separate alliance. This is called Alliance of Sahel States. I guess this is clear. Fine. Now we'll be having BRICS BIMSTEC Youth Summit. Only one thing is important. It happened in Gandhinagar, Gujarat. Just have a look on that part. Now, UNCEBD, India joins the United Nations Expert Group on Big Data and Data Science, and this was under the aegis of UNCEBD. I guess it is clear. Now, we'll be seeing about World Health Organization. It was in news because US has withdrawn from this, and why it is important? Because it's a specialized agency of United Nations. It was founded in 1948. The location and headquarters is in Geneva, Switzerland. These are the common points. Now the governance देख लेते हैं. World Health Assembly is the highest decision making body. It is responsible to elect director general, and it is done by the recommendation of executive body. Executive board. I hope this is clear. And funding कैसे होता है WHO का? It is happening by 2 way. First is assessed contribution, and the second one is voluntary contribution. Assessed contribution क्या हो जाता है? Like a percentage of country's GDP that can, and that is agreed by United Nations General Assembly. Voluntary contribution done by member state or other United Nations organization or any philanthropic foundation or private sector. I hope this is clear. Now, coming back to our BRICS topic. What are the key points which are important? 17th BRICS summit, like it happened in Brazil, and the motive was strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. Basic important point is Indonesia officially joined BRICS. Now, India is going to chairship BRICS 18th BRICS summit in 2026. ठीक है, just keep revising this thing. The focus was on national currencies and reduced dependency on US dollar in terms of energy and commodity trades. ठीक है, strengthening of new development bank. We'll be seeing about this particular static point on new development bank also. ठीक है, I guess this is clear. This is clear. This one is clear. Now, BRICS, 11 countries. Who are the 11 countries? Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Indonesia got added in 2025. New Development Bank got linked with BRICS. BRICS Contingent Reserve Agreement Arrangement
done by New Development Bank and BRICS Pay. New Development Bank के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. It got proposed in fourth summit, which was held in New Delhi, and finally got inked on sixth summit, which was held in Fortaleza, Brazil. I guess it's clear. The headquarters is Shanghai. Regional offices भी हैं, and one regional office is in Ahmedabad. Can support both private and public projects. I hope this is clear. Now, WTO and SDT clause. Why it is important? Because China has said that it will retain its developing country status, but it will forego requesting special differential treatment. So we'll be having 2 points which is important. First is WTO and second is SDT. For SDT, it is special differential treatment. For developing country, we are having some relaxation in terms of longer transition period, flexibility in tariff or market access commitments, preferential treatment in trade rules. I guess it's clear. How it is decided? कैसा decide करते हैं? There is no fixed WTO legal definition of developing country, and it allows for self-declaration. You can read this. This is for SDT, and these are some of the current challenges and reform proposed. For WTO, we are observing 30 years of anniversary. 1st Jan 2025, formed under the Marrakesh Agreement after the Uruguay round of GATT. It got established in 1995. Geneva में इसका headquarter है. TRIMS for prohibits measures that discriminate against foreign products. TRIPS is for intellectual property rights. Agreement on agriculture. Amber box, blue box, green box. I have given a task. Just go and revise this particular topic. Sanitary and phytosanitary measures, again we work on that particular thing. Under WTO, highest decision making body क्या होता है? Ministerial conference. I guess I have revised this also, and our main focus was we have studied it from here. So BIMSTEC के बारे में again just have a look on that. Prime Minister visited and 6th BIMSTEC summit में our Prime Minister participated. Fine. And Bangkok Vision 2030 document was presented over there, and in terms of Indian Prime Minister, what we have proposed: BIMSTEC Chamber of Commerce, BIMSTEC Business Summit every year, BIMSTEC Center of Excellence for Disaster Management in India to cooperate in disaster management and relief. This is important. Now, fourth joint exercise between BIMSTEC disaster management authorities to be held in India. Security holding first meeting of Home Minister mechanism in India. Space, again, you know about this. Capacity building, Bodhi, human resource development, 300 youths को training दिया जाएगा, like on an every year basis. For energy per se, BIMSTEC Energy Center, it has been started in Bengaluru. ठीक है. Youth engagement BIMSTEC Young Leaders Summit to be held this year. BIMSTEC Young Leader Summit. Already we have seen that it has been done in Gandhinagar. BIMSTEC Hackathon and Traditional Music Festival, everything is there. Establishment of Sustainable Maritime Transport Center in India to work to enhance coordination, capacity building, research, innovation, and maritime policy. This one is important. Now, for BIMSTEC, we are having Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand. 1, 2, just a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 countries which are dependent on Bay of Bengal. These are Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. This form BIMSTEC organization. The headquarter कहाँ है? ढाका में. It got opened in 2014. Leadership कैसे rotate होता है? Alphabetical wise. It gets rotated. First summit it held in 2004. MILEX is first ever military training exercise, alternative to SARC. Sixth meeting held in 2025. Bodhi, the program is for human resource development. Bangkok Vision Document 2030. BIMSTEC Youth Summit, it held in Gandhinagar. I hope this is clear. 7 countries I've already done. Okay, so just keep revising this thing, and again we'll be talking about this particular topic which we have left. Which one? Okay, we'll be starting with 11th BRICS Labor and Employment Minister meeting. Okay. So now we'll see a next topic. It's 11th BRICS Labor and Employment Ministers meeting, which happened under the presidency of Brazil, in which our Union Minister of State for Labor and Employment, she participated in this particular meeting. And what we have discussed on a multi-fold level. First is inclusive AI policy, worker protection, climate transition, and South-South cooperation. Apart from that, we are into like something which can help
strengthening the cooperation of global south for more inclusive and sustainable governance. I guess this is a very broad topic. You can just have a read on this. You do not have some particular facts which can directly come from this topic. You just need to know that this particular meeting held and under which presidency, it was under Brazil presidency. Okay. So for the next topic is UN peacekeeping ministerial meeting. This is very important. For this, I have added a particular diagram. It is directly taken from PIB and some quick notes for you to remember. Okay, let's see. Context क्या है? United Nations Peacekeeping Ministerial meeting 2025 concluded recently in Berlin, Germany. ठीक है, पता चल गया. First, this is placed in news. So place in news in a sense, it is in this particular like country. This meeting was held. ठीक है. Now the objective and outcome देख लेते हैं. First, held from 13th to 14th May. चलो ये this is not going to come in the examination. Now, UN Peacekeeping Ministerial served as the highest level political forum to discuss the future of peacekeeping, ठीक है, and for the member state, normal सा है. Again, the second point, it provided a platform for delegations to announce substantial pledges in support of choosing capability gaps and adapting peace operations, ठीक है. So this particular meeting actually helps to adapt new things, adapt for the new challenges, do some new research and all that, and for future of peacekeeping they are going to discuss on that part. It is simple. Now the third point is the UN peacekeeping ministerial 2025 contributed to increase safety. This is the focal point. Okay, and India is very much again vocal for this particular thing, increase safety and security for the peacekeepers deployed. जो भी peacekeeper बाहर deployed है उनके भी safety के लिए we need to think about that. ठीक है, increase safety and security for the peacekeeper deployed and fostering overall mission effectiveness. ठीक है. Now, at the ministerial, what India has done, we need to know particularly about that. Okay, India pledged one quick reaction force. So now this is a term which can come directly into your prelims. Okay, so quick reaction force. It's quick reaction force company. It's related to UN peacekeeping. Now this becomes a very important terms which can directly come like this. Like, can you tell me quick reaction force company is related to which particular organization? So you must be knowing it is related to UN peacekeeping. I guess this is clear. Now, apart from that, one woman-led police unit and a SWAT police unit and peacekeeping training, capacity building and partnership. So this one is very important, quick reaction force company. So I would want you to take a blank page and just keep noting 1, 2, 3, 4 like this topics. Okay, very important terms like this one, 1, 2, 3, 4, and in last we'll revise everything. We'll be having a short notes also in this particular thing, and you can just revise it clearly. Okay. Now the quick reaction force company, it's for United Nations peacekeeping forces. I guess this is clear. Again, peacekeeping ministerial co-chairs who were in this, the co-chair of the presidency, the co-chair of the peacekeeping ministerial process were Bangladesh, Canada, Ethiopia, and all that. So you just go through this, but I don't think that this much is very much important for under this particular topic. Okay. About United Nations peacekeeping, एक बार ये देख लेते हैं. First thing, it began in 1948, ठीक है, with the establishment of United Nations Truce Supervision Organization, which is UNTSO, ठीक है, in the Middle East to monitor the ceasefires. ठीक है, तो सीज फायर, मिडिल ईस्ट में सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए वी बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट बिगैन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग बिगैन इन 1948. आई गेस दिस इज क्लियर. ठीक है. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड्स मैंडेट्स टू missions by adopting a resolution. I guess this is clear again. Budget and resources are subject to General Assembly approval. So if it comes that budget and resources are subject to approval by UNSC, no, it's by General Assembly. This point is very important. Now, the first point which was important is quick reaction force company. The second point which is important again is General Assembly approves the budget and resources for UN peacekeeping. Okay? As per the UNPK data, India is currently the fourth largest troop contributing nation with around 5,300 personnel after Nepal, Rwanda, and Bangladesh. Okay? The first, see, these numbers do change on a rapid basis, so just be updated. But right now, in this particular statement, India is currently the fourth largest troop contributing nation. Okay? The first ever UNPK mission, United Nations Truce Supervision Organization, was established to monitor armistice agreement. Now, this one is again important. Now, I'll write with you armistice agreement. Okay, it is related to UN peacekeeping. Okay, the first UN peacekeeping, United Nations Truce Supervision Organization, was established to monitor
the armistice agreement between Israel and Arab neighbors. ठीक है, we got to know that ये जो start हुआ था यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, its aim was to monitor the ceasefire. ठीक है, तो under this we are having armistice agreement. It was between Israel and Arab nations. See, these both are in news. This is UNPK, again it is in news. So why like what you don't you think that this particular agreement will not come in the examination? This may come na. ठीक है, तो you need to know armistice agreement linked with UNPK, linked with Israel, linked with Arab nation, and quick reaction force company again linked with UN peacekeeping. I guess this is clear, and this is again important. General Assembly approves the budget and resource. Okay, so the last point is this year the United Nations celebrates the 70th anniversary of UN peacekeeping. This becomes very important. 70th anniversary of UN peacekeeping. I guess it's clear. Now we'll go here with some pointers. First thing, UN peacekeeper, also known as blue helmets or blue berets. Okay, need to remember this thing. It is already coming in PCSS, so just keep a small look on this particular point, known as blue helmets or blue berets. Okay, UN peacekeepers. In 2023, India received the highest peacekeeping honor, and this facts and data I have collected from UN peacekeeping website. ठीक है, India received highest peacekeeping honor. This is called Dag Hammer's Gold Medal. ठीक है, whenever this term comes, you must be knowing that it is linked to UN peacekeeping. ठीक है, समझ में आ गया? I'll tell you once again. We have read armistice agreement. We have read quick response company something. We have read General Assembly approves the budget. I guess this much is clear. This particular armistice agreement was between Israel and Arab nations. ठीक है. Again, India receives the highest peacekeeping honor, which is known as Dag Hammer's Gold Medal. ठीक है. Again, there is some exception, and UPSC particularly frame a question from particular exception only, because general facts तो हर जगह है ना. From there question अगर बनता भी है तो it will be solved by multiple students. But exception याद रखना इस मुश्किल होता है, तो we'll be focusing more on the exceptions only. In some cases, the UN peacekeeping are authorized to use forces to protect civilian and maintain security where the host state is unable to do so. अब समझो कि एक particular host state में we are having UN peacekeepers and it is not able to maintain the civilian and security. So in that case, in some cases, UN peacekeepers are authorized to use forces. Now again, Brahimi report, sorry, 2000 like says about the reforms in UN peacekeeping. ठीक है, so again this becomes important. Brahimi reports 2000 reforms in US peacekeeping. ठीक है, this report is linked with UN peacekeeping का reforms. So 2 points are important, this one and this one. Finance collective responsibility of UN member state. ठीक है, अब आते हैं components of UN peacekeeping. See, this is a normal diagram, but what questions can be framed from here? They will say components of UN peacekeeping क्या क्या है? Protecting civilians, तो ये broad topic है, yes, it will be correct. Disarmament, demobilization and reintegration, again this is positive and this is correct. Now when they will say this election support, we'll see it is the mandate of state. So why they are linking with this thing? No, again this is, just a minute, let me rub this. सो कंपोनेंट ऑफ यूएन पीस कीपिंग के अंदर वी आर हैविंग इलेक्शन सपोर्ट में भी काम करते हैं यूएन पीस कीपर्स. ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेस. आई गेस इट्स क्लियर. दिस वन वाज द एक्सेप्शन, यू नीड टू नो अबाउट दिस. In some cases they are allowed this particular honor. Blue helmet, blue berets, Brahimi report for reforms in UN peacekeeping. I guess this one is clear. Let's revise once again. First thing, Berlin, Germany, quick reaction force company, again linked with UN peacekeepers. Now, again this one. This is very important. General Assembly dictates the budgets and resource for this particular organization. India is the fourth largest armistice agreement between Israel and Arab nation. 70th agreement of UN peacekeepers. Let's come to the next topic. It's Asian Productivity Organization. ठीक है, India assumed the chairmanship of Asian Productivity Organization at the 67th governing body meeting in Jakarta. See, whenever India is at the highest pedestal, we need to know about that particular organization and we need to have some basic detail about that. ठीक है, India assumed the chairmanship of Asian Productivity Organization. Let's see why it was in news. First thing, India has formally assumed the chairmanship of Asian Productivity Organization. पता चल गया ये चीज. Now it talks about green productivity.
ठीक है. Whenever it comes, see, it is a positive statement, it is a broad statement, it is a futuristic statement, so it is true. Now, each year over 100 Indian professionals participate in APO led capacity building. We know about this. Let's learn about some static facts about Asian Productivity Organization. It got established in 1961. The Asian Productivity Organization is a Tokyo based intergovernmental body that promotes productivity enhancement across Asia Pacific region through mutual cooperation and capacity building. See, this point is very important. In this particular point, we are having some 2 to 3 facts which can be molded around a question. Let me explain how it can be done. First thing, established in 1961. One fact very clear. The second fact is it's a Tokyo based, so the place can be changed in a particular statement that Asian Productivity Organization is part of Indonesia. No, it's wrong. It's part of Tokyo. I guess this is clear. And again, it's a, just a minute. It's an intergovernmental cooperation. Sorry, intergovernmental body. Okay. So do not get confused with NGO or something like that. It's an intergovernmental body that promotes productivity enhancement across Asia Pacific region. ठीक है. Apart from that, it is having 21 member economies. अब कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की एंड वियतनाम. See, why I have just repeated everything, the country's name, because whenever I repeat, see, let's do one exercise now. Whenever I say a particular country name, you just uh, close your eyes and just picture, just recall it in your mind on a map. Whenever I say Bangladesh, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ पे है, उसके ऊपर कौन से कंट्रीज है, बगल में कौन से वाटर बॉडीज हैं. When I say Cambodia, आपको ये पता होना चाहिए with which countries it is particularly sharing its border. चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है कंबोडिया, यू नीड टू नो. ताइवान आपको पता चल जाना चाहिए, ताइवान स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई से इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, अगेन यू नीड टू नो द मैप. आपको पता होना चाहिए लोकेशन क्या है. अगेन इन योर ब्रेन it should strike automatically. ठीक है. As one of the founding member, this is again a variable which you need to remember. India, as one of its founding members, India has played a pivotal role in shaping the organization vision and supporting its initiative. Let's revise this topic here itself so that we are not going to miss it or forget about it. First thing, context क्या है? India assumed the chairmanship of Asian Productivity Organization. ठीक है. Now, this one, green productivity, this term is important. 1961 it got established and it's a Tokyo based intergovernmental body. ठीक है. Productivity enhancement के लिए काम करते हैं in the Asia Pacific region. ठीक है. Do not miss that. And ये तो नाम में भी है ना, Asian Productivity Organization है, but it works in Asia Pacific region. ठीक है. And again, it's a 21 member economy. आप मेरे को बताना, इतना मैंने बोला अभी, do you see China's name over here? ठीक है. So whenever I am dictating something, whenever I am explaining something to you, just question yourself कि चाइना है कि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं है. So you need to know this thing. Currently comprises only 21 members economies. I guess this much is clear. Our next topic is G7 summit. It is very important. Let's see the context first. India participated as an outreach country in 51st G7 summit, which held in Kananaskis, Canada. You need to remember this particular location. It may come as in a tabular format. This particular location linked with which country? ठीक है. Kananaskis held in it is in Canada. Now, though India is not a part of G7 grouping, it has been invited for the global summit each year for the last 6 years and 12 times in total as an outreach country. ठीक है. Now, we need to know about the outcomes. It is important. Now, see, you must be knowing about G7. You must be knowing about G8 also. You must be knowing why Russia got out from this particular body, and in that process only you must keep on revising this particular topic because it is very very important in the geopolitical arena. Okay. And India is not a part of this G7 grouping. Let's see the outcome first. Kananaskis wildfire charter, it was endorsed by India, so it is very important for you to remember this particular charter. Let's see what was into this charter. It was aligns with the commitment to halt and reverse deforestation, and next one is forest and land degradation को स्टॉप करना है, फॉरेस्ट एंड लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप करना है बाय 2030 ग्लोबली. ठीक है. इट वाज आल्सो प्लेज्ड इन ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज. ठीक है. G7 critical mineral action plan, again क्या है ये? It builds on the 5-point plan for critical mineral security established under Japan's G7 presidency in 2030.
This one, it was also endorsed by India. So these 2 points becomes important. Let's see the third point. G7 condemned transnational repressions. अब इसको देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट थिंग, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन. ठीक है, ये टॉपिक है, ये टर्म है. This TNR is an aggressive form of foreign interference whereby states or their proxies attempt to intimidate, harass, harm or coerce individual or community outside their borders. ठीक है. अब अगर ये बॉर्डरिंग ये कोई कंट्री है और बाहर की कंट्री अगर फोर्स यूज करके अंदर के आदमी को लाइक हैरेस कर रही है या फिर गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम कर रही है, दैट मीन्स इट्स अ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन. एक बार पढ़ लो. TNR is an aggressive form of foreign interference whereby states or their proxies भी है, attempt to intimidate, harass, harm, coerce individual or community outside their borders. ठीक है. Now the fifth point, commit to prevent migrant smuggling. ठीक है, ये normal सा point है, prevent migrant smuggling. Let's see about G7 first. It is important. It's a group of 7 again. It's an informal forum. ठीक है, of the world most advanced economy. अब कौन कौन सी countries है ये पहले देख लेते हैं. फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस एंड कनाडा. अब इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है. फर्स्ट थिंग, एक पर्टिकुलर लोकेशन बना लो अपने पास. अगर फ्रांस में यहाँ पे बनाता हूँ तो जस्ट ऊपर वी आर हैविंग जर्मनी, हेयर वी आर हैविंग इटली. ठीक है, ध्यान से देखना फ्रांस, जर्मनी, इटली. ठीक है, यूके समवेयर हेयर. ठीक है, जापान इट्स हेयर, यूएस वी आर हैविंग हेयर एंड कनाडा वी आर हैविंग हेयर. ठीक है, सी जापान इज ओनली in the Asian part, rest other we are having in the like the western country. First Canada से चलते हैं, US पे आते हैं, then UK, France, Germany, Italy and Japan. It is like यहाँ पे क्या हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे हो गया यूएस हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान. ये एक रोड मैप से भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके, जापान, फ्रांस एंड सॉरी यूएस एंड कनाडा. ठीक है, लेट्स सी सम हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी. इट इज G7 was formed in 1975 as G6. US, UK, France, West Germany, Japan and Italy थे इसमें. In the response of 1973 में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके वजह से एक बॉडी बना G6 in 1975, जो फाइनेंशियल टर्मोइल हुआ था वहाँ पे. कनाडा ने कब ज्वाइन किया, 1976. तो आपको ये याद होना चाहिए कि कनाडा ज्वाइंड इट in the last and it made it to G7 and it joined in 1976. It was formed in 1975. It became G8 in 1997 in which we included Russia, but reverted to G7 in 2014 when Russia expulsion over the annexation of Crimea. जब रशिया ने एनेक्स किया क्रीमिया को, then उनको G8 से निकाल के like the body was again G7. G6 it started as G6 in 1975 due to 1973 oil crisis and it again became G7 when Canada joined it in 1976. I hope this is clear. Okay, let me see if I have some other value addition over here or not. So this is the map. This is some of the flow chart or diagram over here where you can get to know about G20 countries, G8 and G7. See, G8 में रशिया था, इनको हटाया गया, तो now it's G7. G7 के लास्ट मेंबर कौन थे जो ज्वाइन किए जिन्होंने, it is Canada. 1976 में it joined. Okay, so our next topic is United Nations Security Council. The context: 5 countries were elected to serve as the non-permanent members of United Nations Security Council. So this particular information is very much important for examiner to make a question out of this particular news. Okay, let's see which all countries joined this organization as a non-permanent member. First one, Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia and Liberia. And we are going to do mapping of this particular country so that it can be in our mind for a long term and we can do a holistic study. Let's see about UNSC first. Okay, the Security Council had held its first session on 17 January 1946 at Church House, Westminster, London. ठीक है, normal सा है, and this point is not going to come as a question for you in prelims. ठीक है, just information है, तो just note it down. The Security Council has taken permanent residence at the United Nations headquarters in New York City. The United Nations Charter established 6 main groups of United Nations, including United Nations Security Council. See, UN Charter में 6 particular bodies हैं जो फ्रेम हुई हैं. उनमें से एक क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 23 of United Nations Charter concerns the composition of UNSC. So you need to remember this particular point, that Article 23 is important for
composition of UNSC. Article 5 is linked with, somewhat linked with Article 5. याद रखो NATO से क्या linked है? I know it is not with the UN Charter per se, but NATO gets referenced with Article 5. I hope it is clear. Now, Article 23 is linked with United Nations Charter, concerns the composition of UNSC. Let's see about permanent and non-permanent members first. UNSC composed of 15 members, ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट. परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं पहले देख सकते हैं. चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इसका नोट आप कर लेंगे जरूर, ठीक है. इन 5 परमानेंट मेंबर्स दे आर हैविंग अ वीटो पावर. वीटो पावर क्या होता है पहले समझते हैं. अपोजिशन फ्रॉम एनी of these 5 countries block the resolution regardless of international support. देखो, अगर ये 5 में से कोई भी एक का अगर वीटो हो जाता है तो वो प्रपोजिशन वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है. इतना पावर होता है इस वीटो का, ठीक है. द 5 परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर. अपोजिशन ऑफ एनी, कोई भी एक of these 5 countries block the resolution regardless of international support is very important. Now, next point, 10 non-permanent members जो हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर 2 years. ठीक है, इंडिया भी इलेक्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए ये चीज. इलेक्टेड फॉर 2 years बाय जनरल असेंबली. याद आ गया, ठीक है. 2 years बाय जनरल असेंबली, ठीक है. ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ 10 इन टोटल फॉर अ 2-year टर्म, ठीक है. द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस. ये भी याद रखेंगे. अब रीजनल बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर नंबर को कि 5 अफ्रीका और एशियन से आते हैं. जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस थिंग कि इट इज like the non-permanent seats are distributed on a regional basis. Okay, as stipulated in Rule 144 of the Rules of Procedure, a retiring member is not eligible for immediate re-election. अब एक समझो कि non-permanent members में से कोई अपना 2 साल कंप्लीट कर लेता है, then suddenly it is not eligible for immediate re-election. ठीक है. अब एक बार ये देख लेते हैं. Member states are selected from which all countries? 5 from African and Asian countries, ठीक है. 1 from Eastern European countries, 2 from Latin American and Caribbean countries, and 2 from Western European and other countries. ठीक है. इसको सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए पढ़ लो, not that much important. Again, India as a non-permanent member of UNSC, थोड़ा ये भी देख लेते हैं. In June 2020, India was elected to the UNSC as a non-permanent member for year 2021 and 2022. तो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली. ये याद रखना है, यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है. Now, previously, India again, India has already been elected as a non-permanent member, and now the number is 8 times. We have got elected as a non-permanent member, starting from 1950 to 1951 में elect हुए थे. Again, these years are here, and the last time it is June 2020. Let's see the mapping of these 5 particular countries which got added into UNSC as non-permanent member. First is Bahrain, Colombia. Okay. Will come over here. We are having Liberia. It also got added into non-permanent member of UNSC. To know the location of this particular area, because we have seen Ivory Coast से question आया है 2025 में, ठीक है. Again, from here, Colombia got added as a non-permanent member. Now, the member were Latvia, Republic of Congo, and Liberia. We have already seen. Bahrain will be same. This one is Latvia, ठीक है. लातविया के ऊपर क्या है? एस्टोनिया. वी हैव ऑलरेडी डन द मैपिंग ऑफ यूरोप, पॉलिटिकल एंड आल्सो द फिजिकल मैपिंग, ठीक है. याद रहेगा. लातविया के ऊपर क्या है? एस्टोनिया. नीचे क्या है? लिथुआनिया, ठीक है. लातविया शेयर्स बॉर्डर विद रशिया एंड आल्सो विद बेलारूस. फाइन. आई होप यू विल रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग. एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ठीक है. समझ में आ गया. Lithuania shares border with Russia also. Here, small one. I guess this much is clear. Now we'll see about Bahrain. See, Bahrain is here. So we'll do a north to south wala mapping for this particular area. First is, Kuwait is here, Bahrain, Qatar. This one is UAE, Oman, and we are having Yemen. So Kuwait is in north. Kuwait, Bahrain, कतर, KBQ, ठीक है. कुवैत, बहरीन, कतर, ठीक है. ये मैप का प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है. टर्की का मैंने बताया था, इट शेयर्स बॉर्डर विथ ईरान आल्सो,
इट शेयर्स बॉर्डर विद इराक ऑल्सो, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, G7 कंट्रीज जब हम लोग पढ़ रहे थे, कनाडा में ये हेल्ड किया गया था। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन वाज इनवाइटेड टू दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, ठीक है, मीटिंग में बुलाया गया था। यूएनएससी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, मैंने आपको बताया, हर साल नॉन परमानेंट मेंबर 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। Bahrain, Colombia, DRC, Latvia, and Liberia got added into this as a non-permanent member. ठीक है, created in 1945 after the World War II to succeed League of Nation. League of Nation को succeed किया UNSC ने कब? After World War II in 1945. ठीक है, I guess it's much clear. कोलंबिया का मैपिंग भी आपने देख लिया। मैंने आपको बताया था कि ब्राजील को सेंट्रल पॉइंट रखना, उसके बाद यू कैन गेट टू नो विच ऑल कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद दिस। इक्वाडोर बॉर्डर नहीं शेयर करता है एंड ऑल्सो चिली डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ ब्राजील, बट अर्जेंटीना डू टच बॉर्डर विथ ब्राजील, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर हैविंग यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट इज इकोसॉक कहते हैं इसको। लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। India has been elected to the Economic and Social Council of the United Nations for the period of 2026 to 2028. ठीक है, India has been elected to the Economic and Social Council of United Nations for the period of this particular period के लिए इंडिया को elect किया गया। Let's see about UN ECOSOC. First thing, हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, ये याद हो जाएगा। दूसरा चीज, यूएन चार्टर स्टैब्लिश्ड इकोसॉक इन 1945 एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन। हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर चार्टर के अंदर 6 बॉडीज है जो क्रिएट की गई थी। वन इज यूएनएससी एंड सेकंड विच वी आर रीडिंग इज इकोसॉक आल्सो, ठीक है। Now, the third point is the Council is at the heart of the United Nations mechanism to advance the 3 dimension of sustainable development. अब क्या क्या होते हैं ये? First thing, economic development, social development and environment development. Now, ECOSOC membership देख लेते हैं, is allotted based on equitable geographical representation across 5 East regional groups. आप ही पढ़ लेना, it is not that much important, ठीक है। The next point is, this is important, I have written it here itself also. India was elected in the Asia Pacific state category. यहाँ पे बोला गया ना 5 कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाता है, उसमें क्या होता है? एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी भी होता है। इट हैज 4 सीट्स, तो ये क्या हो गया कि देखो 4 सीट्स है, इंडिया को इलेक्ट किया गया। वी नीड टू नो अबाउट द 3 अदर कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फर्स्ट इज लेबनान, तुर्कमेनिस्तान एंड चाइना। विल सी द मैप ऑल्सो हेयर। नाउ मेंबर्स देख लेते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स, 18 of which are elected each year by the General Assembly for a period of 3 years. Now, this is important. See, UNSC, again, General Assembly elects, but for 2 years. Now, ECOSOC, again, General Assembly elects, but for each year. यहाँ पे है ना, each year. ठीक है, I guess this is clear. And this is for 3-year terms. In UNSC, it is for 2 years. In ECOSOC, it is for 3 years. Clear है? Under the UN Charter, ECOSOC is responsible for क्या क्या responsible है? First thing is living full employment, economic and social progress. Everything will be very broad topics and everything will be in the positive term only. Facilitate international culture and education cooperation. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा हो गया? लेबनान हो गया, तुर्कमेनिस्तान एंड चाइना, जो एशियन पैसिफिक कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें इंडिया को भी सिलेक्ट किया गया। ठीक है, लेट्स सी द मैपिंग हियर। इट इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया का मैप देख लेते हैं फर्स्ट। ओके, सो वी आर हैविंग कजाकिस्तान इन टॉप। कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी, एंड वी नो दैट दिस रिवर हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, यूरल सी। ठीक है, यूरल सी फ्लोज इनटू कैस्पियन सी, एंड वी हैव अगेन अरल सी भी पूछा गया है जो ड्राई हो रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान वी आर हैविंग बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एंड अगेन विद किर्गिस्तान ऑल्सो, नॉट विद तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से तो करता ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान के साथ नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेक बालकश इज हियर, अरल सी एंड यूरल सी, यूरल, अरल एंड लेक बालकश, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। कैस्पियन सी नीचे हो जाएगा हमारा। आई होप दिस इज क्लियर। उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ईरान के साथ बॉर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की तो कर ही रहा है, साथ में इराक भी कर रहा है बॉर्डर शेयर। हेयर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ओनली वन तुर्कमेनिस्तान, नॉट विद अदर, उज्बेकिस्तान,
तजाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है ईरान, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार काम करते हैं, उज्बेकिस्तान को सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं। लेट्स सी द मैपिंग। उज्बेकिस्तान से ऊपर गए, कजाकिस्तान आया, लेफ्ट में जा रहे अगेन कजाकिस्तान को क्रॉस करते हुए कैस्पियन सी, नीचे आते हैं वी आर हैविंग तुर्कमेनिस्तान, राइट में जाओ तो इस साइड से बॉर्डर शेयर कर रहा है किर्गिस्तान, एंड साउथ ईस्ट आओ तो वी आर हैविंग तजाकिस्तान एंड ऑल्सो विद अफगानिस्तान। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so we'll see the next topic. It is International Organization for Mediation. ठीक है, let's see why it was in news. China has officially launched a new international legal body called the International Organization for Mediation. ठीक है, it is again important. See, China has launched this particular official body, so I do not particularly guess or I do not particularly think कि ये questions में आ सकता है, but एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसके बारे में। चाइना हैज ऑफिशियल लॉन्च्ड अ न्यू इंटरनेशनल लीगल बॉडी। फर्स्ट थिंग, लीगल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। लेट्स सी अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। यह है क्या? इट एम्स टू ऑफर अ पीसफुल डायलॉग बेस्ड वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, positioning itself as an alternative to traditional bodies like International Court of Justice and Permanent Court of Arbitration। ठीक है, इसको चाइना ने डेवलप किया एंड इट इज प्रोजेक्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू आईसीजे एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। एंड इट इज फॉर पीसफुल डायलॉग बेस्ड वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। द सेकंड पॉइंट इज इट इज डिस्क्राइब बाय चाइना स्टेट media as the world first intergovernmental international legal organization that focuses only on mediation। ठीक है, only on किस पे? mediation। ठीक है, unlike the court or arbitration panel it does not issue बाइंडिंग जजमेंट दे नहीं पाएगा, ओनली फॉर मेडिएशन। ठीक है, ओनली फॉर मेडिएशन, लॉन्च्ड बाय चाइना एंड इट्स अ लीगल बॉडी। आई गेस दिस इज क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ है? हांगकांग। इट्स फॉर डिस्कशन। ठीक है, नाउ एट अ हाई लेवल सेरेमनी इन हांगकांग ओवर 30 कंट्री ज्वाइंड चाइना एज द फाउंडिंग एंड चाइना इज अ फाउंडिंग मेंबर सॉरी। At a high-level ceremony in Hong Kong, over 30 countries joined China as a founding member। ठीक है, 30 member plus China joined it as a founding member and launched this particular body, which is called International Organization for Mediation। It is the world's first intergovernmental international legal organization, and it only focuses on mediation. Do not have any binding judgment or any binding power। ठीक है, I guess this is clear. Now we'll be seeing about NATO। In 2025 we got a question that which all countries are part of NATO। ठीक है, so we need to know about particular NATO। ठीक है, so let's study about NATO first। ठीक है, context क्या हो जाएगा इसका? The head of states and government of non-Atlantic alliance gathered in The Hague to reaffirm commitment to NATO। ठीक है, न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, they reaffirm the ironclad commitment to collective defense and as enshrined in Article 5। See, नेटो के ट्रीटी जो वॉशिंगटन ट्रीटी है जिसके थ्रू नेटो स्टैब्लिश हुआ, उसका आर्टिकल 5 है जिसमें ये कहा गया है कि कलेक्टिव डिफेंस हम लोग करेंगे। कलेक्टिव डिफेंस मतलब दैट अटैक ऑन वन पर्सन इज अटैक ऑन ऑल एंड दे विल ऑल ज्वाइन इट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आई हैव टोल्ड यू अबाउट आयरनक्लैड कमिटमेंट कि किसी एक पे अटैक इट मींस इट्स अ कलेक्टिव अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ नेटो। ठीक है, सो इट इज enshrined in article 5। you need to remember this particular article। see, I have told you about article 23। रिकॉल करना, बताओ कहाँ पे article 23 पढ़ा था हम लोगों ने? सोचो सोचो। आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट हियर ताकि आपको समझ में आए कि आर्टिकल 23 हमने कहाँ पढ़ा था, एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ नेटो आल्सो दैट टाइम। आर्टिकल 23 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर concerns the composition of UNSC। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये मैपिंग समझ में आ गया था। जो न्यू कंट्रीज ऐड हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी, उनका मैपिंग था। लाइबेरिया समझ में आ गया होगा, कोलंबिया, हेयर लातविया, यहाँ पे मैपिंग भी देख लिया कि कौन सा कंट्री रशिया के साथ बॉर्डर कर रहा है नहीं कर रहा है। ये पोजीशन हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे अगेन। ठीक है, करानिस्कस इट्स इन कनाडा, ये रिवाइज हो गया एक बार। नाउ इकोसॉक भी पढ़ लिया हम लोगों ने। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। अगेन कम बैक टू नेटो वाला टॉपिक। ये मैं बीच में ऊपर लेके क्यों गया आप लोगों को, ताकि आप लोग को मोनोटोनस ना लगे और आप लोग अपने आप को चैलेंज करो कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। माई कमिटमेंट फॉर यू इज दैट आई विल हेल्प यू रिकॉल एंड रिवाइज एज मच एज आई कैन हियर इटसेल्फ, और आपको आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े।
ठीक है, आर्टिकल 5 समझ में आ गया आपको, इट इज लिंक्ड विद कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। नाउ अलाइज कमिट किया इन्होंने दैट दे विल इन्वेस्ट 5% ऑफ देयर जीडीपी एनुअली ऑन द कोर डिफेंस रिक्वायरमेंट एज वेल एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेंडिंग बाय 2035. This statement you need to just have a glance. It is not going to come actually like as it is in our particular examination. ठीक है, it may come that they will spend around 15%. No, it is around 5%. तो ये पॉइंट याद रख लेना, देख लेना। सी नेटो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दे हैव आस्क्ड कि which country is not a part of NATO in 2025. They have already asked this. So I have taken a map, and this map has been directly taken from NATO website and added some countries which are not a part of this particular organization. ठीक है, so for an ease I have added this particular European political map also. Let's see कौन कौन से कंट्री पार्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे समझ में आ गया, ये कौन सा कंट्री आपने वो कमेंट्स में बताएंगे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। दिस वन इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। दिस वन यहाँ पे आते हैं, इट्स ऑस्ट्रिया। सी अगेन यूक्रेन को रेफरेंस बनाया था हमने, ये हमारा है बेलारूस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, बेलारूस नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। अगेन वी आर हैविंग दिस इज एक्चुअली सर्बिया, इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, आई हैव रिटन इट हियर, Serbia, it's not a part of NATO. So you got to know Switzerland, Austria, here it is, Belarus, here it is, tell me, this one is Serbia. I guess this is clear. You can take a note of this also. ठीक है, स्विट्जरलैंड मैंने बता दिया आपको, and I have already told you about Belarus, I have told you about Serbia, I have told you about Austria also. ठीक है, again Finland joined this particular organization in 2023 and Sweden in 2024. So I have told you in my previous lectures, NSF क्या होता है, Norway, Sweden and Finland. Norway touches Russia from above, Sweden do not touch and Finland do touch. तो Sweden also joined NATO and Finland also joined NATO. ठीक है, समझ में आएगा। ये मैप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, I guess it's clear now. Okay, I missed this point, I guess this one, Ireland also not a part of NATO, ठीक है, आयरलैंड नहीं था, स्विट्जरलैंड नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है, बेलारूस अगेन नॉट, एंड दिस वन इज सर्बिया। लेट्स सी अबाउट नेटो फर्स्ट। फर्स्ट थिंग, फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस, दोनों मिलिट्री भी है, पॉलिटिकल अलायंस, ठीक है। इंश्योर्स कलेक्टिव डिफेंस, ये वर्ड एकदम एसोसिएट करेंगे नेटो के साथ। कलेक्टिव डिफेंस जहां सुनेंगे आर्टिकल 5 एसोसिएट करेंगे, नेटो जहां सुनेंगे वॉशिंगटन ट्रीटी एसोसिएट करेंगे, ठीक है। अंडर द आर्टिकल 5 एन अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ठीक है। अब एस्टैब्लिश कब हुआ, 1949 में एस्टैब्लिश किया गया, वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आप मेरे को प्लीज बताओ ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट वाज इन समवेयर एल्स and that is not part of particular organization also, ठीक है। टोटल मेंबर कंट्रीज 32 फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। फिनलैंड मैंने अब एक बार रिवाइज कर लो, 2023 में ऐड हुआ था, एंड स्वीडन इन 2024। आई गेस दिस मच क्लियर, फाइन। सो विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। अब इसको मत देखो, आप इसको हम लोग मिस करते हैं। फर्स्ट लेट्स जस्ट लुक ओवर हियर, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। व्हेनेवर आई से सेंट्रल एशिया, आपके दिमाग में क्या आता है, यू नीड टू रिमेंबर। एक बार रिकॉल करो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, कौन सा कंट्री ऊपर है, विच कंट्री इज बिसाइड दैट कंट्री, रिवर कौन सा फेमस है वहां पे, डू वी नो एनी पर्टिकुलर रिवर विच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो व्हेनेवर यू विल challenge yourself, that will help you recall, that will help you revise, and you can actually remember it for a long time, ठीक है। अब फोर्थ एशिया सॉरी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट क्या है, द फोर्थ मीटिंग, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ, अभी तक सिर्फ फोर्थ, समझ में आ रही है। द फोर्थ मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज हेल्ड इन कहाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑन 6 जून अंडर द चेयरशिप ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया। न्यू दिल्ली में क्या होस्ट किया गया था, फोर्थ इंडिया सेंट्रल डायलॉग, सेंट्रल एशिया डायलॉग, एंड इट वाज फोर्थ ओनली। मैं बार बार एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ फोर्थ पे, कि अभी तक से फोर्थ ही हुआ है, उससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ, देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, समथिंग समथिंग, आपको ये पता करना होगा इसके लिए। नाउ लेट्स सी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया समझ में आ गया। लिंक विद कजाकिस्तान, लिंक विद किर्गिस्तान, लिंक विद ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। विल सी द मैप हियर इटसेल्फ। ठीक है, मैप कर ही लेके एक बार कर लेते हैं मैप जल्दी से। लेट्स सी। फर्स्ट थिंग, let's keep Uzbekistan as a central point. Let's go above. We are having Kazakhstan. Let's move here. Uzbekistan shares border with किसके साथ करता है border share? किर्गिस्तान के साथ भी कर रहा है। We are having Tajikistan and here we are having Turkmenistan. अब बेस्ट चीज क्या याद करने के लिए होता है, टर्की के पास रहेगा तो क्या, टर्की के जितना क्लोज तो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नियर बाई टर्की। ठीक है, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर चलते हैं। वी आर हैविंग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड हेयर इट डू नॉट टच एनी बॉर्डर विद ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये याद रखना है प्लीज। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान डू नॉट टच एनी बॉर्डर विद ताजिकिस्तान। ठीक है, तो कीपिंग किर्गिस्तान एज अ सेंट्रल पॉइंट, इट टचेस बॉर्डर विद कजाकिस्तान, Uzbekistan and Tajikistan, not with Turkmenistan. I hope this is clear. Now, back to our topic. Highlights क्या है? First thing, the ministers welcome the designation of 2025 as the International Year of Peace and Trust. So now, what question can be framed from here? That International Year of Peace and Trust has been like welcomed by or initiated by which all countries. ठीक है, countries भी आ सकता है, इंडिया एंड विच एरिया। तो शायद ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकता है रशिया, बट नो, इट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। इट इज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर। in accordance with UN General Assembly resolution number ये सुननी पढ़ो अभी, initiated by Turkmenistan and holding of International Forum of Peace and Trust in 2025 अशगाबाद। ठीक है, समझ में आ गया, International Year of Peace and Trust between India and Central Asian countries. Now the next point is minister commended the first high level international, देखो first high level international conference on glacier preservation, समझ में आ रहा है ये चीज, as part of observing the International Year of Glacier Preservation. See, it was International Year of Peace and Trust, now International Year of Glacier Preservation 2025. I guess this is clear. International Year of Glacier Preservation 2025 and World Glacier Day कब मनाया जाता है? It's on 21st May. प्लीज याद रखना, हिंदी दिवस शायद पूछा हुआ है पहले, so do not get confused. ठीक है, International Year of Glacier Preservation 2025 and World Glacier Day. ठीक है, Rare Earth and Critical Minerals पे बात हुआ इसमें, Express Joint Interest in Exploration and Investment, Connectivity and Trade Facilitation पे बात हुआ है, Emphasized Optimum Use of INSTC, INSTC का बताना International North South Trade Corridor I guess. ठीक है, Chabahar Port supported Uzbekistan and Turkmenistan entry into INSTC. ठीक है, now this is our responsibility कि INSTC के मेंबर्स कौन कौन से हैं, फाउंड कब हुआ ये, एंड हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेट्स सी हियर। Connectivity and trade facilitation, emphasized optimum use of INSTC and Chabahar Port, supported Uzbekistan and Turkmenistan का entry into INSTC. I hope this is clear. ठीक है, what all important point you must be remembering here is fourth, held in Delhi, International Year of Peace and Trust between India and Central Asian countries, in International Forum for Peace and Trust जो कहा हुआ था अशगाबाद, and again first high level international conference on glacier preservation. It is also an International Year of Glacier Preservation, again 2025, and World Glacier Day. It is celebrated on 21st March, and I have already shown you the map of Central Asian country. ठीक है, now let's come to the other topic. It is group of friends. Context क्या है? India co-chairs UN group advocating accountability for crimes against peacekeepers. See, we have already learned about UN peacekeeping. We have known that it is blue berets, blue helmets. We got to know about that, and India got a prize itself. आपको ये भी मैंने बताया था कौन सा प्राइज, रिमेंबर करना वो चीज। Apart from that, let's see the news now. India strongly reiterated its commitment to ensure justice for crime committed against the UN peacekeepers. See what is happening. There are several crimes which are
done against peacekeepers, and there is no accountability of that part. So on that only we have formed group of friends which can advocate accountability for crimes against peacekeepers. I guess it's clear. Now the second point is speaking at a high level, UN peacekeeping group of friends for promoting accountability. India's permanent representative to UN, what he said: peacekeeper face serious threats like while serving in dangerous areas, yet most crimes against them go unpunished. सी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं यूएन पीस कीपर्स के मतलब उनके ऊपर, लाइक एंड इट इज नॉट गेटिंग अकाउंटेबल. ठीक है, लाइक दे जो ये कर रहे हैं उनका अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पा रहा है, एंड दे आर एक्चुअली फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज ओवर देयर. सो व्हाट इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, पहले ये देख लेंगे. फर्स्ट इज द ग्रुप ऑफ फ्रेंड वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2022. ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? व्हेन इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, India was holding the presidency of United Nations Security Council. ठीक है, resolution is 2589 which called action against crime targeting UN peacekeeping. ठीक है, UN अब इसको बैक ट्रैक करते हैं थोड़ा. इंडिया जब प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा था यूएनएससी का, देन वी हैव लॉन्च ग्रुप ऑफ फ्रेंड. इट इज बेस्ड ऑन सेटिंग अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट द क्राइम्स व्हिच इज हेल्ड ऑन पीसकीपर्स. समझ में आ गया ये चीज? नाउ which called for action against crime targeting UN peacekeepers. The next point, as GOF co-chair, India continues to lead efforts to protect peacekeepers to ensure justice. ठीक है, normal. It includes around 40 UN member states. See, I have written not all, only around 40 UN member states अभी जो हैं उनके अराउंड में हैं अभी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में. I hope this is clear. Group of friends located मतलब initiated for UN peacekeeping. India initiated that in 2022 when India was having the presidency of UNSC. I guess this is clear. Fine. We have done about this. We have done this. Now we'll be looking on Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. See, this is a very general topic. Just some points which are important. See, generally what happens, we are putting some news so that you do not miss that if it is getting in your examination. ठीक है. लेट्स सी व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट. कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझते हैं. एशिया पैसिफिक ब्रेक डाउन करो. इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग मतलब मीडिया से रिलेटेड कुछ होगा, एंड दैट टू वेयर एशिया एंड पैसिफिक में. एशिया पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. ठीक है, ये समझ में आ गया. नाउ फर्स्ट थिंग, फाउंडेड इज 1977 अंडर द ऑस्पिस अंडर द बैनर ऑफ UNESCO, sorry. ठीक है, the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development is a unique regional intergovernmental organization. Now this is very important. Founded in 1977 under the auspices of UNESCO. ठीक है, link it with APIBD. ठीक है, UNESCO. ठीक है, apart from that, it is a regional intergovernmental organization. ठीक है, it currently has 92 members organization from 45 different countries. ठीक है, these are normal thing. India is a founding member of AIBD. This becomes very important. So what all topics are important over here is, let us mark one. AIBD 1977 founded, UNESCO auspices under this particular thing, and it is having the founding member is India also is a founding member. And Prashar Bharati, India's public service broadcaster, represents the Ministry of Information and Broadcasting in the organization. Secretariat कहाँ है? कोलालमपुर में है. I guess this much is clear. Now, इसका aim क्या है? Vibrant and cooperative media environment. This thing is there. And the theme क्या है? Media for people, peace and prosperity. I hope this is much is clear. First point which you need to know about AIBD. India is elected as a chairman. UNESCO 1977, founding member of AIBD is India, one of the founding member. And Prasar Bharati, India's public service broadcaster, represents Ministry of Information and Broadcasting. I hope this much is clear. Now let's move forward and look on the 25th SCO summit. See, we have already studied about SCO summit. Let's revise it very quickly. Context क्या है? Prime Minister participated in the 25th meeting of Council of Head of State of SCO. ठीक है, कहाँ हुआ था? Tianjin, China. We have already seen that Tianjin Declaration was signed over there, and
global governance initiative was there. These all things are for you to revise. First thing, Tianjin Declaration किसके लिए है? Condemn terrorism. ठीक है, समझ में आ गया? Tianjin Declaration condemned what? Terrorism linked with Tianjin Declaration, including the Pahalgam attack. ठीक है, let's read it once. The Tianjin Declaration strongly condemned terrorism linked with terrorism, ठीक है, including the Pahalgam attack, and called to end cross-border movement of terrorists. Very, very important. Now, the most important point is this one. Laos was accepted as a partner country. ठीक है, समझ में आ रहा है? Laos accepted as a partner country, taking SCO total strength कितना हो गया? 27. अब एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं. 27 जिसमें से 10 क्या हो गए? 10 हमारे हैं members and 17 we are having the partner countries in which Laos got added. ठीक है. Global governance initiative was proposed to promote sovereign equality, multilateralism and a global order. ठीक है. प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड सोशल वैल्यूज पे बात हो रहा है, नॉर्मल सा है. अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. द समिट एम्फसाइज स्टेबलाइजिंग ग्लोबल ट्रेड, expanding bilateral trade and investment, and setting up of SCO development bank. Let me clean this for you. It is SCO development bank के बारे में बात हुआ है. Now let's read about SCO का basics देख लेते हैं. First thing, origin as a Shanghai 5 का, like it is a successor of Shanghai 5 1996. जब यहाँ पे Shanghai 5 में कौन कौन थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, एंड Tajikistan, focusing on resolving border dispute and fostering security. In 2001, Uzbekistan joined and the group evolved into SCO. ठीक है, 2001 में Shanghai 5 after joining of Uzbekistan turned into SCO. ठीक है, the organization expanded to include India and Pakistan. 2017 में India and Pakistan आए. 2023 में like Iran got added into this, and in 2024 Belarus got added into SCO. I hope this is clear. The SCO also includes two observer states, कौन से हैं? Mongolia and Afghanistan. Currently inactive है Afghanistan. ठीक है. Official language क्या है? Chinese and Russian. Headquarter कहाँ है? Beijing, China. Structure क्या होगा? Council of Head of State, apex body है. Council of Head of Government, second highest, and permanent bodies. First thing we have permanent bodies, Secretariat and RATS जो हमने पढ़ा था पहले, तजाकिस्तान, तास्केंट, ठीक है, RATS organization. The next topic is 47th ASEAN Summit. Context क्या है पहले ये देख लेते हैं. Recently, the 47th ASEAN Summit took place in Kuala Lumpur, Malaysia from 26 to 28 October 2025. ये सेम है. About the summit देख लेते हैं. First, hosted by Malaysia, ठीक है. Theme क्या है? Inclusivity and Sustainability. The important point here it is Timor-Leste, East Timor जिसको कहा जाता है, Timor-Leste was formally admitted in as the 11th member of ASEAN. ठीक है, this point is very very important that Timor-Leste got formally admitted into this particular group ASEAN, and this is the first expansion since 1990s. ठीक है, the 22nd ASEAN India Summit held in Kuala Lumpur saw India declared 2026 as the ASEAN India Year of Maritime Cooperation. Now this again becomes important. So till now we are having 2 points which is very important. First, Timor-Leste joined as the 11th member, and we are celebrating 2026 as ASEAN India Year of Maritime Cooperation. ठीक है, I guess this much is clear. Again, and marked a major step forward with the adoption of ASEAN India Plan of Action 2026 से लेके कहाँ तक? 2030, 5 years के लिए हम लोगों ने ये प्लान सेट किया है. एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 2026 as ASEAN India Year of Maritime Cooperation. I guess this much is clear. Key highlight of ASEAN India Summit, कुछ highlights देख लेते हैं. First thing, एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन जो मैंने आपको बताया 5 साल के लिए है. एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अगेन द सेम थिंग. नाउ adoption of ASEAN India joint leaders statement on sustainable tourism. ठीक है, so we'll be celebrating ASEAN India Year of Tourism. Nice. Again, 2026 ASEAN India Year of Maritime Cooperation. Now come to this particular point, ASEAN Power Grid Initiative. ये क्या होता है? We'll be training of 400 professional in renewable energy for supporting ASEAN Power Grid Initiative. ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पे बात किया कि हाइलाइट्स ऑफ एशियन इंडिया समिट के अंदर ये बात आई थी. ठीक है, एक्सटेंडिंग क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स टू Timor-Leste. Timor-Leste joined as the 11th member of ASEAN, so we'll be helping them out. The proposed establishment of a Center of Southeast Asian Studies at कहाँ? Nalanda University. So remember this.
टू डेवलप रीजनल एक्सपर्टीज, ठीक है। नाउ होल्डिंग द ईस्ट एशिया समिट maritime heritage festival at Lothal, Gujarat. Lothal also linked with Harappa, Lothal also linked with maritime trade, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। So East Asia Summit Maritime and Heritage Festival at Lothal, ठीक है। So East Asia Summits इसके अंदर क्या आता है, Maritime Heritage Festival at Lothal, Gujarat, ठीक है। Security again and a conference on maritime security cooperation, ठीक है। अब एशियान के बारे में थोड़ा देख लिया जाए, उससे पहले ये मैप भी देख सकते हो। फर्स्ट थिंग, start from Myanmar. Myanmar and Thailand are part of BIMSTEC also, so do not forget. Myanmar, Thailand do not touch China, so just have a look on that. Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, ठीक है। नीचे आते हैं, we are having Malaysia, here we are having Singapore, here we are having Indonesia, here this side we are having Brunei, here we are having Philippines, and now we are having Timor-Leste, ठीक है। दिस मच मैप इज क्लियर। साउथ ईस्ट एशिया का मैप एक बार फिर से रिमेंबर कर लो। यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ वियतनाम, डू यू थिंक वियतनाम टचेस म्यांमार? नो, वियतनाम विल टच जस्ट लाओस, इट डू नॉट टच थाईलैंड आल्सो, ध्यान में रहेगा। म्यांमार टचेस बॉर्डर विथ थाईलैंड एंड लाओस एंड, ठीक है, समझ में आ गया। एंड यहाँ चाइना के साथ कर रहा है। थाईलैंड टचेस बॉर्डर विथ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड हेयर मलेशिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Now, let's see some basics and static of ASEAN. First thing, the ASEAN was established in Thailand. जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 1967 में, we established like ASEAN got established over there, ठीक है। The signing of ASEAN declaration, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको। फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से थे? 5 countries, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। Brunei joined ASEAN in 1984, then Vietnam 1995, Laos and Myanmar in 1997, and Cambodia was the last till date in 1999, and now in 2025 Timor-Leste got added into ASEAN. I guess this much is clear. In this particular information, what key points which you need to remember is, first, Timor-Leste joined as the 11th member. We are celebrating 2026 as Asian India Year of Maritime Cooperation. Fine, this much is clear. And Asian India Year of Tourism, again we are celebrating this part. We are training 400 persons in renewable energy under Asian Power Grid Initiative. Apart from that, we will be establishing Center for Southeast Asian Studies at Nalanda University. Apart from that, East Asia Summit का जो Maritime Heritage Festival होता है, will be holding that in Lothal, Gujarat. Apart from that, इन एशियान का स्टैटिक देख लेते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन से स्टार्ट हुआ 1967 में, ये इट वाज फॉर्म एंड लेटर इन स्टार्टिंग इट वाज 5 फाउंडिंग मेंबर, लेटर countries got added. The last country which got added was Cambodia, and now we are having Timor-Leste which got added into Asia in 2025. Here is the mapping, just you can pause it and read it, or you can take a screenshot of this particular image, ठीक है, हो जाएगा। Now let's come to the next topic. It is Sevilla Forum. आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, एंड यू नीड टू नो दिस पर्टिकुलर फोरम इज लिंक्ड विथ विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका काम क्या है। नॉर्मल, इट इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। पहला, द न्यू सेविला फोरम ऑन डेप्थ, पहला ये समझ लो, ये डेप्थ पे है, ठीक है। सो इसका फोकस क्या है, डेप्थ पे है, ठीक है। वॉज लॉन्च्ड एट द 16 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, जेनेवा, ठीक है। तो द न्यू सेविला फोरम ऑन डेप्थ, ठीक है, डेप्थ याद रखेंगे। सेविला फोरम के बारे में देख लेते हैं। इट इज लेड बाय स्पेन, थोड़ा नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है, सेविला स्पेन, ठीक है। सपोर्टेड बाय UNCTAD, ठीक है। क्या काम है इसका? इट विल ब्रिंग टुगेदर ऑल पार्टीज, जो जितने ही पार्टीज है जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, डेप्थ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन जो निकाल के आते हैं, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, बोरोवर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। बेसिक मतलब ये है कि डेप्थ सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज FFD4, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका आउटकम क्या निकला? सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस, ठीक है। द अदर 3 आउटकम क्या कहते हैं? पहला तो डेप्थ स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब, डेप्थ फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम एंड डेप्थ पॉज क्लॉज अलायंस, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर। अगेन
Sevilla commitment lays out a path to close the $4 trillion annual SDG financing gap in developing country. So for prelims point of view, I particularly think what all things are important. First thing, it is linked with that. Again, it is supported by UNCTAD. It has been launched or led by Spain, and it has been the outcome of fourth international conference on financing for debt. ठीक है, इतना समझ में आ गया, मोर देन एनफ. नाउ लेट्स कम एंड सी G20 समिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एंड आई हैव पर्टिकुलरली एडेड सम की पॉइंट्स एंड एक की मैपिंग के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, फॉर दैट आई हैव एडेड समथिंग हियर. ठीक है. नाउ G20 समिट 2025 कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द G20 लीडर समिट. ठीक है, hosted by South Africa. So this was the first African nation to host this G20 समिट. ठीक है, समझ में आ गया. कहाँ होस्ट हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका. थीम क्या है? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. अभी ट्रॉइका में कौन कौन है? तो लास्ट सी ट्रॉइका, दिस वाज लास्ट, करंट एंड फ्यूचर. ठीक है, एलसीएफ. तो लास्ट ब्राजील होस्टेड G20. Then South Africa is hosting right now. It has hosted already, and United States is going to be the next president. I guess this much is clear. G20 Johannesburg leaders declaration. क्या क्या बात हुआ इसमें? They have talked about climate action, multilateral reform, and global governance पे बात हुई है. This one is the important point. Expanded climate action commitment. ठीक है. Now members agreed to scale global climate finance towards a billions to trillions. Finance को increase करने की बात हुई है. ठीक है. Again, डेथ क्राइसिस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म पे भी बात हुआ है. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक और समवेयर वेयर यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर फाइनल रिवीजन. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय G20, वाज लॉन्च्ड टू रिफॉर्म ग्लोबल क्रेडिट प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो भी ग्लोबल क्रेडिट प्रैक्टिसेस चल रहा है ना, कितने रेट पे देंगे लोन, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, क्रैक क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए. ठीक है. एंड रिड्यूस द अनफेयर अफ्रीकन रिस्क प्रीमियम. अफ्रीकन रिस्क प्रीमियम क्या होता है ना, कि अफ्रीकन नेशन को दे आर पेइंग अ लॉट इंटरेस्ट व्हेन दे आर बोरोइंग सम अमाउंट. ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रेडिट रेटिंग्स, एंड फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन. ठीक है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, नोट कर लेना. मिशन 300 देख लेते हैं. समिट हाईलाइटेड मिशन 300. क्या है ये मिशन? एन इनिशिएटिव लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिशन 300 लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. एम क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू 300 million people in sub-Saharan Africa by 2030. I guess this much is clear. Critical mineral framework. Welcomed G20 critical mineral framework of G20 to secure sustainable value chain, focus on investment in mineral exploration and local beneficiation in developing country. Let's revise once again. G20 summit, India participated. It was held in South Africa, first time in any South African countries. Now, sorry, African country. The theme was solidarity, equality, and sustainability. Troika में कौन-कौन है? Brazil already hold it. South Africa has held this particular year, and now United States is going to hold the next presidency. Johannesburg leaders declaration talked on climate action, multilateral reform. ठीक है. Now this one, they are saying to expand the global climate finance, and they have launched a cost of capital commission, which will be dealing with global credit rating and reducing African risk premium. Mission 300 देख लेते हैं. It has been launched by World Bank plus African Development Bank to provide electricity to 300 million people. ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना. 300 million people को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा. कहाँ पे? इन सब सहारन Africa by 2030. I hope this much is clear. Let's see some basic points of that. G20 20th था, held in South Africa. 20th G20. ठीक है, first time in African continent. Adopted नेल्सन मंडेला बे टारगेट. इसको प्लीज याद रखेंगे. नेल्सन मंडेला, लेट मी हाईलाइट दैट. नेल्सन मंडेला बे टारगेट. अब ये होता क्या है? रिड्यूस यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग बाय 5%. अडॉप्टेड नेल्सन मंडेला बे टारगेट. क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ था? इट वाज क्रिएटेड आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था? एज अ फोरम ऑफ मिनिस्टर एंड
सेंट्रल बैंक गवर्नर थे सिर्फ, बट इट गॉट अपग्रेडेड टू लीडर्स, लीडर इन द सेंस कि एक कंट्री के जो लीडर होते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, एनीवन, उसमें अपग्रेड कब किया गया? 2008 में, ठीक है। इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। एक बार फिर रिवाइज करना है, कर लेते हैं। 20th G20 हेल्ड हुआ साउथ अफ्रीका में। इट वाज द फर्स्ट विच was happened in any African continent. Adopted Nelson Mandela Bay Target. Bay Target मतलब क्या होता है, क्या करेंगे? तो reduce youth not in employment, education और training, ठीक है। कब क्रिएट हुआ था? अफ्रीकन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्रिएट किया गया था एज अ फोरम ऑफ मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर. It got upgraded to leader-based organization in 2008 and it did not have any kind of headquarter. Now, this flow chart is for you to remember which all countries are part of G20. Start from here. It is Argentina. आप सिर्फ दिमाग में चलाते रहो, अपने मैप को दिमाग में ले आओ अपने आंखों के सामने। अर्जेंटीना से ऊपर आते हैं, वी आर हैविंग ब्राजील, ठीक है। ब्राजील पार्ट, अर्जेंटीना पार्ट ऑफ G20, ब्राजील ऑल्सो। ऊपर आते हैं, मैक्सिको पार्ट है, अगेन यूएस एंड कनाडा। तो 1 2 3 4 5 कंट्री हो गया। यहाँ से थोड़ा आगे मूव करते हैं, वी आर हैविंग यूके अ पार्ट ऑफ G20। कम डाउन, वी आर हैविंग फ्रांस ऑल्सो। अगेन थोड़ा ऊपर जाएंगे, जर्मनी। थोड़ा नीचे आते हैं, वी आर हैविंग इटली, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडिया, ठीक है। इतना याद हो गया। नाउ ये दो पैरेलल्स है, एक इस साइड के, इस साइड के। अब यहाँ से स्टार्ट करो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया। नाउ कम हियर टू चाइना, चाइना के ऊपर जापान, साउथ कोरिया एंड रशिया। तो जस्ट मेक टू पैरेलल्स, add 5 here and 1 2 3 4 5 6 over here and here you can guess, ठीक है। guess in the sense you can recall or revise multiple number of time। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, वी आर हैविंग ब्राजील, मैक्सिको, यूएस, कनाडा, ठीक है। कम टू यूके, यूके के नीचे फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड दिस वन इज इंडिया, ठीक है। नाउ अगेन अ पैरेलल, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर चाइना, चाइना, जापान, कोरिया एंड रशिया। I hope this is clear. African Union got into this and also European Union is a part of this particular organization. I hope this much is clear. Now, we'll be seeing this topic. It is Second World Summit for Social Development. Second World Summit for Social Development. Let's see what it is and what it is talking about. First thing, context देख लेते हैं, and this is the second one. ठीक है। तो फर्स्ट कब हुआ वो याद रखेंगे। ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आया था कि द फिफ्थ समिट इज गोइंग टू हैपन, नो इट वाज ओनली द सेकंड समिट, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज अराइव्ड इन दोहा टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अबाउट सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट है क्या? इट इज अ यूनाइटेड नेशन कन्वेड समिट विच रीअफर्म्स, क्या रीअफर्म करता है? To eradicate poverty, promote full and productive employment and decent work for all, and foster social inclusion, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। बेसिक्स का पॉइंट है, ब्रॉड टर्म। यहाँ पे देख लो क्या है? सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा? इरेडिकेट पॉवर्टी, फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड फॉस्टर सोशल इंक्लूजन, ठीक है। इट इज डिजाइन टू अलाइन विद अदर रीसेंट ग्लोबल प्रोसेसेस, ठीक है। क्या क्या? 2023 एसडीजी समिट पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, द पैक्ट ऑफ फ्यूचर के साथ अलाइन किया गया इसको। फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने बात किया था सेविला, जो हम लोगों ने बात किया था, डू यू रिमेंबर दैट? दिस वन, Sevilla Forum. We have already talked about fourth international conference on financing for development, ठीक है। Then now the first world summit for social development held in Copenhagen in 1995. सोच लो 1995 में हुआ and now it has happened on 2025. तो it becomes important। और कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। The first WSSD resulted in adoption of Copenhagen Declaration. Copenhagen Declaration linked with World Social Development, ठीक है। और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात हुआ था। सेकंड वर्ल्ड समिट देख लेते क्या हुआ था। फर्स्ट थिंग, अडॉप्टेड दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, ठीक है। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अगर आएगा तो यू नीड टू नो इट इज गेटिंग लिंक्ड विथ वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, which has already been agreed by consensus through a United Nations intergovernmental negotiation process, ठीक है। अब what we have talked about this, here we are talking about promote inclusive and sustainable economic growth and full and productive employment and decent work for all. I guess this much is clear. Okay, so now we'll be talking about some miscellaneous topic. We have already covered two particular
topics which are important, two particular index topics which we have done. We have seen some mappings also. We have seen some key terms which are important. Now we'll be seeing about Raisina dialogue. Okay. So we are going to start with our miscellaneous topics. I hope that you have done with your first and second index topics and you are revising whatever I have taught to you. And please keep a plain notebook with you, and I'll be dictating some key pointers which are going to be important, and you just need to revise दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड इट इज डन. ठीक है. जस्ट एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के नीचे 3 पॉइंट्स लिख लेंगे एंड you will be revising that much only. ठीक है. And whatever maps I have told to you in the earlier sessions, you need to revise them. कीप प्रैक्टिसिंग. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप टाइम सेव करेंगे एंड उतना ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक एक्यूरेसी को इनहेंस कर पाएंगे, अपने एक्यूरेसी को इनहेंस कर पाएंगे. ठीक है. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर राइस एंड डायलॉग. द सेम पैटर्न विल बी देयर. एक टॉपिक आएगा, टॉपिक को हम लोग डिकोड करेंगे. डिकोड करने के बाद विल बी सीइंग सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स ओवर देयर एंड देन वी विल एनालाइज कि इससे पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, लिंकिंग विद आवर पीवाईक्यू. आई होप दिस इज क्लियर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज राइस एंड डायलॉग. अब इसके बारे में जब ये आए तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पढ़ेंगे, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एंड विल बी सीइंग कि इससे पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं. ओके. द 10th एडिशन ऑफ राइस एंड डायलॉग वाज हेल्ड फ्रॉम 17 to 19 मार्च इन न्यू दिल्ली. ठीक है. अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्टली तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे. ठीक है. न्यू दिल्ली है तो चलो ठीक है, एंड दैट लाइक फॉर यूपीएससी पर से इट विल नॉट बी दैट मच इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ हुआ था. एक बार देख लेते हैं अबाउट 10th राइस एंड डायलॉग. अगर न्यूज में है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारा कि इसको हम लोग कवर कर ले. ठीक है. So inaugurated by Prime Minister, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए, प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट. एंड 10th राइस एंड डायलॉग था. ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यू नीड टू नो इट वाज 10th and 125 countries participated into this. The theme was Kal Chakra, People, Peace and Planet. So this can become a potential question. Kal Chakra associated with Rice and Dialogue. And Rice and Dialogue क्या होता है? It is linked with जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. ठीक है. समझ में आ जाएगा. राइस एंड डायलॉग लिंक्ड विद जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. नाउ 6 थीमेटिक पिलर्स क्या क्या हो गए? पॉलिटिकल, ठीक है, ग्रीन, टर्मिलिया, डिजिटल प्लैनेट, मिलिटेंट, मर्केटलिज्म, इनको स्टॉप करना है, ट्रेड, सप्लाई एंड ऑल दैट. ये नॉर्मल से पॉइंट्स है, इसको एक बार पढ़ लेना आप. इन्वेस्टिंग इन पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशन एंड लीडरशिप, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सी. ठीक है. एक बार देख लेते हैं अबाउट राइस एंड डायलॉग. India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics, मैंने बता दिया, committed to addressing the most challenging issue faced in the international community. The conference is hosted by ORF, ठीक है, in partnership with Ministry of External Affairs, Government of India. I hope this is clear. The important points were that it was the 10th, happened in New Delhi, inaugurated by Prime Minister. This is normal fact. Themes हो गए काल चक्र, and it is for geopolitics and geoeconomics, and it was hosted by ORF Foundation and Ministry of, like, partnership with Ministry of External Affairs. ठीक है. Now the second topic is Munich Security Conference. ठीक है. अब इसके बारे में देखें कॉन्टेक्स्ट क्या है. इट वाज द 61st म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. जब भी आप पढ़ो तो थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ेंगे. अब ये क्या है? सिक्योरिटी, तो समथिंग रिलेटेड टू मिलिट्री, समथिंग रिलेटेड टू थिंक टैंकिंग, रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन पर्टिकुलर डेट इन म्यूनिक. अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते क्या होता है अबाउट Munich Security Conference. The Munich Security Conference, formerly known as the Munich Conference on Security Policy, is an annual conference on international security policy that has been held in Munich, Germany. अब अगर एक कोई कंट्री का नाम आता है जर्मनी, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसका मैपिंग देन एंड देयर देख के अपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें. अब देख लेते जल्दी से मैपिंग एक बार. ऑलरेडी वी हैव सीन द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप मल्टीपल टाइम्स, बट अगेन एक बार देख लिया जाए, क्या बुराई है इसमें, है ना. जर्मनी यहाँ पे है, जर्मनी से नीचे क्या आता है? फ्रांस. जर्मनी के ऊपर जाओगे पोलैंड, अगेन चेक रिपब्लिक, दिस इज स्विट्जरलैंड. यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, याद रखेंगे. एंड ऑल्सो बेलारूस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो. ठीक है. और यहाँ पे इट वॉज सर्बिया विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो. आयरलैंड ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो. ठीक है. अब एक बार फिर जल्दी से जर्मनी का देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग, जर्मनी शेयर्स बॉर्डर विथ, ऊपर में डेनमार्क हो गया, here write Poland, Czech Republic, Austria, Switzerland, France, this is Belgium and this one is Netherlands. I hope this is clear. ठीक है. एक बार मैप आप लोग खुद से भी देख लेना. फाइन. सी व्हाट आई टोल्ड यू कि whenever you are reading something, this is a very small topic. क्वेश्चन बन के आना इससे मुश्किल है, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी कंट्री का नाम आए, कोई भी प्लेस इन न्यूज आए तो हम लोग उसको जल्दी से मैप में देख लें एक बार. ठीक है. नाउ
Over the past 4 decades, the Munich Security Conference has become the most important independent forum for exchange of views by international security. Not that much important, just an overview. तो इससे क्या इंपॉर्टेंट बन के आया? पहला म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जर्मनी, जर्मनी का हम लोगों ने मैपिंग देख लिया. आई गेस इट इज क्लियर. नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकू टू बेलम डिक्लेरेशन. अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? Baku to Belem declaration is for 1, 2, 3, 4 options. It is for climate change, it is for like security purpose, it is for geopolitical enhancement, anything. तो it is for climate change के लिए है, ये climate related something के लिए. देखो पढ़ते हैं क्या है. India called on BRICS group. पहला तो associated with BRICS group. India called on BRICS group of nation to unite on Baku to Belem roadmap to mobilize 1.3 trillion annually by 2035 for achieving climate action goals. समझ में आ गया किससे लिंक है? क्लाइमेट एक्शन गोल्स. एंड दिस इज 1.3 ट्रिलियन एनुअली. थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें यूपीएससी ने अमाउंट को चेंज कर दिया था, तो दैट्स द रीजन आई हैव रिटन ओवर हियर कि एक बार देख लेना, कंफ्यूजन ना हो जाए. इट्स 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाकू टू बेलम डिक्लेरेशन फॉर क्लाइमेट. ठीक है, एम पता चल गया. नाउ about Baku to Belem declaration एक बार देख लेते हैं. The Baku to Belem roadmap is a finance mobilization. यहाँ पे देखा था हम लोगों ने 1.3 ट्रिलियन. तो फाइनेंस मोबिलाइजेशन फ्रेमवर्क इनिशिएटेड बिटवीन UNFCCC COP 29 जब हुआ था ना बाकू अजरबैजान एंड COP 30 लाइक बेलम ब्राजील. आप समझ में आया? बाकू टू बेलम. ठीक है, बाकू अजरबैजान एंड बेलम इट इज ब्राजील. आई गेस दिस इज क्लियर. द बाकू टू बेलम roadmap is a finance mobilization framework initiated between UNFCCC COP 29 and COP 30. ठीक है, समझ में आ रहा है आई गेस. सो बाकू अजरबैजान, बेलम ब्राजील. अब बेलम से मैच करने का भी आएगा. यू नीड टू नो दैट बेलम इज इन ब्राजील एंड यू विल गुड टू गो विद दैट पार्ट. ठीक है, अब एम पढ़ लेते हैं. इट एम्स टू चार्ट अ पाथ ऑफ मोबिलाइजिंग 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035. एक बार ये भी नोट डाउन कर लेना. 2035 फॉर किसके लिए एम क्या है? क्लाइमेट एक्शन. इन कहाँ पे? तो डेवलपिंग कंट्रीज. आई होप दिस इज क्लियर. while the roadmap is scheduled for finalization while the roadmap is scheduled for finalization at COP 30 in Belem, Brazil, the time frame between these two conferences provide a critical opportunity to define its mechanism and align them with the principle of climate justice. ठीक है, अभी COP 30 जब होगा उस वक्त will be aligning COP 29 and COP 30. that's the reason it is saying Baku to Belem. ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है? क्लाइमेट जस्टिस. अब आपको पता होगा पॉलिटिक्स पे प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये एक बार देख लेंगे. और ये जो दो टर्म है, इट इज एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा बेसिक से, ये पॉलिटिक्स पे प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. तो प्लीज एक बार इन दो टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे. इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज यू नीड टू नो बाकू इज इन अजरबैजान, बेलम इट्स इन Brazil. I hope this is clear. And this particular declaration is for climate action in which we are going to mobilize finances, and the finance is 1.3 trillion annually by 2035. I hope this is clear. Fine. You are going to have a glance on polity principle एक बार देख लेना, और common but differentiated responsibilities and respective capabilities आप अपने environments के notes को revise करेंगे. I hope this much is clear. Now we'll be seeing about the third topic, which is Operation Sindoor. ठीक है, first thing. जस्ट गो थ्रू दिस. आपको पता होगा हिस्ट्री इसके बारे में कि ऑन 22 अप्रैल पहलगाम में एक अटैक हुआ था. तो उसके बाद वी इनिशिएटेड ऑपरेशन सिंदूर. ठीक है, अब क्या है ऑपरेशन सिंदूर? इज अ मेजर्ड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक टारगेटिंग 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इनसाइड पाकिस्तान एंड पीओके. वेरी कॉमन दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड डायरेक्टली, बट वी नीड टू नो समथिंग मोर अबाउट दिस. ठीक है, नाउ India's integrated air defense and counter drone grid intercepted these attacks. तो ये important है. The third one, India's second precision response. India then conducted limited strikes only on Pakistani air defense that facilitated the attack, guided by principle of equal intensity in the same domain to prevent escalation. समझ में आ गया? Now, Operation Sindoor. Indian Armed Forces on May 7th carried out missile strike on 9 terror target. कौन कौन से target थे? तो मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिभर, सरजल, मुर्दके, महमुना एंड बहावलपुर. ठीक है, दीज नेम्स आर नॉट गोइंग टू गेट अस, बट आप एक बार, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार रिवाइज होते चला जाएगा. ठीक है, नाउ एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर द फॉलोइंग वेर यूज. क्या क्या यूज हुआ था? पेशोरा मिसाइल्स, सॉरी पेशोरा एयर डिफेंस है ये. ठीक है, एंड ओसाका LLAD गन्स एंड आकाश.
अब आकाश के बारे में अगर पूछा गया है तो वी आर हैविंग अ स्मॉल स्टैटिक कॉन्सेप्ट अबाउट आकाश। आकाश के बारे में देख लेते हैं क्या है। इट्स अ इंडिजीनियसली डेवलप्ड शॉर्ट टू मीडियम रेंज। अब यहाँ पे यूपीएससी कैन टर्न द क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग टू मीडियम रेंज, नो इट्स अ शॉर्ट टू मीडियम रेंज। याद रखेंगे, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। आकाश शॉर्ट टू मीडियम रेंज, short to medium range. I'll come back again on this particular topic. It's Akash, short to medium range. सरफेस टू एयर। अब सरफेस टू एयर क्या होता है, मान लो यहाँ से कुछ आ रहा है और ये सरफेस है, यहाँ पे मिसाइल लगा हुआ है, तो सरफेस टू एयर, ठीक है। एक होता है एयर टू एयर, एयर में ही हमारे कोई जेट से और देन एक मिसाइल लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट टू मीडियम, इट्स अ सरफेस टू एयर, डेवलप्ड डिजाइन बाय डीआरडीओ, डेवलप्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। इट प्रोवाइड 360 डिग्री ऑल वेदर प्रोटेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द क्रूज मिसाइल्स। अब नाउ आई एम हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन, एक बार पढ़ भी लेंगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिफरेंस। आई हैव नोटेड दैट एंड इन माय लाइक अपकमिंग, लाइक एक मिनट में दिखा भी देता हूँ हियर, ठीक है। बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स के बारे में डिफरेंस भी है, विल बी टीचिंग यू दैट आल्सो। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वेयर इट वाज, हाँ हियर, ठीक है। तो अगेंस्ट द क्रूज मिसाइल एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन अप टू, अब अगर ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज है तो इसका रेंज भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या है, 18 टू 30 किलोमीटर, यानी एल्टीट्यूड, और रेंज क्या हो गया, 25 टू 50 किलोमीटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इट हैज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ठीक है। अब एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स देख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वेलेंस के लिए कौन कौन सा ड्रोन यूज करते हैं, तापस, रुस्तम एंड हेरोन। दिस वाज एक्चुअली आस्क्ड कि रुस्तम क्या है, तो इट्स अ ड्रोन, ठीक है। तपस, रुस्तम एंड हेरोन। अब आपका काम क्या होगा, आप एक शीट लेंगे, उसमें ये नाम्स लिखेंगे ड्रोन्स के, सिर्फ नाम्स लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या नाम लिखोगे, तपस, सेकंड में क्या नाम लिखोगे, रुस्तम, थर्ड में लिखोगे हेरोन। आई गेस दिस इज क्लियर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, इट इज आर्म्ड एंड कॉम्बैट ड्रोन्स। इसका क्या काम होता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, ठीक है, यूसीएवीस कहते हैं, अनमैन्ड अनमैन्ड, ठीक है, अनमैन्ड आर केपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिसाइल्स। देखो अगर एक ड्रोन है उसके पास एक कैपेबिलिटीज होता है कि इट कैन ड्रॉप अ मिसाइल और इट कैन ड्रॉप बॉम्ब्स। तो इंडिया के पास कौन कौन से हैं ऐसे ड्रोन्स है, तो फर्स्ट इज डीआरडीओ घातक है एंड हेरॉन टीपी, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूटेशंस देख लेते क्या होता है। ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं कि वो ऊपर में एक प्लेस के ऊपर लॉइटर करते रहेंगे, जैसे इनको टारगेट दिखता है ये अपने आप गिर जाते हैं एंड वहां पे ब्लास्ट होता है, ठीक है। दीज ड्रोन्स आर डिजाइन टू लॉइटर ओवर टारगेट एरिया एंड स्ट्राइक व्हेन द टारगेट इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, नागस्त्र हैं और वॉरमेट है। एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से हो गए, नागस्त्र एंड वॉरमेट। तो जो मैंने आपको बोला था नोट्स लिखने के लिए, उसमें आप एक और लिख लेंगे, नागस्त्र एंड वॉरमेट, रुस्तम लिख लेंगे, हेरोन लिख लेंगे। आई गेस इट्स क्लियर। वॉरमेट इज पोलिश ओरिजिन, नागस्त्र मेड बाय सोलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें आते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होता है। देखो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल ड्रोन्स ऑपरेट इन कोऑर्डिनेशन टू ओवरवेलम एनिमीज, ठीक है। एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स आ जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान वाज यूजिंग दिस एंड वी लाइक डिस्ट्रॉयड देम वेरी ब्रूटली, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रोन एक साथ आते हैं जस्ट टू कंफ्यूज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग इज अबाउट आकाश, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, 360 डिग्री प्रोटेक्शन इन ऑल वेदर, 18 टू 30 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड पे होता है एंड रेंज क्या है, 25 टू 50 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। यहाँ से ड्रोन्स के बारे में समझ लो, तपस एक ड्रोन है, रुस्तम एंड हेरोन, ठीक है। आर्म्ड ड्रोन्स कौन कौन से हैं, घातक एंड हेरोन अगेन। लोइटरिंग म्यूटेशंस कौन कौन से हैं, फर्स्ट इन नागस्त्र एंड सेकंड इज वॉरमेट, ठीक है। एंड स्वॉर्म ड्रोन्स आपको पता है। नाउ we'll be seeing about the fourth topic which is Indus Water Treaty। अब ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है ये चीज, बिकॉज हम लोगों ने इसको अबेंस में डाल दिया, इमीडिएट इफेक्ट विल बी स्टॉप, नॉट अबेंस, अभी तक स्टॉप है ये, उसके बाद कंटिन्यू होगा नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल चीज, ठीक है। नाउ इंडिया हैज said that Indus Water Treaty of 1960, first point which you need to remember, see I'll be sharing this PDF to you, जहाँ पे मैंने वन लिखा है, वो वन का मतलब है कि you need to know this particular point, ठीक है। Indus Water Treaty of 1960 with Pakistan will be held in abeyance with immediate effect until Islamabad credibly and irrevocably observes its support for cross-border terrorism, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हेल्प्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब दिस इज माय सेकंड पॉइंट व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सी अब यहाँ से यू मस्ट बी नोइंग कि ये इंडस
झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज, ये यहाँ से शुरू होते हैं और पाकिस्तान में भी आते हैं। अब जब ये डिवीजन हुआ उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रहेगा, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रीटी ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक मतलब इट वाज स्टार्टेड। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब डिवीजन कैसे होता है, जब जब डिवीजन के बारे में बात किया गया तो डिवीजन का एक रूल होगा। तो पहला, ईस्टर्न रिवर्स जो है ना, रवि, ब्यास एंड सतलज, वो इंडिया फॉर इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, अब जितना यूज करो नॉट एन इश्यू। अब एक बार देख लेते हैं, ये है ईस्टर्न रिवर, ईस्टर्न फॉर इंडिया एंड वेस्टर्न फॉर पाकिस्तान, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखना। दो बार फिर रिपीट करेंगे, ईस्टर्न फॉर इंडिया एंड वेस्टर्न फॉर पाकिस्तान। अब ईस्टर्न रिवर क्या क्या होते हैं, नीचे वाले करेंगे हम लोग, ठीक है, रवि, ब्यास एंड सतलज, रवि, ब्यास एंड सतलज। और वेस्टर्न वाले कौन कौन से हो गए, इंडस, झेलम एंड चेनाब, ठीक है। आई गेस दिस मच क्लियर। इंडिया के लिए ईस्टर्न, पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न। अब वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया को अलाउड है फॉर स्पेसिफिक नॉन कंजप्टिव यूज लाइक नेविगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन और फ्लड कंट्रोल, डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर यूज और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सी, it is allocated to Pakistan, but India is allowed for something like नेविगेशन के लिए यूज हो सकता है, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए यूज हो सकता है, फ्लड कंट्रोल के लिए अगेन वी कैन यूज दैट, डोमेस्टिक यूज। अगर ये इंडिया के थ्रू जा रहा है और फ्लड आ गया तो हमारे सिटीजन को बचाने के लिए वी विल डू दैट, है ना। तो फ्लड कंट्रोल, फ्लड प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए वी कैन यूज दैट, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर फॉर इंडिया, वेस्टर्न रिवर फॉर पाकिस्तान, बट वी डू हैव some specific use which we can do that, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब पॉइंटर्स क्या क्या है इस ट्रीटी के अंदर, एक्सचेंज ऑफ डेटा, हम लोग डेटा एक्सचेंज करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बार समझ लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर डेटा एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्लो इन, कितना फ्लो इन है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स रिवर्स रेगुलरली बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। आपको हर बार बताना पड़ेगा कि कितना अभी फ्लो हो रहा है वाटर में, कितना यूटिलाइजेशन हो, एवरीथिंग। अब जब कोई डिस्प्यूट आएगा तो डिस्प्यूट किस तरीके से रिजॉल्व होगा, ये ऑलरेडी इट वाज अ मेंस क्वेश्चन वंस, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बार शायद हमारे प्रीलिम्स में आ जाएगा। तो डिस्प्यूट 3 लेवल पे होता है, ठीक है। तो 3 स्टेप डिस्प्यूट, अब इसको पढ़ना है। पहला देख लेते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। अब कोई भी मैटर आया, इट विल गो टू परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन, द ट्रीटी रिक्वायर्ड द क्रिएशन ऑफ अ पीआईसी विद अ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री फॉर कम्युनिकेशन। पीआईसी इज मैंडेटेड टू मीट रेगुलरली एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो पहला इशू आया, इट गोज टू पीआईसी। अब पीआईसी एक कमीशन है जिसमें दोनों कंट्री के एक एक मेंबर बैठेंगे, और ये कहाँ होगा, अल्टरनेटिवली एक बार इंडिया में होगा, एक बार पाकिस्तान में होगा, फिर अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेप। और हर साल मिलेंगे ये लोग, ठीक है, फॉर ईच कंट्री मीट रेगुलरली एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है। अब जब यहाँ से कुछ नहीं बात बना तो बात है स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इज न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, एंड इन्वॉल्व्स रेंडरिंग अ बाइंडिंग डिसीजन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात नहीं बना तो स्टेप 3 क्या है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज अ न्यूट्रल इफ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट फेल्स, अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट फेल हो जा रहे हैं, नहीं कुछ रिजोल्यूशन हो रहा है, डिस्प्यूट गोज टू court of arbitration. It is generally a 7-member ad hoc arbitral tribunal determines its procedure and decision by majority vote से हम लोग clear करते हैं decision को। I hope this much is clear for you। What are the point which can be important for prelims is, first 1960, third second is World Bank, third is Eastern for India, Western for Pakistan, and again we are allowed to use something for that, some water, again we are not that much restricted, बट इंडिया इज अलाउड फॉर स्पेसिफिक नॉन कंजम्पटिव यूज, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन 3 लेवल का होगा, परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसको एक बार आप पढ़ लेना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। नाउ we'll be moving towards our next topic, it is Israel Palestine issues, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज वोटेड इन फेवर ऑफ अ रिजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट एंडोर्सेस द न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन, ठीक है। अब जब ये आ गया एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो इस बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या है। तो न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन किसके ऊपर है, ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सितंबर 2025 में हुआ था। तो न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन क्या है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन इश्यूज एंड implementation of 2 state solution in Israel and Palestine. तो इंडिया हैज endorsed this time,
ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो थोड़ा सा। फर्स्ट 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन। अब जब ये आ जाए आपके पेपर में कि बैल्फोर डिक्लेरेशन इज लिंक्ड विथ व्हाट, टेबुलर फॉर्मेट में आ जाए, स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाए, तो यू मस्ट बी नोइंग इट इज बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। 1917 में था, ब्रिटेन सपोर्टेड एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल होम फॉर ज्यूस इन पैलेस्टीन, ठीक है। अब इधर आ रहे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हॉलोकॉस्ट जब हुआ तो ग्लोबल सपोर्ट ग्रू फॉर अ जूइश होमलैंड, ठीक है। अब थर्ड 1947 यूएन पार्टीशन प्लान आया, उसमें क्या हुआ, प्रपोज टू स्टेट्स, वन फॉर जूइश एंड वन फॉर अरब, ठीक है। 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। अब इसमें क्या जूस ने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है कर लेते हैं, बट अरब स्टेट रिजेक्टेड दैट प्लान। इन 1948 अगेन इजराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब अरब इजराइल वॉर स्टार्टेड, इजराइल एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी, ठीक है। Now, 7 lakhs Palestinians became refugee of that part. Again, in 1967, we were having a 6-day war. This becomes very important. 1967 6-day war. See, if you are getting Balfour Declaration linked with what, and 6-day declaration, 6-day war linked with what, it is linked with Israel and Palestine. ठीक है, समझ में आ गया? So Balfour Declaration and last is 1967 में 6-day war. अब इसमें क्या होता है, Israel captured West Bank, East Jerusalem, Gaza, Golan Heights and Sinai Peninsula and later returned to Egypt. And when we are talking about this, we need to know about its map also, ठीक है। तो थोड़ा सा मैपिंग जरूर करके जाएंगे। अब एक बार मैप इसका देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, ये इजराइल का टेरिटरी, इसमें क्या है, इस साइड वेस्ट बैंक हो गया, इधर गाजा स्ट्रिप है। वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट आवरसेल्फ विद दिस, एंड वेयर एवर आई हैव मार्क्ड विद माय रेड पेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट हाइफा पोर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स इन मेडिटेरियन सी के साइड में है, ठीक है, हाइफा पोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज सी ऑफ गैलिली, गोलन हाइट इज देयर दिस साइड, सीरिया इधर बॉर्डर टच करता है, और सीरिया में ही एक प्लेस है, इट्स कॉल्ड इरबिद। एक बार ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुका है, तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड दिस जराश, दिस प्लेस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट वाज इन न्यूज़, ठीक है। इरबिद पर यू नीड टू नो अबाउट इरबिद एंड जराश। नाउ कम हियर, इधर मूव करते हैं, हडेरा, दिस वाज अगेन इंपॉर्टेंट। टेल अवीव तो पता होगा। अशदोद, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस प्लेस वाज इन न्यूज़ फॉर मल्टीपल रीजंस, अशदोद एंड अशकेलॉन, ठीक है। अशदोद एंड अशकेलॉन, अशदोद एंड अशकेलॉन, दो बार रिपीट करो प्लीज, अशदोद एंड अशकेलॉन। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप में एक पॉइंट है रफा, ठीक है। खान यूनिस ऊपर में है, रफा नीचे है। आई होप दिस मच क्लियर। इजिप्ट इस साइड है। डिमोना अगेन इंपॉर्टेंट, हियर इट वाज अ नेगेव डेजर्ट, ठीक है। दिस वन इज डेड सी। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। एक बार हाइफा पोर्ट से आते हैं, हाइफा के नीचे हडेरा, इट इज इंपॉर्टेंट। टेल अवीव आपको पता होगा। अशदोद, आई एम रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स बिकॉज इट वाज अ न्यूज़ मल्टीपल टाइम्स। अशदोद, अशकेलॉन पता चल गया, रफा एंड खान यूनिस। आई होप दिस मच क्लियर। इन सीरिया वी आर हैविंग टू प्लेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इरबिद एंड जराश, ठीक है। डेड सी यहाँ पे है। डिमोना अगेन इट वाज इंपॉर्टेंट, एंड बिलो हियर वी आर हैविंग नेगेव डेजर्ट, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। एक बार देख लेते हैं लेटेस्ट एस्केलेशन क्या हुआ। 7 अक्टूबर आपको पता है कि हमास लॉन्च लार्ज स्केल अटैक ऑन इजराइल, इजराइल बिगन मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। करंट सीजफायर एग्रीमेंट क्या है? द फर्स्ट इज इट हैज बीन ब्रोकर्ड बाय यूएस, इजिप्ट एंड कतर। एक बार आप इसको पढ़ लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर दिस। Now we'll be seeing our next topic, which is UN80 initiative. This is very very important. We'll see why it is. See, multiple countries are saying that we need to reform UN. UN के जितने बॉडीज हैं, 6 बॉडीज जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे यूएनएससी है, तो इनमें रिफॉर्म की जरूरत है, बिकॉज इट वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू these were created, और अभी का सिचुएशन डिफरेंट है। many countries at that time were developing, वो emerge हो रहे थे, now they have already become developed and they are having multiple different criteria। population का issue है, terrorism आ चुका है, cyber attacks, everything। so for that reason we need to do some kind of reform in this particular United Nation organization, जो भी multi-forum organization है। for that we are having UN80 initiative। अब पढ़ लेते क्या है UN80। UN80 क्या है ना, 80th एनिवर्सरी है यूएन का, दैट्स द रीजन UN80 इनिशिएटिव, ठीक है। UN80 refers to the global reform initiative, ठीक है, रिफॉर्म पता चल गया। launched in the run up to the 80th anniversary of United Nation in 2025, ठीक है। एम क्या है? एम is to modernize and strengthen the multilateral institution, especially the UNSC, ठीक है, to reflect current global realities। अभी जो करंट में चल रहा है उनको फुलफिल करने के लिए कैसे हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं अपने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ये समझ में आ गया। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है?
objective of UN80. First is reform the UNSC to make it more representative, democratic, and effective. It aims to reinforce the UN capacity to respond to today's global challenge. जो भी अभी के चैलेंज है उनको रिस्पॉन्सिव बना मतलब उनको किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए हम लोग इसमें चेंजेस और रिफॉर्म ला रहे हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज लिमिट और मेक ट्रांसपेरेंट द यूज ऑफ वीटो. अभी तक वीटो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसको थोड़ा लिमिट करने के लिए और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए. ठीक है. रीबिल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ multilateralism and era of geopolitical polarization. See, now this line can be directly used in your means GS2 paper. सबसे पहला rebuild credibility of multilateralism in era of geopolitical polarization. अभी क्या देखा गया है कि countries अपने में shrink कर रही है. Countries are making different ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एससीओ समझ लो, ब्रिक्स समझ लो, बिम्स्टेक समझ लो, एशियान समझ लो. ये क्यों बना? One major factor was that they are not having that much trust on the multilateral institution which was there like UNSC because it was not heard that multiple times. So this reform is important to rebuild the credibility of multilateralism in the era of geopolitical polarization. Okay, I hope this is clear. And this particular screenshot I have taken directly from the UN website. एक बार देख लेंगे. 23rd June 2025 का न्यूज़ है. UN अफेयर. ठीक है. In a world grappling with growing crisis, deepening inequalities, and eroding trust in global institutions, the United Nations has launched an ambitious effort to strengthen how it can serve people everywhere. The UN80 initiative, unveiled in March by Secretary General Antonio Guterres, is a system-wide push to streamline operations, sharpen impact, and ठीक है. समझ में आ गई ये चीज़? I hope this is clear. See, this was the difference between ballistic and cruise missile. ठीक है. अब ये मैंने क्यों लिखा है? Okay, so we are having some points over here. We'll be seeing that, and then we'll be coming to the map also. ठीक है. Let's see about. Okay, so we'll going to start with our Iran-Israel war. जो अभी भी बहुत ही highlighted है और news में भी है. Let's see some important key facts which can be very relevant for your upcoming prelims. First thing, context देख सकते हैं. इसराइल अंडर ऑपरेशन राइजिंग स्टार. अब एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन गया. ठीक है. ऑपरेशन राइजिंग स्टार नहीं, ऑपरेशन राइजिंग लायन launched airstrike and drone attacks on Iran nuclear and military sites to prevent Iran from advancing towards building an atomic weapon. ठीक है. तो इसराइल से लिंक क्या हो जाएगा? ऑपरेशन राइजिंग लायन किस तरफ? ईरान के लिए था ये इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन. ठीक है. अब इसका न्यूज़ क्या है? इन रिटेलिएशन ईरान लॉन्च्ड वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स. अब अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल आया है इसके बारे में हमें स्टैटिक पता होना चाहिए. ठीक है. ईरान लॉन्च्ड वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एट इसराइल अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3. Operation True Promise 3 is linked with Iran in retaliation of Israel, and Israel का क्या है? Operation Rising Lion. ठीक है. नाइस. Causing explosion over Jerusalem and Tel Aviv. अब पहले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट थिंग, बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ पैराबोलिक आर्क लाइक ट्रेजेक्टरी. अब क्या होता है? मान लो यहाँ से मिसाइल रिलीज हुआ तो ये ऊपर तक जाएगा और देन अपने टारगेट पे हिट करेगा. Even it can cross it can go into the space and again target on its particular location. And cruise missile flies in a straight low altitude path. अब मान लो ये लोकेशन है. ठीक है. अब it will not go that much above, it will go very nearby, like near to the surface, and it will strike in a straight line. ठीक है. अब फ्लाइट का फेज देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग, बूस्ट हुआ, मिड कोर्स एंड री एंट्री अगेन. मिड कोर्स मतलब स्पेस में गया एंड देन री एंट्री अगेन. अब ये क्या होता है? क्रूज मिसाइल कंटिन्यूअस पावर्ड फ्लाइट थ्रू आउट. कंटिन्यूअस पावर्ड फ्लाइट थ्रू आउट. स्पीड वेरी हाई. ठीक है. ऑफन हाइपरसोनिक. ये लोअर होता है. रेंज देख लेते हैं. वेरी लॉन्ग रेंज. इंटरकॉन्टिनेंटल. इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल वी आर रेफरिंग विद बैलिस्टिक मिसाइल. यू मस्ट हैव नोन इंटरकॉन्टिनेंटल ICBMs. It's called intercontinental ballistic missiles. This is very short to medium range, generally lower than the ballistic one. अब altitude देख लेते हैं. It goes in the outer space before coming down. Flies within the atmosphere. ये atmosphere के अंदर ही रहता है. कौन सा cruise missile? I hope this is clear. Guidance देख लेते हैं. Mostly guided in initial phase, follows gravity later. पहले में गाइड करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद जैसे ही ये डाउनवर्ड प्रोजेक्ट में आएगा अपने आप ग्रेविटी के थ्रू स्ट्राइक करेगा. I hope this is clear. Now डिटेक्शन देख लेना. इजी टू डिटेक्ट क्योंकि हायर लोकेशन पे होता है. एग्जांपल्स देख लेते हैं. अग्नि सीरीज एंड पृथ्वी सीरीज इज आर बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल कौन से हैं? इट इज ब्रह्मोस एंड निर्भय. सी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ. ऑपरेशन सिंदूर में मेनी डायनेमिक थिंग्स हम लोगों ने पढ़ा. ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, नेवल डिफेंस पढ़ा. एवरीथिंग वी रेड. बट
क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ के स्टैटिक कॉन्सेप्ट से, कि ब्रह्मोस से तो ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ब्रह्मोस का रेफरेंस फिलीपींस के साथ किया गया था, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इंटरचेंज कर दिया गया हमारा किसके साथ, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इंटरचेंज करके ऑप्शन बना हुआ था, रेंज के बारे में पूछा हुआ था, और इंडिया रशिया का लिंकेजेस ऑल्सो ब्रह्मोस के साथ लिंक किया जाता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। अब दिस वाज क्लियर। अब नाउ यहाँ पे हम लोग थे, ईरान में लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल अंडर द ऑपरेशन ऑफ ट्रू प्रॉमिस। आई होप दिस वाज क्लियर। अब एक बार रीजन समझ लेते हैं। सी, रीजन समझोगे ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, और आप इसको अपने पर्टिकुलर आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अपने मीन्स के आंसर में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो इसको। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पहला, फर्स्ट थिंग, रीजंस क्या है। लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी। फर्स्ट, ईरान डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एंड सपोर्ट्स एंटी इसराइल ग्रुप्स। हिजबुल्लाह एंड हमास को ईरान सपोर्ट करता है, एंड इट डज नॉट like recognize Israel। ठीक है, Israel see Iran as its principal regional threat। रिटेलिएशन साइकिल देख लेते हैं। इसराइल ने अप्रैल 2024 में स्ट्राइक किया ईरानियन कॉन्सुलेट जो दमास्कस में है। दमास्कस कहाँ है, तो सीरिया में है। अब अगर सीरिया का आया है तो सीरिया का मैपिंग देखेंगे फिर, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले सीरिया यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या है बताओ मेरे को, जॉर्डन। सीरिया ऑल्सो, सॉरी, सीरिया इज हियर, तो सीरिया इज लिंक्ड विथ इसराइल ऑल्सो, जॉर्डन ऑल्सो, एंड इराक ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ गया। सीरिया ऊपर टर्की के साथ भी लिंक करता है, बॉर्डर शेयर करता है। फाइन, ठीक है। दमास्कस पे इसराइल ने, दमास्कस में जो ईरानियन कंसुलेट है उस पे इसराइल ने अटैक किया, दैट किल्ड सीनियर IRGC कमांडर्स। ईरान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन इसराइल। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। इसराइल बिलीव्स ईरान इज एजिंग क्लोजर टू अ न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। ठीक है, नाउ रीजनल पावर rivalry। फर्स्ट थिंग, बोथ नेशन compete to influence in Syria, Lebanon, Iraq, Gaza and Red Sea। अब दोनों अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं उस रीजन में। ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। सॉरी, प्रॉक्सी नेटवर्क एस्केलेशन। फर्स्ट थिंग, ईरान बैक मिलिशिया कौन कौन से हैं। हुतीज रेबल, हुतीज आपको रेफरेंस मिला होगा यमन में भी। ठीक है, हुतीज और हिजबुल्लाह सपोर्टेड बाय ईरान ट्रिगर्ड बॉर्डर कन्फ्रंट्रेशन। अब दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसको JCPOA भी कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये कब बना, कब आया, 2015 में आया। किन के बीच में होता है, P5+1। अब P5 कौन हो गया, परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC +1। अब इसमें +1 कौन है ये देख लो एक बार। चाइना पता है परमानेंट में है, फ्रांस पता है, रशिया पता है, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट, ओनली जर्मनी एडेड है। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन और ईरान, इनके बीच में एक डील साइन हुआ, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या कहा गया कि ईरान विल रिस्ट्रिक्ट इट्स यूरेनियम इनरिचमेंट, जिससे वो अपने वेपन नहीं डेवलप कर पाएंगे। सेंट्रीफ्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, एंड अलाउ IAEA टू इंस्पेक्ट द फैसिलिटीज। ठीक है, नाउ ब्रेक कब हुआ, 2018 में जब आते हैं, जब ट्रम्प आए, ही विड्रो एंड रीइम्पोज सैंक्शन अगेन ऑन ईरान। यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन करने के बाद, इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ईरान के ऊपर के सैंक्शंस हट गए थे। बट जैसे ही 2018 में ट्रम्प आते हैं, ही विड्रो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट एंड अगेन सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन ईरान। ठीक है, ईरान ग्रेजुअली रिज्यूम्ड हायर एनरिचमेंट। ठीक है, अप टू 60% एनरिच उन्होंने कर लिया अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया। करंट स्टेटस क्या है, JCPOA इज इफेक्टिवली डिफंक्ट। Iran has expanded its nuclear capability beyond the original limits। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। Now, the major point which we know from here that can come into our examination, first, Israel launched Operation Rising Lion and Iran launched Operation True Promise 3। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुआ है, तो you need to know about ballistic and cruise missile। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैलिस्टिक क्या होता है, जो पैराबोलिक शेप में आता है, वो स्पेस में भी जाता है, देन स्ट्राइक सेट लोकेशन। क्रूज मिसाइल इट्स अ नॉर्मल पाथवे पे जाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल का हाइट लंबा होता है, हाइट ज्यादा हो सकता है। क्रूज नियर टू द ग्राउंड जाता है। ये कौन कौन से आते हैं इसमें, तो अग्नि एंड पृथ्वी एक एग्जाम्पल है, और क्रूज में क्या है, ब्रह्मोस एंड निर्भय। आई होप दिस वाज क्लियर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो 2015 में बिटवीन P5+1 कंट्रीज एंड ईरान। P5+1 में जर्मनी भी आ जाएगा, एंड परमानेंट सिक्योरिटी कमीशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन में जो भी हैं उनके 5 मेंबर्स। एक बार ये मैप देख लो जरूर। फर्स्ट थिंग, दिस वन इज सीरिया, दिस वन इज लेबनान, दिस वन इज इसराइल। ये इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इसराइल आपको पता है, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ईरान का सॉरी, ईरान के वो पॉइंट जो जहाँ पे स्ट्राइक हुआ है। फर्स्ट इन तब्रीज, यू नीड टू नो तब्रीज
तेहरान तो पता ही है, नाटन्स, you need to know नाटन्स, इस्फहान, इस्फहान एंड अरक, अरक, अरक। तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ईरान का आप एक रफ मैप बनाएंगे, उसके ऊपर पहला तबरीज लिखेंगे, सेकंड तेहरान, थर्ड नाटन्स, it is Arak and Ifasan, Isfahan, Isfahan, and this one is Karmash, Karmansha, Karmasha, Karmasha. I hope this was clear. एक बार इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एंड लेट्स सी दिस मैप। ये ईरान का एक फिजिकल मैप है, इसमें हम लोग कुछ और फिजिकल मैपिंग भी कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन इससे आए, नॉट रिलेटेड टू वॉर पर से, नॉट रिलेटेड टू एनी करंट न्यूज, बट रिलेटेड टू इट्स फिजिकल स्टैटिक कॉन्सेप्ट, देन वी नीड टू नो दैट हम लोग सॉल्व करने के लिए केपेबल हो। फर्स्ट थिंग, ईरान के जस्ट ऊपर क्या है, कैस्पियन सी, आपको पता होना चाहिए। इट शेयर्स बॉर्डर बाउंड्री विद अजरबैजान आल्सो, अर्मेनिया आल्सो, टर्की आल्सो। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेक उर्मिया इज हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक उर्मिया, ठीक है, इराक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिस वन इज एल्बरूज माउंटेन, एल्बरूज माउंटेन समझ में आ गया। नाउ दिस इज जैग्रोज, ठीक है, एल्बरूज ऊपर, जैग्रोज नीचे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मिनट, बुशहर, ठीक है, एंड दिस इज पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पे अभी शिप्स आना थोड़ा बंद किया गया है, जिसकी वजह से एलपीजी इश्यूज आ रहे हैं। अब दिस इज क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कैस्पियन सी, ईरान को सेंट्रल पॉइंट बनाओ। अब सोचो ईरान के ऊपर वी आर हैविंग कैस्पियन सी, ईरान शेयर्स बॉर्डर बाउंड्री विद अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, तीन ऊपर हो गए, एक इधर इराक हो गया, जस्ट यहाँ पे है क्या, लेक उर्मिया है, ठीक है। कम हियर, वी आर हैविंग एल्बरूज माउंटेन एंड वी आर हैविंग जैग्रोज माउंटेन, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, बुशेर, बंदर अब्बास, एंड दिस वाज होमरूज, ठीक है, समझ में आ गया। जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट एंड रिवाइजिंग इट, एंड यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर मतलब स्क्रीन, ठीक है। नाउ एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के डिफरेंस पे। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ विल बी सीइंग अबाउट सुडान सिविलियन वॉर, ठीक है। अब अगर सुडान के बारे में आया है, वी विल अगेन नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू जस्ट द न्यूज, विल बी सीइंग द मैपिंग हियर, विल बी सीइंग द पॉलिटिकल मैप एंड विल बी सीइंग द फिजिकल मैप आल्सो, ठीक है। एंड देन if we are talking about Sudan, तो why just restrict about one country? Let's see other countries also जहां से हमारे क्वेश्चंस बनने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अफ्रीका से क्वेश्चंस आता है, बिकॉज इसको लोग जनरली कम पढ़ते हैं ना, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फर्स्ट थिंग, सुडान सिविल वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है ना सुडान में, कैप्चर्ड अल फसीर, अल फशेर, ठीक है, आई एम सो सॉरी इफ अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो रहा हूँ, इट इज कैप्चर्ड अल फसेर, ठीक है। अब अल फसेर आया है, दिस वन पीआईएन मतलब प्लेसेस इन न्यूज, इसको करके जाएंगे, कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो paramilitary rapid support force of Sudan captured Al-Fasir from the army after 18 months that trapped 10,000 of civilians in the city of Darfur. अब एक और न्यूज, फर्स्ट इज Al-Fasir, Al-Fasir दारफुर के अंदर एक सिटी को कैप्चर किया गया, Al-Fasir दैट वाज अंडर आर्मी, सुडान आर्मी। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इज रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड सेकंड इज सुडान आर्मी। अब दोनों के बीच में क्लैश होता है, क्लैश होने के बाद जो आर्मी का एक प्लेस था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको कैप्चर्ड बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है। न्यूज देख लेते हैं। अल फसीर, वन ऑफ सुडान्स लार्जेस्ट सिटी, सर्व्ड एज द फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड टू द सुडानीज आर्मीज, ठीक है, इन नॉर्थ डारफुर, यानी डारफुर के अंदर, नॉर्थ डारफुर के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है अल फशीर। अल फशीर दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सुडान आर्मी, उसको कैप्चर कर लिया गया है बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ सुडान सिविल वॉर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सी, जो भी सिविल वॉर हुआ है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उससे न्यूज आते हैं, न्यूज इन द सेंस न्यूज में भी रहता है और क्वेश्चन बन के आते हैं। ब्रीफ देख लो। द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन इन अप्रैल 2023 बिटवीन द सुडानीज आर्म फोर्स लेड बाय जनरल, ठीक है, जनरल अब्देल एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स लेड बाय जनरल मोहम्मद हमदान, ठीक है। अब इसके बारे में पहले न्यूज देखते हैं, उसके बाद मैपिंग पे आएंगे। फर्स्ट थिंग, by 2024 and 2025, the war escalated into one of the worst humanitarian crises, with fighting spread beyond Khartoum to Darfur, Kordofan, Gajira and Port Sudan. अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, this is very important for your place in news. It will come like Khartoum, it is in Sudan, you need to know. Again, Kordofan again, Gajira and Port Sudan. समझ में आ गया, ठीक है। यूएन रिपोर्ट्स ओवर 12 मिलियन डिस्प्लेस्ड इंक्लूडिंग 2 मिलियन रिफ्यूजी, ठीक है, ये तो आप समझ लोगे। ज्योग्राफी,
सुडान बॉर्डर 7 कंट्रीज एंड रेड सी, ठीक है। रिवर नाइल, ब्लू एंड व्हाइट नाइल एक तरफ मीट होता है, विल बी सीइंग दैट इन अ मैप आल्सो इन अबव। खार्तूम में जाके मिलता है ये चीज, ठीक है। इंडिया लिंक क्या हो गया, ऑपरेशन कावेरी, अगेन ऑपरेशन एक बार आ चुका ऑलरेडी। ऑपरेशन कावेरी जो इंडिया ने लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियंस एंड सिविलियन इंडियन बिकॉज फ्रॉम सुडान ड्यू टू देयर सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी लिंक्ड विद इंडिया। नाउ दिस मैप इज इंपॉर्टेंट। दिस ये ऑरेंज कलर का जो है ना, इट इज सपोर्टेड बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड दिस कलर इट इज सपोर्टेड बाय सुडानी आर्मी। आप ये देख रहे हो ना, अल फसीद यहाँ पे जिसके बारे में पता चला, जो दैट वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सुडानीज आर्मी बट इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है। कॉर्दोफॉन हम लोगों ने पढ़ लिया, खार्तूम हम लोगों ने पढ़ा, पोर्ट सुडान यहाँ है, रेड सी इधर है, डार्फूर रीजन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। नाउ कम टू द मैप फर्स्ट, विल बी सीइंग फर्स्ट सुडान वाला मैप देख लेते हैं। See, this is South Darfur, this is North Darfur. We read that North Darfur में एक सिटी है अल फसीर जिसमें रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कैप्चर किया है, तो नॉर्थ डार्फुर अल फसीर। तो डार्फुर एक रीजन समझ लो, नॉर्थ साउथ से तो अब समझ में आ जाएगा, डार्फुर लोकेटेड विद सुडान, डार्फुर लोकेटेड विद सुडान, सुडान, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक रीजन ये है ना, अबे अबे एक बार मैं रब कर लेता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। अबे रीजन, दिस इज अ फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन सुडान एंड साउथ सुडान, ठीक है। एबे रीजन यहाँ पे एंड ये हलबीब ट्रायंगल रीजन, इट्स ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस वन, जस्ट ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुडान एंड इजिप्ट। हियर वी वर हैविंग एबे रीजन। अब देख रहे होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एंड दिस वन इज हलबीब and this one is Abyei region. Abyei conflict between Sudan and South Sudan, and this Halabib region conflict between Egypt and Sudan. I hope this is clear. Now come here. First thing, Darfur region समझ में आ गया, it is in Sudan. Now this is Kordofan जो हम लोग पढ़ रहे थे, Kordofan again broke into north and south, ठीक है। खार्तूम आपको पता है। अब ये चीज देख लो यहाँ पे, see this point, this place is important, रबाक, आप नोट कर लेंगे, रबाक is in Sudan, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ब्लू नाइल जो है ना, इथियोपिया से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रोजाइस डैम, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है, दिस इज खार्तूम एंड दिस इज व्हाइट नाइल, ठीक है। व्हाइट नाइल यहाँ तक आ रहा है, खार्तूम में ये मिक्स होते हैं और नाइल रिवर इट मूव्स अहेड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस हमने जो पढ़ा वो है डार्फूर, सेकंड थिंग इज लाइक कोर्डोफान, third is Khartoum, and this one is again important, Kassala. Kassala, whenever it is coming, you need to know that it is linked with Sudan. I hope this much is clear. You can also read about Sennar, ठीक है। See, whenever you are doing this much depth mapping, you will never forget first. You will be in a better position apart from your other aspirants who are giving this particular examination, and you can save a lot of time, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, दारफूर, कोर्डोफान, खार्तूम, कसाला, सेनार, और यहाँ पे खार्तूम में मिक्स होता है व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, जब ये नाइल रिवर जा रहा है तो हेयर वी आर हैविंग लेक नूबिया, नूबियन डेजर्ट भी है, लेक नूबिया, आप लेक नूबिया याद रखेंगे बिकॉज अरल सी एक बार आ चुका है, लेक ओडेगा हम लोगों ने पढ़ा था, लेक बालकश हम लोगों ने पढ़ा है, लेक हुरॉन पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत कुछ मैपिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो प्लीज जस्ट रिवाइज दैट। हलबीब बता दिया आपको मैंने, और यहाँ पे एबे रीजन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुडान एंड साउथ सुडान। लेट्स कम ओवर हियर एंड सी द फिजिकल मैप आल्सो। डार्फूर रीजन पता चल गया, जो यहाँ पे मैप में बताया था, दिस इज मारा माउंटेन्स, दिस वन इज नूबा माउंटेन्स, एंड हियर ओनली वी आर हैविंग दैट एबे रीजन, ठीक है। दोनों रिवर्स आ रहे हैं, खार्तूम में मिल रहे हैं, एंड अगेन दिस वन वाज लेक नूबिया, ठीक है, समझ में आ गया ये। I hope this is clear. This place is also important, इसको भी मार्क कर लेना प्लीज। अटबारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कसाला इंपॉर्टेंट है, सेनार जो हम लोगों ने पढ़ा था, खार्तूम पढ़ा था, कोर्डोफान पढ़ा था, डार्फूर पढ़ा था, अल फशीर जिसको कैप्चर किया गया, ठीक है। एक बार इसकी मैपिंग्स को देख लो थोड़ा जल्दी से। सुडान को सेंटर पॉइंट बनाएंगे, अब 7 कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट इज इजिप्ट, लीबिया, लीबिया भूलना नहीं, छोटा सा प्लेस है लेकिन अगेन है, ठीक है। लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, एथियोपिया एंड एरिट्रिया। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। अब जब भी आप पॉलिटिकल मैप पढ़ें अफ्रीका का, प्लीज
इस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करें, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। एक बार आपके दिमाग में सब चला जाएगा कि कहाँ पे है। सी वी हैव ऑलरेडी सीन नाम्बिया, यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किया गया था जब पीएम मोदी वाज ऑन हिज फिफ्थ 5 कंट्रीज विजिट पे थे। नामीबिया समझ में आ गया, अंगोला है ऊपर में, जाम्बिया है। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नामीबिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद जिम्बाब्वे, यहाँ पे नहीं शेयर करता, तो याद रखेंगे, ठीक है। सो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप और इसको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। you I have already told you that Liberia got into non-permanent member of UNSC, तो ये याद रखेंगे। घाना के बारे में अगेन बताया था, लेक वोल्टा है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू दिस घाना प्लेस, ठीक है। और कुछ कुछ देख लो। फर्स्ट थिंग, माली केम आउट फ्रॉम विच रीजन, विच जो इकोवॉस जो हम लोग पढ़ रहे थे, इको वॉस, इससे निकल गए हैं। माली निकल गए, बुर्किना फासो निकल गए, बिकॉज यहाँ पे नाइगर, तीन कंट्री, माली, बुर्किना फासो एंड सॉरी नॉट नाइजीरिया नहीं, माली, नाइगर एंड बुर्किना फासो, दे केम आउट फ्रॉम इकोवॉस एंड दे फॉर्म देयर अगेन अलायंस ऑफ साहेल स्टेट इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज दिस। ये हो जाएगा, ठीक है। मैप का प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को कर लीजिएगा। एंड एक चीज याद है, मॉरिशस was the first West African country with which we have signed our CCPA, जो मॉरिशस का मैपिंग और हम लोग डिटेल्स देख रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर। सेशल्स है, कॉमरोस है, मॉरिशस है, ये ऑलरेडी हो चुका है। नाउ विल बी सीइंग अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट से दैट दे हैव एग्रीड अ टेम्पररी सीज़फायर, इन्होंने एग्री किया था। एक बार न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। इंटेंस बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं इन लोग के बीच में। कोर इश्यूज पहले समझ लो, 4-5 इश्यूज हैं। जब आप इश्यूज समझ लोगे तो इट विल बिकम अ स्टोरी लाइन फॉर यू एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फर्स्ट थिंग, टीटीपी सेफ हेवंस। पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी लीडर्स ऑपरेट फ्रीली इनसाइड अफगानिस्तान एंड इट इज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान। दुरंत लाइन डिस्प्यूट क्या है? अफगानिस्तान जो है, इट हैज नेवर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द दुरंत लाइन एज ऑफिशियल बॉर्डर। तो दुरंत लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान ने अभी तक फॉर्मली नहीं एक्सेप्ट किया है। द सेकंड पॉइंट इज तालिबान एंड सिविलियन अफगान गवर्नमेंट्स अपोज पाकिस्तान स्टार्टेड फेंसिंग क्रिएटिंग कांस्टेंट फ्लैश पॉइंट, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। रिफ्यूजी क्राइसिस है, पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानिस्तान रिफ्यूजीज आए हैं और उन्होंने जब पाकिस्तान ने फोर्स डिपोर्टेशन किया, दैट बिकम अ क्लैश पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। द फोर्थ पॉइंट इज पाकिस्तान एलिजेस अफगान सॉइल इज यूज्ड अगेंस्ट इट, ठीक है। वहां से पाकिस्तान के ऊपर वॉर होता है, हमला होता है, ये इनका कहना है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड टेंशन, ठीक है। अफगानिस्तान क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान फॉर ट्रेड रूट्स पॉलिटिकल, ठीक है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम है। अब जब अफगानिस्तान के बारे में है तो विल बी सीइंग द सम मैपिंग्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ये दुरंत लाइन है जिसको अफगानिस्तान ने फॉर्मली नहीं रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। दिस प्लेस इज हेलमांद, तो हेलमांद इज लिंक्ड विद अफगानिस्तान, ठीक है। कांधार आपको पता ही होगा, हेलमांद आपको पता कर लेना यहाँ से, ठीक है। दिस इज कुनार प्लेस, कुनार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुनार, हेलमांद एंड कंधार, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार थोड़ा सा फिजिकल मैपिंग में देख लेते हैं। सी, ये अफगानिस्तान हो गया। हेरात, इट इज इंपॉर्टेंट। कंधार मैंने आपको बता दिया। दिस इज फराह रिवर, फराह रिवर अगेन इट वाज इन न्यूज। हरी रिवर, फराह रिवर, आई होप दिस इज क्लियर। बामियान, इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है, ये पता होगा। मज़ार शरीफ यहाँ पे है। बामियान हो गया। हिंदू कुश माउंटेन्स एंड दिस इज हेरात एंड कंधार, आई होप दिस इज क्लियर। शेयरिंग बॉर्डर विद ताजिकिस्तान एंड दिस इज तुर्कमेनिस्तान एंड दिस इज ईरान also with Pakistan. I hope this is clear. ठीक है. Now we are moving to our next topic. It is again very very important topic. मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि हम लोगों ने, इंडिया ने ताजिकिस्तान में अपना एक लाइक एयरबेस स्टैब्लिश किया है, ठीक है। एयरबेस स्टैब्लिश किया था, दैट इज आईनी एयरबेस, ठीक है। आईनी एयरबेस का थोड़ा सा ब्रीफ समझ लो। ये हमारा पहला ऐसा ओवरसी मिलिट्री एयरबेस था। नाउ हम लोग, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया हैज विड्रॉन फ्रॉम दैट। जो हमारा बेस हुआ करता था, इंडियन मिलिट्री बेस, वी हैव विड्रॉन फ्रॉम दैट। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सी, नाउ आईनी बेस नियर दुशानबे, ताजिकिस्तान वाज ओरिजिनली अ सोवियत एयर फैसिलिटी। पहले सोवियत एयर फैसिलिटी हुआ करता था। उसके बाद जैसे ही सोवियत कोलैप्स हुआ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड करने लग गया। तो इन 2002 द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, advised by some great minds, they said that we can quickly move and partner with Tajikistan and use this particular place to get more intelligence about Afghanistan and Pakistan.
that time only we had a कारगिल वॉर हुआ 1999 में, जिसके वजह से कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये कहा कि वी वर हैविंग सम इंटेलिजेंस गैप था। अब इंटेलिजेंस गैप को ठीक करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथनिंग इंडियाज प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया वाज सीन एज द वे टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग। सो वी गॉट इनटू आईनी बेस विथ हेल्प ऑफ रशिया। रशिया ने ये कहा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हेल्प इंडिया टू गेट दिस पर्टिकुलर एयर बेस। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेना अपने से, आप भी समझ जाओगे, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ बता रहा हूँ। ठीक है, इंडिया सीकिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड काउंटर बैलेंस टू पाकिस्तान अफगानिस्तान volatility in 2002 reached an understanding with Tajikistan with Russia's concurrence to renovate and modernize आईनी बेस। ठीक है, अब इसमें BRO जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है अपग्रेडेड द रनवे, इतना रनवे हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, ट्रैफिक कंट्रोल यूज के ब्लास्ट पेंस एंड ऑल दैट। ठीक है, इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओवरसी मिलिट्री फुटहोल्ड although no fighter jets were deployed over there. ठीक है, India maintained a technical staff and support team. Now we have come back, like it has been like we have withdrawn from here. Reasons, बहुत सारे reasons दिए गए। First कि अब ये तालिबान के कंट्रोल में है। Second that we are having good intelligence over there. Third अब इसका कंट्रोल थोड़ा उतना feasible नहीं रह रहा है। Fourth it is getting pressurized by China and Russia. तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं। दिस हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। फर्स्ट थिंग, इंडिया ऑफिशियली ऑल्सो एस्टैब्लिश अ मिलिट्री हॉस्पिटल फॉर खोर। अब ये अगर नाम आया है फॉर खोर अगर ये नाम आया है तो इट कैन कम एज अ प्लेस इन न्यूज। ठीक है, तो इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री हॉस्पिटल इन फरखोर तजाकिस्तान, नॉट ओनली टू ट्रीट मेंबर्स ऑफ नॉर्दर्न अलायंस, ये समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऑल्सो this particular air base in 2021 was used to evacuate Indian citizens and officials from Afghanistan. जब अफगानिस्तान में तालिबान का रेन आया 2021 में, then this particular air base which is in ताजिकिस्तान, दुशानबे के बगल में, उसको हम लोगों ने यूज किया था इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार सेंट्रल एशिया का मैपिंग भी देख लो। अगर हम लोगों ने पढ़ाई किया है तजाकिस्तान, यहाँ पे हमारा आईनी बेस हुआ करता था, अब ये नहीं है, तो इसका यूज किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के से जो इंटेलिजेंस आ रहा है उसको हम लोग गैदर करके इंडिया को भेज पाए। एक ये भी रीजन बताया जा रहा है, नॉट द ओनली रीजन बट ऑल्सो अ रीजन। ठीक, तो एक बार इसको देख लेते हैं। नाउ विल कीप उज्बेकिस्तान एज अ सेंट्रल पॉइंट। ऊपर क्या है, कजाकिस्तान है, मैंने आपको पहले बताया था इस तरह से पढ़ाई करना है। दिस इज अराल सी, ऑलरेडी एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है। इधर जाएंगे, वी आर हैविंग यूरल सी। नीचे आते हैं, वी आर हैविंग कैस्पियन सी। यूरल रिवर है, दिस इज कैस्पियन सी, दिस इज अगेन अराल सी। ठीक है, तो ये समझ लो उज्बेकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद कजाकिस्तान। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना कि तुर्कमेनिस्तान नियर बाई टू टर्की, सो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान शेयर्स बाउंड्री विथ Turkmenistan, also with Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. I guess Uzbekistan is the only one place which is sharing border with all the स्थान जो भी places है ना उसके साथ। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ हो गया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अफगानिस्तान से ऊपर जाते हैं, ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, बट नॉट विद किर्गिस्तान, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा। ठीक है, and Kyrgyzstan is not sharing border with Turkmenistan. I hope this is clear. Now come to a particular point, which is this information, US birthright citizenship context क्या है ये समझते हैं। First thing, the United States president, I often confuse between this and this, I'm so sorry for that. The United States president signed an executive order, उन्होंने साइन किया to end birthright citizenship। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विल बी एंडिंग बर्थराइट सिटीजनशिप। आई हैव टेकन वन इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, ये एक न्यूज का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। दिस इज अ इवॉल्विंग इशू, सो इस पे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा लिमिटेड है, बट अगर स्टैटिक देखा जाए तो स्टैटिक आ सकता है, तो फॉर दैट स्टैटिक आई हैव टेकन दिस ऑल्सो, तो स्टैटिक पढ़ लेंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज यूएस बर्थराइट सिटीजनशिप केस, व्हाई ट्रम्प इज अटेंडिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स। तो इससे फाइनल वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, बट विल सी व्हाट इट इज। फर्स्ट थिंग अबाउट बर्थराइट सिटीजनशिप, 14th अमेंडमेंट जो है यूएस में रेटिफाइड इन 1868, so that's the reason I have taken the case name, ये case name। ठीक है, 14th amendment ratified in 1868। The 14th amendment of US Constitution states that all person born or naturalized in United States
एंड सब्जेक्ट टू हिज जुरिसडिक्शन आर सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब एक चीज समझो, बाहर जैसे बाहर से कोई व्यक्ति अगर यूएस आ रहा है और वहां पे दे गिव बर्थ टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड, दैट विल बिकम अ सिटीजन ऑफ यूएस। ये था हमारा बर्थ राइट सिटीजनशिप जो 14th अमेंडमेंट थ्रू आया था, दैट गॉट कैंसल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, बट नाउ अगेन इट इज इन द कोर्ट। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लो। Ratified in 1868, the 14th Amendment of US Constitution states that all the person born or naturalized in United States and subjects to its jurisdiction are citizens of the country। ठीक है, बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ग्रांट सिटीजनशिप एट द बर्थ। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने ब्लैंक शीट में नोट करेंगे। फर्स्ट इज जस्ट सोली एंड सेकंड इज जस्ट सैंग्विटिस सैंग्विनिस। एक मिनट, एक बार इसको रब कर लेता हूँ। इट इज सैंग्विनिस। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर बर्थ राइट के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, टू फॉर्म्स है, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनिस। एक बार एक्सप्लेन कर लूँ इसको। जस्ट सोली मतलब सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस। ठीक है, जस्ट सैंग्विनिस मतलब होता है सिटीजनशिप बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री फॉर चिल्ड्रन बोर्न अब्रॉड टू यूएस सिटीजन। अब कोई सिटीजन यूएस का बाहर में है एंड दे गेव बर्थ टू अ पर्टिकुलर बेबी, देन इट विल बिकम अ सिटीजन ऑफ यूएस। जस्ट सोली क्या होता है? जस्ट सोली इट मींस कि सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जो अभी बर्थ राइट सिटीजनशिप है ना, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी बाहर का यूएस में आके लाइक बेबी हो रहा है तो दैट बेबी विल अ सिटीजन ऑफ यूएस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वॉन्ग किम आर्क केस, अब ये कैन डायरेक्टली कम एज अ like question to you in our upcoming prelims, just because it is a very static concept। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। वॉन्ग किम आर्क केस, the Supreme Court established that 14th Amendment guarantees citizenship to children born in US to foreign parents। ठीक है, ये केस के थ्रू ही ये कहा गया, 14th Amendment को रेटिफाई किया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इवॉल्विंग इशू है तो थोड़ा सा इस पे सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे। नाउ विल बी सीइंग अबाउट गोल्ड कार्ड वीजा। गोल्ड कार्ड वीजा क्या होता है, सिर्फ बहुत ही ब्रीफ है ये क्वेश्चंस। सीइंग द पीवाईक्यू ट्रेंड, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आ जाए, बट थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। In a significant shift in US immigration policy, President Donald Trump announced that the imminent launch of the Gold Card Visa program। क्या होता है, जो it offers foreign nationals a pathway to permanent residency and eventually citizenship in exchange of $5 million। एक बार आप प्लीज इसको पढ़ लेना। It is not very important, just go through this, just have a glance over this particular news। I do not think that this news is that much important। ठीक है, now we'll be seeing Murugan Temple, Indonesia। This news we are going to cover now। ठीक है, so now we are going to start with our next topic, which is Murugan Temple, which has been inaugurated in Indonesia। ठीक है, फर्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन महाकुंभ अभिषेकम सेरेमनी ऑफ श्री सनातन धर्म आलयम, आलयम आलयम कहते हैं, ऑल्सो नोन एज जकार्ता मुरुगन टेम्पल, इंडोनेशिया का फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन जी। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेते पहले क्या है। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड इट वर्चुअली। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन बताया गया इंडिया एंड इंडोनेशिया के बारे में। अब अगर इंडोनेशिया के बारे में आया हुआ है तो इट्स आवर ड्यूटी टू गो एंड सी द मैप। एक बार फिजिकल पॉलिटिकल मैप देख लेंगे, एक बार फिजिकल मैप देख लेंगे। इससे जो भी हमारे सीज हैं, जो भी हमारे क्रॉसेस है, पासेस है, उसको भी एक बार कवर कर लेंगे तो क्या होगा कि करंट न्यूज से वी आर लिंकिंग विद स्टैटिक कॉन्सेप्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हॉलिस्टिक स्टडीज। ठीक है, तो पहला चीज, in the virtual gathering he discussed about the historical and cultural connection between India and Indonesia। Apart from that, the temple is seen as a beacon of spirituality, culture and unity, and also express heartfelt connection to the event। ठीक है, समझ में आ गया। तो जकार्ता मुरुगन टेम्पल फाउंडेशन स्टोन वाज लेड ऑन, कब लेड किया गया था, 14 Feb 2020 with a puja led by the revered priest from India and Malaysia। ठीक है, समझ में आ गया। The temple stands as a remarkable confluence of Indian, Javanese and Balinese tradition while embracing the values of पंचशील। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए। द महाकुंभ अभिषेकम सेरेमनी इज बीइंग कंडक्टेड इन इंडोनेशिया विद द सपोर्ट ऑफ 72 गुरुकुल्स फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब एक बार लॉर्ड मुरुगन जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज सिंबलाइजिंग करेज, विजडम एंड विक्ट्री। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कार्तिकेय, स्कंद और सुब्रमण्यम। ही इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ठीक है, नॉर्मल नाउ इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड
श्रीलंका ऑल होल्ड ग्रेट रिगार्ड टू गॉड कार्तिकेय। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मॉरिशस से क्या रिकॉल हो रहा है, रिकॉल करके बताएंगे। फर्स्ट वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन CECPA विथ इंडिया। अब सिंगापुर से कनेक्ट करो, लार्जेस्ट FDI। मलेशिया से कुछ लिंक करो, बताओ मलेशिया टच विथ थाईलैंड। ठीक है, मलेशिया एशियान में आता है बट नॉट इन बिम्स्टेक। रियूनियन आइलैंड से लिंक करो, इट इज फ्रांस। सो फ्रांस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, श्रीलंका से लिंक करो, वी हैव लर्न अबाउट ट्रिंकोमाले प्रोजेक्ट। आई गेस दिस इज द वे in which we will recall, in which we will revise। ठीक है, अब थोड़ा सा मैपिंग पार्ट देख लिया जाए। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे म्यांमार वी हैव ऑलरेडी डन। थाईलैंड डू नॉट टच बॉर्डर विद चाइना, पता था। लाओस डू टच, कंबोडिया डू नॉट टच, एंड वियतनाम अगेन डू टच, बट वियतनाम डू नॉट टच बॉर्डर विद म्यांमार, याद रखेंगे। ठीक है, अब नीचे आते, थाईलैंड यहाँ पे था, मलेशिया हेयर, ब्रुनेई हेयर। ठीक है, दिस वन इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। ठीक है, समझ में आ गया ये। ईस्ट तिमोर, बताना मेरे को, ईस्ट तिमोर 11th कंट्री इन एशियान ऐड हुआ है। जब पुराने न्यूज जो हम लोगों ने पढ़े उसको अभी करंट के न्यूज से रिकॉल करना शुरू करो, जो भी दिखे रिकॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पूरा एरिया, क्या हो गया, ये पूरा एरिया हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, फिलीपींस ऊपर है। ठीक है, और नीचे में हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब आप मेरे को ये बताना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू पास फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और नॉट, एक बार ये बताएंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द फिजिकल मैपिंग ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सभी को पता है, यहाँ से आए, ये है सिंगापुर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, दिस वन इज सुमात्रा आइलैंड, दिस वन इज योर जावा आइलैंड। ठीक है, जावा में क्या है, जकार्ता है, इतना समझ में आ रहा है। एंड आफ्टर दैट दिस वन अगेन, ये एक्चुअली कलीमतान इन्होंने बोला है कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर कैपिटल टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप। इक्वेटर दिख रहा है ना, इक्वेटर अगेन पासेस फ्रॉम इंडोनेशिया, तो याद रखेंगे इक्वेटर डू नॉट पास फ्रॉम सिंगापुर, ये भी याद रखना पड़ेगा। इक्वेटर डू नॉट पास फ्रॉम मलेशिया, थाईलैंड ऊपर से नहीं पास करता है, समझ में आ रहा है। साउथ चाइना से नीचे, उसके ऊपर सुलू सी, सुलू सी से नीचे सेलब सी, सेलब पैसिफिक ओशन एंड ऑल दैट। एक बार आप लोग प्लीज इसको एक बार रफ डायग्राम बना के याद कर लीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिख गया, यहाँ पे है मकासर स्ट्रेट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मकासर स्ट्रेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार प्लीज इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ सम important सी which we do not generally like revise a lot, which we do not generally prefer revising a lot. Let's revise them first. First, South China Sea, Sulu Sea, Celeb Sea, Celeb से नीचे आते हैं मोलुका सी, मोलुका से नीचे आ रहे हैं बंदा सी, बंदा से अगेन अराफुरा सी, तिमोर सी, एंड दिस इज फ्लोरेस सी। आई गेस दिस इज क्लियर। एक बार इसको याद करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है ब्लैंक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज में एक जगह लिखेंगे, यहाँ पे सुमात्रा, यहाँ पे लिखेंगे जावा आइलैंड। अब इसके नियर बाय देखना शुरू करेंगे, स्टेट ऑफ मलक्का है, मकासर है, यहाँ पे सेलब सी है, यहाँ पे सुलू सी है, यहाँ पे मैफ्लोरेस सी है, यहाँ पे अराफुरा सी है। नाउ दिस वे यू कैन रिमेंबर अ लॉट। ठीक है, आई गेस दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ वेलकम टू मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। मॉनरॉय डॉक्ट्रिन क्या है, सी द करंट न्यूज विल नेवर कम कि ये न्यूज था तो फिर किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। यू विल ऑलवेज गेट कि इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। मॉनरॉय डॉक्ट्रिन इज लिंक्ड विथ यूएस, फर्स्ट थिंग क्लियर है। ठीक है, नाउ द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन है articulated by US President James Monroe in 1823, a significant US foreign policy statement। अब ये क्या बोलता है ना, इसमें ये है कि it will prevent European intervention in America। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है कि it will prevent European intervention in America। Second, it will defend US increasingly imperialistic role the Americans in mid 19th century। I guess that's clear। After that, doctrine has lasting impacts on UN relation with its southern neighbors, reflecting America's desire to assert its influence while advocating for independence and self-determination in the region। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक चीज और देख लो, the United States invoked the Monroe Doctrine to defend its increasingly imperialistic role in the Americas in mid 19th सेंचुरी। समझ में आ गई चीज। तो मॉनरोय डॉक्ट्रिन एसोसिएटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, वी आर हैविंग जिलोंग ट्रीटी। अब जिलोंग ट्रीटी है, अब जिलोंग वर्ड समझो, अब जिलोंग वर्ड है यानी इट मींस कि शायद कोई ना कोई प्लेस हो सकता है ना शायद, तो वी आर हैविंग दिस प्लेस, जिलोंग दिख रहा है, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है जिलोंग। अब जिलोंग का मैपिंग आएगा तो आपको बताना होगा कि किस कंट्री में है। बेलम आपने पता है ना,
बाकू मैंने बताया था, बाकू, बेलम, जिलोंग नाउ। अब ये समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द news of this Geelong Treaty. Recently, Australia and United Kingdom signed a bilateral defense cooperation agreement known as the Geelong Treaty. अब Geelong Treaty between Australia and UK, ठीक है, under the AUKUS Pillar 1 for the next 50 years, ठीक है। अब AUKUS के अंदर, ऑकस में 3 कंट्री, इस 3 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने एक बायलैटरल ट्रीटी साइन किया जिसका नाम है जिलोंग ट्रीटी। समझ में आ गया। एंड दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस कोऑपरेशन। अब थोड़ा सा जिलोंग ट्रीटी के बारे में समझ लेते हैं। ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी। इट एम्स टू क्या करता है, सपोर्ट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द यूरो अटलांटिक एंड इंडो पैसिफिक रीजन। समझ नॉर्मल सा है। इट सीक्स टू फैसिलिटेट the creation of robust trilateral supply chain as well as full collaboration on design, construction, operation, maintenance, and disposal of SSN AUKUS submarines. I guess this is clear. Now, let's see some other news. फर्स्ट, अगर ये ऑकस 1 के अंदर आता है और ऑकस के अंदर 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है एंड यूके है, सॉरी यूएस है, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू नो अबाउट ऑकस एंड रिवाइज अबाउट ऑकस। फर्स्ट थिंग, अब ऑकस के बारे में रिवाइज कर रहे हैं एंड ऑकस इज ऑफन गेट लिंक्ड विद क्वाड। तो नाउ इट्स योर टास्क टू गो एंड रिवाइज द स्टैटिक ऑफ क्वाड, ठीक है। फर्स्ट थिंग विल सी अबाउट ऑकस नाउ। ऑकस क्या है, इसे ट्राइलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी बोथ, एक ये डिफेंस भी है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन किसके, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। कब स्टैब्लिश हुआ, 2021 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब पिलर्स क्या क्या है, फर्स्ट थिंग पिलर 1 एंड पिलर 2 आप समझ जाएंगे। फर्स्ट थिंग रिवॉल्व्स अराउंड द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फॉर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। पहला पिलर ये है कि एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो नेवी हैं उनके लिए एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। सेकंड फोकस क्या है इस पिलर का, सेकंड पिलर क्या है, फोकस इज ऑन कोऑपरेशन इन 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरियाज। 8 एडवांस, देखो नाउ वॉर मोड इज चेंजिंग, फॉर दैट ओनली वी हैव इंट्रोड्यूस यूएनएटी, याद है, गेट रिवाइज, कीप रिवाइजिंग, ये प्रीवियस सेक्शन में मैंने लिया था ना यूएनएटी, याद है। With the current change in the geopolitical and geoeconomics, the UN is going to have a reform in it so that it can meet the current needs of the particular areas. ठीक है, for that they have launched UN 80 reforms के लिए है। 80 means 80th anniversary of United Nations, ठीक है। So 8 advanced military capabilities area कौन कौन से, artificial intelligence, quantum technology, innovation, information sharing, cyber and cyber undersea hypersonic and counter hypersonic and electronic warfare domains, ठीक है, समझ में आ गया। Now let's see about ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जिलोंग शहर में के नाम पे ये ट्रीटी आया है। तो लेट्स सी अबाउट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। नाउ ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपको जिलोंग दिख रहा है, नीचे तास्मानिया है, तास्मानिया के ऊपर बास स्ट्रीट, समझ में आ गया, बास स्ट्रेट, सॉरी स्टेट ऑफ डोवर बताया था मैंने आपको, वो ध्यान रखना। अब नाउ कम हियर, फर्स्ट थिंग इज ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ वेस्ट साइड में है या ईस्ट साइड में, आपको बताना होगा ये चीज। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, मैंने आपको बताया था ये, है ना। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पापुआ न्यू गिनिया ऊपर में है, टॉरेस स्ट्रेट यहाँ पे है एंड बास स्ट्रेट यहाँ पे है, टॉरेस बास। एंड दिस इज आराफुरा सी, आराफुरा सी के ऊपर सेलेब सी देखा था हमने, इधर देखा था हम लोगों ने सुलू सी, है ना, याद हो जाएगा। नाउ ईस्ट तिमोर, तिमोर आपको बताया था मैंने 11th एशियन कंट्री में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम आफ्टर 1999 में कौन आया था, कंबोडिया आया था, ठीक है, समझ में आ जाएगा। I guess it is clear. You can take a screenshot of this particular map and keep on revising this thing. Important point is Tasman Sea, Tasmania, Bass Strait, ऊपर जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ आते हैं टॉरेस स्ट्रेट, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया के साथ ये सेपरेशन है, यहाँ पे आराफुरा सी। I guess this is clear. Now come to the other map. ये थोड़ा सा और मैप देख लो, शायद ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ग्रेट बैरियर रीफ, तास्मानिया, यहाँ पे बास स्ट्रेट, यहाँ पे टॉरेस स्ट्रेट, आराफुरा स्ट्रेट, and you can take this particular screenshot again, ठीक है। अब this is clear, ठीक है। मार्शल आइलैंड्स, इट वाज आल्सो इन न्यूज़, तो आप एक बार देख लो, किरिबाती, इट वाज आल्सो इन न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे है हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्ट्रेट है जो डिवाइड करता है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को, ठीक है। नाउ दिस वाज द मैप फॉर जियोलॉन्ग, जिलोंग इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, तो इसका नाम आया जिलोंग ट्रीटी। इट इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ nuclear powered and bilateral treaty between Australia and UK
दे विल कंफ्यूज एंड गिव यूएस बिकॉज ऑकस में तो ये है ना, यूएस भी है, बट दे विल गिव ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बीच में, बट यू नीड टू नो दैट इट्स बिटवीन यूएस एंड सॉरी यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, I guess it's clear. Now we are coming for pact for future. Pact for future क्या होगा? ये context देखते हैं पहले. India has reiterated its firm support for the pact for future and its key annexes. अब key annex, इसके अंदर दो key annex मतलब pointers. First is global digital compact. समझ में आ गया, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, एंड सेकंड वन इज डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. घबराना नहीं है, whenever you are getting this term global digital compact इसके अंदर है, you need to know it is for pact for future. ठीक है, एंड अगेन डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, अगेन इट्स अ पैक्ट फॉर फ्यूचर के अंदर आता है. ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं क्या है. अब पैक्ट फॉर फ्यूचर आया कहाँ से? एट द समिट ऑफ फ्यूचर. समिट ऑफ फ्यूचर एक हुआ था 22 सितंबर 2024 में. इन दैट वर्ल्ड लीडर अडॉप्टेड फॉर द पैक्ट फॉर फ्यूचर. ठीक है, अब उसके अंदर दो एनेक्स मैंने आपको बताया, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑन फॉरेन जनरेशन. ठीक है, इट इज द मोस्ट. अब पहले देखो, जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो ना, इसका एम जरूर समझ में आना चाहिए. जब आप एम नहीं पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट प्रॉपर्ली. द सेकंड पॉइंट, इट इज द मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट कवरिंग इंटायरली न्यू एरिया. सी, अभी चीजें बहुत डिफरेंट हो रही हैं. जो पहले चीजें होती थी अभी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम वॉरफेयर, एवरीथिंग. So for that reason, international agreement, it is the most wide-ranging international agreement on covering entirely new area and issues on which the agreement has not been possible in the decades. अब तक नहीं हो पाया. एम क्या होगा? ग्लोबल कॉपरेशन स्ट्रेंथन करना है, एसडीजी गोल को स्ट्रेंथन करना है, पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता चल गया. एनेक्सेस ऑफ पैक्ट फॉर फ्यूचर देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट. मतलब क्या? वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑन एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक समझ में आ गया? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट हो गया वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. अब डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन क्या कर सकते हैं? ठीक है, सिक्योरिंग वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रमोटिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी. ठीक है, समझ में आ गई चीज. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैक्ट फॉर फ्यूचर टू annexure global digital compact for AI and digital thing, declaration on future generation for well-being of future generations. I guess this is clear. This got into summit of futures के अंदर से ही आया था. Now ग्लोबल पीस इंडेक्स जस्ट नॉर्मल पढ़ेंगे. ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक आइसलैंड सबसे टॉप पे है और इंडिया का रैंक 115 है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी गेट आस्क्ड, बट यू नीड टू नो जस्ट इन केस अगर आता है. द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, किसकी वजह से, कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, आप समझ जाओगे इसमें. नाउ Singapore remains the only Asian country the top 10 maintaining high safety level despite substantial military spending. ठीक है, ये समझ में आ गया. One in and one out scheme, very very important. See, they will generally give one in and one out scheme. किन दो countries के बीच में है? तो you need to know it is between UK and France. देखो, स्टोरी से समझते हैं. ये इंग्लिश चैनल है, वेरी ड्रेडफुल, बहुत खतरनाक होता है. अब इस चैनल में क्या हो रहा है, इस चैनल के थ्रू क्या हो रहा है, फ्रांस से बहुत माइग्रेंट्स लोग बहुत रिस्क लेके छोटे छोटे बोट्स में जा रहे हैं और यूके में सेटल करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा लिविंग स्टाइल अच्छा है. तो दे आर ट्राइंग टू गो एंड सेटल इन यूके. अब माइग्रेंट्स को रोकने के लिए और इस चैनल्स में बहुत लोग डेड कर जाते हैं, तो इसको स्टॉप करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में एक स्कीम आया. फर्स्ट इज वन इन एंड वन आउट स्कीम. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? एन इंडियन मैन हैज बीन द फर्स्ट टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम यूके अंडर द न्यू वन इन एंड वन आउट माइग्रेशन डील विथ फ्रांस. अब इसमें समझते हैं क्या होता है. मान के चलो कि कोई एक बंदा यूके चला जाता है इलीगली, तो व्हाट दे विल डू, यूके विल रिपैट्रिएट देम बैक टू फ्रांस. ठीक है, अब एक और चीज, मान लो वन इन एंड वन आउट मतलब कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं ना जो फ्रांस में हैं एंड दे आर हैविंग सम एंसेस्ट्री लिंक्ड विद यूके, तो दे आर एक्चुअली लीगल और उन्होंने इलीगल वे ट्राई नहीं किया है. तो अगर कोई एक माइग्रेंट लीगली यूके आ रहा है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रांस टू टेक बैक वन इलीगल वन. तो इसका मतलब वन इन अगर यूके में है तो यूके से वन माइग्रेंट जो इलीगल वे में गया उसको बाहर लेना भी पड़ेगा फ्रांस को. दिस इज क्लियर, समझ में आया? देखो, यूके एंड फ्रांस बनाते हैं. फ्रांस से कोई एक लीगल माइग्रेंट अगर यूके आ रहा है तो यूके विल एक्सेप्ट दैट, बट ओनली व्हेन फ्रांस इज गोइंग टू टेक अ इलीगल माइग्रेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको अगर जब फ्रांस लेगा देन ओनली इट विल टेक. तो इट इज वन इन एंड वन आउट. आई होप दिस इज क्लियर.
इसको आप पढ़ लेना। नाउ विल सी इंग्लिश चैनल का एक बार देख लेते हैं। ये फ्रांस हो गया हमारा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, ये मैं समझाने के लिए बनाया था। टेक्स इन लीगल तो आपका 1 इन एंड 1 आउट होता है, ठीक है। नाउ दिस इज यूके हो गया, ठीक है। ब्रिस्टल, एक बार लंदन पूछा हुआ था, लंदन अटलांटिक ओशन की तरफ है या फिर किधर और है, पैसिफिक में है, अटलांटिक में, ये पूछ लिया था एक बार, ठीक है। तो ये हो गया फ्रांस, ये हो गया बेल्जियम, ऊपर था नीदरलैंड। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर समझ में आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन, ये समझेंगे, ये इंग्लिश चैनल है हमारा, ठीक है। दिस इज सेल्टिक सी, आयरिश सी, सेल्टिक सी, स्ट्रेट ऑफ डोवर, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन। अब दिस इज क्लियर। Now we'll be seeing other news which is K news, K visa, sorry, K visa. K visa क्या है? Introduced by China first. China has introduced a new visa category called the K visa aimed at attracting foreign science and technology talent. ठीक है, अब इनका क्या है कि the K visa is a new category of Chinese visa created by revising the regulation on administration of entry and exit of foreigners. ठीक है, foreigners जो होते हैं ना, it is aimed to attracting foreign youth एंड प्रोफेशनल इन स्टेम टेक्नोलॉजी। जो बाहर के फॉरेन यूथ एंड जो स्टेम में एक्सेल कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक नया वीजा बनाया गया है बाय चाइना। अब इसका फीचर्स क्या होगा? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा इन एंट्री फ्रीक्वेंसी एंड वैलिडिटी पीरियड, फिर एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, एक्सचेंज इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल टॉपिक्स, ठीक है। नाउ विल बी सीइंग पोसाइडन। पोसाइडन क्या है? फर्स्ट थिंग, पोसाइडन जब भी आया तो लिंक विथ रशिया। रशिया रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। किस क्लास के अंदर? खैबारोव्स्क क्लास के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। डिजाइन अ डेडिकेटेड कैरियर ऑफ द अंडरवाटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम नोन एज द पोसाइडन डूम्सडे मिसाइल। अब इसका मतलब क्या है? पोसाइडन यानी डूम्सडे मिसाइल, ठीक है। पोसाइडन इज एन ऑटोनोमस nuclear capable torpedo which is capable of triggering radioactive ocean swells to render coastal cities uninhabitable, ठीक है। अब देखो, जब ये टॉर्पीडो है पोसाइडन, ये जब जाता है अंडर वाटर तो इट क्रिएट्स अ रेडियो एक्टिव ओशन स्वेल्स। अब इसकी वजह से मान लो ये एक प्लेस है, इसके बगल में ओशन है। अब इन्होंने टॉर्पीडो लॉन्च किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये ओशन हो जाएगा हमारा रेडियो एक्टिवली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनहेबिटेबल हो जाएगा। द रशियन लीडर सेड दैट देयर वाज नो वे टू इंटरसेप्ट द ड्रोन टॉर्पीडो व्हिच कैन ट्रैवल एट अ स्पीड हायर देन द कन्वेंशनल सबमरीन्स एंड रीच एनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। द डिवाइस कैन ऑपरेट एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ 70 नॉट्स। इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, बट यू नीड टू नो पोसाइडन इज अ torpedo based missiles which can be launched nuclearly from the nuclear class submarines, ठीक है। नाउ पैक सिलिका देख लेते हैं। पैक सिलिका associated with US. The United States has launched पैक सिलिका, a strategic initiative aimed at building a secure and innovative driven silicon supply chain. अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही AI इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ही चिप्स आ रहे हैं, जैसे ही हमारा स्मार्टफोन्स आ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो सिलिकॉन का डिमांड काफी बढ़ रहा है। अब सिलिकॉन का डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब जिन कंट्रीज के पास सिलिकॉन होगा वो ज्यादा पावर में आ जाएंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, चाइना इज डोमिनेटिंग द रेयर अर्थ मटेरियल। फॉर दैट ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द पैक्स सिलिका। सिलिका से समझ में आ जाएगा कि सिलिकॉन के लिए है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट बिल्डिंग अ सिक्योर एंड इनोवेटिव ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन। आई गेस दिस इज क्लियर। अब पैक सिलिका is a US-led initiative to build a secure, prosperous and innovation-driven silicon supply chain, ठीक है। नाउ देखो, ये इसको आप हटा देना प्लीज, मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज जब ये मैगजीन बन रही थी उस वक्त था कि इंडिया वाज नॉट अ मेंबर, बट वी गॉट अ करंट न्यूज 20 फरवरी को कि इंडिया फॉर्मली ज्वाइन द पैक सिलिका। India formally joined the PAC Silica coalition, making a significant milestone in strengthening the strategic technology and supply chain cooperation between India and United States. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो it is for silicon supply chain first development. PAC Silica is has been launched by United States. ठीक है, I guess this is clear. So now we'll be seeing we have covered our index the topic 1. Topic 2, miscellaneous. Now we'll be seeing places in news. After that, we are having some important exercises. See, important exercises you can do by yourself, but एक बार रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। प्लेसेस इन न्यूज को अच्छे से तरीके से करते हैं ना। टिल देन कीप रिवाइजिंग। जैसे मैंने बताया ना कि कोई एक टॉपिक देखा मैंने, अब मेरे को दिखा जिलोंग,
अब मैं आपको बोलता है जिलोंग क्या होता है, जिलोंग से बताओ, जिलोंग ट्रीटी निकला था किसके लिए, ऑकस से निकला था। ऑकस में 3 कंट्रीज आते हैं, बट 3 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज जिलोंग की पार्ट नहीं है, तो यूएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जिलोंग, समझ में आ जाएगा। इस तरीके से वी ट्राई टू इंटरलिंक एंड स्टडी। नाउ विल बी सीइंग अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़। आई होप दिस इज क्लियर।